हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द स्ट्रीम। की हाल चाल सभी के। हाँ चलो, मैं बोला था कल ही वैसे भी कि मैं डे 2 के मैचेस के बाद ही आऊँगा। और अभी टॉप लेवल भी चांसेस थोड़े कम है, बट स्टिल वी होप कि सब सही तरीके से हो जाए। चाचू चाचू को जो नंबर सेंटर नाम का है वो पूरा काम कर रही है। हाँ तो थोड़ा सा ज़्यादा रखना। थोड़ा सा वो पूरा काम कर रही है, बंद कर रही है फिर। तुम लोग को कितना भी चिल्लाओ समझ में नहीं आता है, क्या बोलूँ। सो वेलकम वेलकम वेलकम। अभी मैं जाता हूँ डायरेक्ट मैचेस ही चालू करता हूँ, मैचेस ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। नहीं यार, ये नहीं कर सकता मैं। डिस्प्ले कैप्चर ही बेटर है। Okay, I guess we'll have to rotate early across the bridge. But Falcons here really want to highlight, sure, they didn't do too much rotationally speaking, right? They were just kind of idle a big portion of this game. But this is why you hold on to your bloody utility until the last circle. Yes. Because you can just use it and just bully teams. And Redox uses that buggy perfectly to get that elimination. But you just bully teams, and those nades were so pinpoint accurate, Niptura. The D Plus and Reject couldn't do anything but get pushed against the blue even further. That was such a good use of utility for Falcons, and finally, we are seeing a Falcons win, hopefully the first of many. It's about time to see them at the beginning of the match go all in one vehicle, which is questionable, to winning the whole thing. I love seeing that art coming in from Falcons. And to go back to your point, yes, the utilities were amazing. They were pinpoint. They were great. But it was backed up with the timing of a lifetime. As soon as they saw that Elam feed light up with D plus Kia, they went, now is our time. Let's go. Nades at the ready. Just immense pressure onto both of those teams. They could do nothing about it, Max. Yeah, it was a tough one, definitely, for sure at the end. But yeah, you said it. The timing was on point to go through the replays here of this game. But you know what? We're talking about Falcons a lot here, Niptura. We need to... that was the four-man car rotation. We need to talk about D Plus's timing. This game, those Eastern fights, they would just pick and choose what they wanted to do, how they wanted to execute it, when they wanted to execute it. D Plus, man, after day one, there was a bad day. They've been on an absolute killing spree, and once again doing it today on this Erangel match. Yeah, it was really nice to see that. I love seeing that so much. And what I love about that as well, Jukes, right, is like the team, they not only decided when they were going to do stuff, they also decided when other teams were going to do stuff, right? Rejects tried to push up on them, and they went, no, now's not your time. We say no, go back to your compound. No, not allowed. And that's exactly how it happened. So that control of teams is just great from them. I mean, they showed us why they are your previous champions here. They didn't mess around in this match for sure. We saw that push from IC onto the Wolves. By the way, Wolves, I think they could have had this match if they would have played it a little bit more aggressive once they got that position rather than playing it passive. But no, IC pushed on them. Once they heard that fight ring out, we saw DK, do a beautiful wrap. And oh my gosh, that knock from Nobu was ridiculous. But yeah, let's see these rotations here, Max, man, from a beautiful military circle. These are some of my favorite to watch.
Yeah, and you're going to be seeing Falcons and Reject just like, oh, okay, phase one circle, military, just cross very early on, and you don't have to do too much movement. Even though Falcons did hug that southern coastline for a big portion of this game, they do eventually center up very, very rapidly. But I want you to pay attention to D+. They were pretty center on phase one going into phase two. And then they're like, we don't really want to be center of the circle here because there's going to be a lot of attention thrown our way. So we're just going to hug the eastern side instead. And by doing so, they open up opportunities for them to look at fights break out and third party, or in this case, what we just saw here, they leapfrog the fight of, I believe it was Orangutan versus Chiamba Niptura. And those leapfrogs and third parties and the timing of those fights were paramount for them to get into the late game and have an opportunity to get on that podium finish. D+ here showing some S+ tier gameplay in my opinion. Yeah, really, really did. I love seeing that from them. That leapfrog against Chiamba was just insane. Again, the timing coming through from them is really, really nice. And it is going to be reflected in the points, right? Chiamba gets 6 points, but D plus Kia get 10 more. 16 points on the board for them, and Falcons getting 19. Just one shy of that 20-point gain they were probably looking for. But hey, 1 point isn't going to be the end of the world this early on in the day. And honestly, it's so nice to see them try and step it up in the final day. A little bit too late, but not too late, right? It's late, but not too late. They still have time to make it work for them. I'm a bit scared for GS team, to be honest, right now. They were currently the cutoff team, right? 12th position. Not seeing too much presence here, and they're going to be slipping, especially when you've seen teams like Reject, Hodrix that are initiating a bit of a comeback, especially on this previous Orangu game. It's not boding well for them, so we'll have to see how that goes as Novalo, the Frenchie, yes! Woo! MVP of the game. Let's go. Now, this is the Novalo that I know and love in these matches. Oh man, that's what we've been waiting to see it for sure, right? I mean, we're waiting for that Team Falcons win. I'm so happy they got it now. And honestly, I'm going to say this, right? I think that they realized, they had to have known that it was D+ on that hill for sure. And once they saw that knock, I like that both teams were like, no. This is the team we got to take out right here, right? Let's go ahead and make sure that we need these points so bad. And man, do the Falcons get it. They had 68 points before this match. That jumps them up to 8th place with 90. But you are right, Max Bad. Look at all the way at the bottom right there. GS, right, weren't able to put up any points. 66 in total. It's looking pretty dangerous. Well, they put up a few points, right? They put up a few, but not enough. It's not enough for right now. Currently, they're going to be 8 points behind Loops without a single chicken dinner, so kind of rough for GS team, though. It did impress quite a bit. I was enjoying some of the plays from Jafar in particular during the Gauntlet stage. They've not been able to replicate that to a similar extent so far in Group Green, though Reject, they started off the day, they're at 38 points, right, Niptura, here jumping up to 51. They are 8-1, 2 good games. They could possibly put in the middle of the rankings where they could move on into the last chance. So Reject, we need to see this kind of momentum build up for the rest of the day. They need to sit a win. Falter here. There might just not be enough games for them to make that comeback happen. They need to win. I'm going to stay it up 100%. Okay. Like right here, right now, or it's done in my eyes. Snap, what do you think? Yeah, I could see them definitely going at least for a top 3 podium finish, like a really strong game, maybe just shy of a win, but hopefully a win in the Miramars. I think they're going to use these Orangles to really just build on that momentum. One thing I do want to point out in these leaderboards is IC making a comeback, right? 4th place, 103 points on the board for them. They're getting pretty close, and you know, they actually had a really good game that game, right? Trying to push up onto the Wolves. They did get that push done well. D+ were actually a little bit late on their third party, but they were just able to just back it up with immense firepower. But honestly, for me, I see continuing to have a good day today. I don't know that team name. There's a team called that. I don't know who that is. I will not talk about them. I don't know who that is. Looking at the top 4 players of this game, we do have Novalo, Fallo, Regiocio, and then Notable that, in my opinion, would normally be the MVP. The MVP has to be on the winning team, but I think that if we took it purely based on stats, it would have to be Notable because, oh my goodness, Niptura. This guy, I don't know what happened to him this game in particular, but he was a demon. And he would see you, you would not even survive 5 seconds. You were done. You're out. Oh, yeah, exactly. He just decided who lived and who went back to the lobby. He was like, no, you're not allowed. You're not a threat right now. I'll deal with you later. And he was just going through the rest of the lobby so methodically. Really love to see that. And hey, you know what? Regiocio, first time we're seeing a Rejects player on this board. And it's nice to see him 2nd place, 5 eliminations, putting in that work, putting on those points. Yep, and like I said, they needed them because looking at the difference, right? So in the last game, we saw Loops. They were at the cutoff with 61 points, okay?
and RC had 38. All right, so that difference right there is a total of 23. Okay, now Loops have 74 and RC have 51. You know what that is a difference of? 23, right? So they have not progressed at all, right, in order to make it into the last chance stage. So I'm gonna say it again, it's chicken dinner time. I think they extended it to one more game, but at least in my eyes, this is the last one for me. What do you think, Max? You think they have another one? Do you really think so? I think there's still another one. I would say, you know what? Yes, they still have one more, mid-game that could happen for them. But after that, it's going to be game over. Halfway point of today, we need to see something come out from these guys. Ooh, that's bold. That's bold. Neptura, what do you think? I think that, yeah, I agree honestly with Max that they have a little bit of extra time, but they don't have much. Well, let's go ahead and take it on over to the stage with 7WG with Falcons and Narvalo. Welcome back to a quick report with the 7WG. I'm joined by Narvalo from Team Falcons. Narvalo, great quick rotation from Pochinki to military. And honestly, I want to talk about your gameplay because I feel like your gameplay has improved from day one to now the final day. What have you been doing the past 2 days to make sure you can actually perform here on the final day? I think for this game, like it was a call, the print path was north, and we said if it's military, we should be first to reach like the island. So it was a call to go quick and go on the left side, no block, as we kind of studied. And then I think we move way faster and with better position. We take better position first and second zone, and that bring us better end games. You definitely did. Now you're currently, I believe, 17 points away from the top 3. Do you honestly think you can make it to top 3? Before a game, we could think it's too far, but कॉपीराइट बहुत पड़ रहा है आजकल भाई स्ट्रीम पर, पता नहीं क्यों. चालू होने दो. मैं चालू करता हूँ मैचेस, ठीक है. पंद्रह सेकेंड, 14 सेकेंड. As far as I'm aware. Yeah, I'm pretty sure. Yeah. Match 16 will also be on Erigel, so don't go getting ahead of yourself there, Dukes. I know you want to see who's qualified, but we are going to have to play all of the matches here. Sosovka military base over towards Stalba. It's only fitting we start the play from down here where our last match ended, sending straight over the top of good memories. Well, quite a lot of good memories for Nolvu and the Falcons, and going over towards that Stalba position on the northeast side. Yeah, it's a bit of an eastern playing map here, so it's slightly more difficult. It's actually getting tough for me to talk about these games at the moment because there is so much happening, and there's so much to analyze. There's so much to go over. It's pretty tough for me. I mean, for Wolves there in that last game, I really wanted to talk about their position a little bit more, just because it is a case of, as that 3-man, you no longer have the power to split off like that, and you sort of have to suffer a little bit where you don't have that angle off towards the western side to watch for approaches, but you have to hold that ditch as a 3-man because it's likely people are going to crash onto you. So this is what I mean by just these small errors in gameplay. Again, hindsight's 2020, and I'm out here of the observing this. Oh no! The double is insane. Maybe I cursed him out. I said I wanted to see it yesterday. Give it to us. Oh, fair enough. We'll give you 2 today. Fair play.
APG get a nice start. They got immediately over towards Millie. अरे इनको ये गाना बंद कर देना चाहिए भाई, ये गाना काहे के लिए लगा देते भाई स्टार्टिंग में. Moves away from Millie Base with that playing path. So if this was coming down from Kameshki towards the south, teams that are dropping late could have readjusted on their playing path, on their parachutes down towards military base. In this case, it's really only Genji and GS who get a decent start off the back of this one. So another game potentially for Reject as well as Tiamba, who both start very close to this location and try and lift themselves out. But it's getting very far ahead of them now. It loops with 74 points for 51 and 50 apiece for Reject as well as Tiamba. I mean, the major difference on this West Bridge is Genji being here, right? Goat had a pretty free and clear rotate over last time. If Genji pull up and cause a fight to start here, Falcons, we saw they wanted to rotate fast early. This is the same circle, the same decision. I don't think too many teams will have had time to fully review what happened there, except for maybe Goat on that rotation. They'll know that Falcons move fast. But if they get stuck down in a fight here, the Falcons are going to crash straight into the back of it. This 3-team traffic jam didn't exist in the last. And GS are holding the East Bridge in the meantime, by the way. We'll see just how sticky this spot can be, because Tiamba moving in. This is on the East Bridge now. There is a roadblock. There is the Caltrops. They're out. They're looking for the backstop player. They're looking to try and disparage them from getting on forwards. Des has to drop down, though, and that's where the backup needs to come through from Jafar. It's there in spades. Buckets of bullets pouring down on the bridge. And now the off angles are brilliant coming on through. There's finally an answer from Tiamba, but it's too little too late. They've lost the majority of their players. Nobody else is pushing in right now on this East Bridge either, Blank. So no chance that GS get run down by a third party. I think it's one of the few times where I think you just like send it. You just send it if you are Tiamba. The initial shots weren't that great from GS. I think Tiamba respects it a little bit too much. They crashed just directly into the wall before they taken barely any damage. I don't know if it was the optimal play there in that instance. Again, it's one of those things where it could have gone either way. Tiamba drops out, they get the first 2 knocks, and then it's easier to play from there. But I think that really hurts Tiamba's chances, and I think they have to take a bit of a gamble on just the straight approach into the zone. Nepturo actually brings up a really good point about Falcons, where if they get another strong game here, potentially is the initial rotations. Now, me and you have been covering PMSL EU for the longest time, John, and we know that the Falcons are some of the slowest to rotate. Because they play Pachinki so much, they already have this central position. I actually think that that position hurts them a lot. It is one of the strongest locations in the map because it is so central, but it's made for this almost stagnant gameplay coming through from Falcons, where they don't make these initial rotates to strong positions. They'd rather play Church on the west side of Pachinki and wait things out if it's a western circle. I think here, because we do go to Sosnovka, it forces Falcons to take risks, to make moves, which they wouldn't necessarily otherwise go for. And they're benefiting from it. It says a lot to me. Yeah, I mean, the fact that they are now, after that game, very much in with a chance of getting top 3 here as well, Blank, is going to be great news, and they'll love to see a game that they just succeeded on very, very in a very big way, right? Repeat itself, hopefully. But the second circle on last match was also a big factor. It forced a lot of teams to move to the north side of the island after having tried to rotate around, occupying a lot of the area, a lot of the ground around there. So that was a big factor in the dynamic of that last zone, of that last match. We'll see where we're going to go this time around. But at the moment, Falcons on the south coast with Genji, who went across the bridge very, very early. So they scout that out, and they're going to peel back off this one. No reason to try and push this. And they've already scouted out a huge amount of space on the western side. Sadly, this is eastern leaning on the circle, so it could be further over towards where Observatory is. Alpha Gaming actually goes for a different maneuver. You know, they'll take Observatory for themselves, try and get that high ground nice and early. I think for Alpha Gaming, it's almost weird where I think that this team will perform even better than they have here over in the grand finals. I think that sometimes, but there is a sense of boredom that comes through from this team.
at times where they really do want to get stuck into things. They don't like playing slow. And they are so good at the game. And I think that does create difficulties for them. That's a sad shot. That's a sad shot from the observer. It's like looking at the beached buggy from Diamba before they fell down. It's like, I felt like I was watching a funeral. Well, you know, you got to celebrate him somehow, I suppose, whatever you can. Papa Supermassive still embroiled in Milter, though, with Loops, who are able to find Tron B. No answer either. A little bit of damage, but, I mean, this should be extricable for Loops. Neither team really wants to stay here for too long, though, Blank. I mean, there is a lot more of the North Island in this circle than in that first match that we saw today on Erangel. So you do have maybe a little bit more time. The circle could also still... it's got maybe like a 10 to 15% chance of going back to the mainland. It's very unlikely, but is technically possible. We'll have to wait and see for that one. So maybe a little bit more time, on average, they could go for it. And especially with the state of this east side bridge, it's maybe actually safer to stay in Milter for the time being. Yeah, I think so. It's getting very messy around this region now. Reject actually get there quite early, so because they were moving so quickly, they passed straight by from the northern beachhead. Could come back to bite them. I think they're trying to control as much area as possible. For OG, it's a long rotate for them down towards the south side. Very difficult stuff to make this one happen, but it's certainly possible. I think maybe potentially going for the western bridge might be a slightly better idea if you are late to this. And there are a lot of teams that play over towards the eastern side. With this being Eastern Plane Path 2, that's most likely the locale that teams are going to be passing through. I think Inner Circle realizes that as well, and they're going to pass over towards the west, which just actually cuts out a lot of teams for them they'll have to go up against. It's Papa Supermassive up against Loops. Loops, the most in danger right now at falling down into the bottom 5 at 75 points, just 5 points clear from GS. Yeah, it's real rough stuff on that 11th place bubble. Obviously, we're playing in with 2 bubbles on this, Blank. If you were looking at the top 3, we were expecting it to be somewhere around 140. That's what we saw from Gauntlets on the same number of matches. It was 141, I think, and 4th place was 140. So very, very close. Could be around there. Could be a little bit different. So if you're up and over about 150, that's where you start to feel pretty good about yourself, right? That's where you start to feel a lot safer in terms of that top 3. And then we're playing with the 11th place bubble, which is not easy at all as well. It seems to be very, very closely fought. Probably going to be closer to around that 90-point boundary. So getting up and over 100 sees you a lot more secure into those at least last chance stages. There are teams now breaking into that as well. Even towards the middle of the pack. I mean, Papa Supermassive is not far off breaking that century. Valo spots out Wolves, who a little bit too close for comfort. I think this should be a free Elim. Yeah, absolutely. Oh, I think he's stepping too far there. I was very worried. I think any other team but Reject. French greed. Valo might have gone down there. He wants those points, man. He wants to bump himself up in the tables. Fair. I respect him for it. But you are right. I think that what you said at the start of the game is very pertinent here, where Falcons actually are in with the running now. I think there's only one spot up for grabs, personally. I don't see D+ putting on the brakes anytime soon. I think Alpha Gaming have done more than enough this tournament. I think personally, if you're an Alpha Gaming fan and you're looking how they're playing today, it might not look flashy, but they're playing slow because they just want to get regular points, consistent points. And that's even if they just play like this, there is going to be a game today where Alpha Gaming has a strong position and they win from it because they can. And I think that will see Alpha Gaming through towards the grand finals, and they deserve it. They absolutely deserve it as well. I think Top in particular, you know, having a wife and 3 kids and a kid, right? It's a lot to juggle. It's a lot to juggle, but it just shows that even at 26, like, you can still perform extremely well.
as long as you have the grind on. It's incredible. Well, Loops have been on the grind here for a while, trying to get on into the zone, but they've had to go all the way to the west side, and OG might draw them short here. Lots of damage already felt by both of these teams by the blue zone. We're into stage 3, so it's non-trivial to deal with. Nilzada, a nade in. Oh, shotgun. Shut down there on a tanky. I don't think that's going to be resable, but there's the off angle they were looking for. I think that, did that come through from Aru? No, it was the burn coming through from a tanky with that Molotov. Both teams are going to start to lose players. I think disengaging, if you can, is fairly wise at this stage. OG going to try and make a run for it. Loops maybe actually getting this res here. It is still resable for just a moment longer. We'll see if they can make it work. And yeah, OG, off they go on their bike or buggy or whatever they can find. It's a very, very tough approach here for OG. And again, this is what I meant earlier, where I think this Western Bridge is probably the more wise decision. It takes a while to get here, but OG definitely make it. They're going to take a quick scout over the bridge, quick reset on the meds, but there's no one waiting here. Why is Alter Ego still on the north side? The analyst chat is lighting up with it. Worried? Oh, yeah, it is. Yeah, I think that it seems like they're very worried about what's going on the other end of things. Again, it is hard to scout that far across. And I think that they have seen multiple times that teams have been held out in this location. Come on. They're still not going for it. You got to make the cross at some point. I am worried that what they're going to do is they're going to go for the swim. In which case they give up a lot of vehicles. They're just refueling. Don't worry. They just stopped off for snacks. That's what it is. Alva was hungry, guys. It's all just an aid of a full stomach. Can't be taking gunfights on an empty stomach. Come on, we're getting to stage 4. And 9Z is coming in behind them right now. Maybe they're not waiting. Maybe they're the ones bridge camping. Maybe. Come on. Oh, that's the time only to thing go now. It's time to go now. Thank you. You can't get yourself picked back up after this stage as well, so very dangerous to stay out this long. Very much a situation of AE there yet. Slightly bit more of a tongue twist than I thought that was going to be. It's 2 letters, mate. But they've got a cross. They have got a cross. Circle back over towards D+. Over on this north side, playing the hilltop. I think this is a messy circle. It's a very messy circle where you're over towards Millie base as well. We are cutting in a little bit of airstrip, which isn't too comfortable to play in. I think Wolves want to get out of that area as soon as possible. Great shots from Alpha Gaming, though. Goodness me. Ooh, okay. Shots down towards Alter Ego. They'll need to pick these reses up as fast as they can to get onto this next zone. D+ ahead of them to their west. You've got 9Z who actually, rather shockingly, just sent straight on through, but straight into Reject. Already they're getting torn to pieces. Reject very happy to see some points delivered to them. The question is, can they find the shots? Can they find those shutdowns? There's only one left on the inside. I don't think it's going to last too long here. Reject looking for the last player on the end. A rotate in. Comes through as we see a crash from Team Secret. They're still alive, by the way, in the picture-in-picture on the north side, actually, towards Loops, who might be in a bit of trouble. Can't quite find their way in here. Milos is just trying to hide in the corner. This is really nice. I mean, step out. This is a shotgun. This is a shotgun bonanza. If he steps out at the right time, there's one. Here's for the next as well. Gets the flush. That's huge. Has to go for the reload though, and now Reject are on the revenge path. They lose one player, but they do shut him down. Oh, that's disappointing, man. You know, it's just one guy in there, just re-peak. I suppose that they did set up the compound quite well in terms of the 2 monster trucks denying the entry towards the window. So if they get crashed on, that's how they defend versus 9C. But that is a situation where you should be able to hold out as 4 and just refrag onto the player. The fact they lose one there is really bad. From a central position like this, it's really not good. I also think that there is something to be said here about 9Z, where although, you know, they're on 87 points, they've had some good games, there is a lot of impatience from this squad. If they can't find a good position early into the match, they will just send it. And oftentimes,
they will just find themselves in really sticky spots on the map. I mean, to be fair, you don't expect the team to be bridge camping you on the east in that scenario, right? Like, it maybe really confuse them, but that's the sort of thing, I guess, you also can't afford to be able to get confused in a scenario. I mean, like I'm not talking about that. I'm talking about sending center. Oh, yeah, but like reject. after that, you're like, oh, we got to go. There's obviously a big roadblock ahead of us. We just got to go for a mad dash. You Right? can also just play on the edge. You must assume if there's a team still on that bridge, that there are teams ahead of them, right? So you assume that the ground in front of them is very, very full. I'm really trying to give them as much leeway as possible here, and I will admit, maybe I shouldn't. Papra and Supermassive, though, down to their last player against Loops, and they're not having a good time of it. That is going to be Papra Supermassive eliminated, and Loops are up to 9 elims, Blank. You said they were the team that's most in danger of dropping down. Well, they are certainly acting like it. Yeah, and again, the more points that Loops gets in this match, the harder life becomes for a lot of our teams underneath. I mean, for Reject and Tiamba, I think Tiamba, it's done now. I think it is done. I think for Tiamba, it is almost impossible for them to get back up towards that top side. Genji looking to head over towards GS, who are also chasing. I think GS are also struggling, but likely will retain a place. Oh, Falcons, they're moving in. I think Redox inside the bottom 5. Guys, make sure you Quick like, has to share, hit the and deck. Falcons know subscribe. exactly where he is. That'll be pinged out on the vehicles, but they are pulling back a little bit. Icon taken down. That is the last player of GS, and that is APG rocking up to this one as well. The Falcons on the far side really causing some hurt, some pain there. So they're up to 5 elims. APG as well, looking to tip themselves up and over. They've broken that barrier that we were talking about. They're over 140 now. They want one more at least. Dammy under pressure from these nades. Has to reposition with the Falcons flying into that far hillside as well. It's not going to last too much longer. Up to 142, and the placements are going to kick in soon as well. Yeah, for Alpha, all this is right about now is just not giving up first place. The jump up in prize pool between second and first place is quite a lot in most PUBG Mobile tournaments. We still reward our top 3 very handsomely, but it's usually first place who does take the biggest cut of the prize. And I think that, to be fair, for Alpha, they were playing it fairly slow because they knew that they were holding on to first place. But as soon as D+ started turning up the heat, they knew they needed to get a little bit of a game in. And this one's been good. I mean, even taking the opportunity to move over towards Observatory, that's very unlike Alpha Gaming. Okay, takes Krypton along with him in the vehicle. I think that, you know what I would quite like to know is how many vehicle eliminations Docs had this group green. I think we're up to 6 or 7 now at this point, which is more than I think we've ever had in any one tournament. Oh dear. He is certainly a terror behind the wheel. Whoever gave him a driving license, I'm sure they're regretting that one. As we take a look over towards the rest of this game, though, teams are starting to fall fairly quickly now, Blank. The hilltops to the north, being fairly convincingly under control by D+. It's in a circle. Again, that fight for the top spots here. Third place, very, very closely fought between Goat and Inner Circle. Losing players here would be nasty. They've already taken a lot of damage, and as D+, they're up against Osal, has the off angle, and Goat are taking shots as well. Oh no, Inner Circle having a really bad time, but they've still got Falak. What can he do here? Favian close by, but backing off to find chips on the res. D+. Chips goes down. Nade over the top towards Falak. Does get a lot of damage done. Favian over towards Falak. We'll find it. So that's in a circle. Taking a lot of damage. They should be able to hit chips back up. It's nice to see. This is really Reject's game right now, with one player from Inner Circle to fall down. It's D+ with a central position. It's kind of D+ versus Reject again, Blank. In this circle, the southeast side that we see on the picture-in-picture is APG versus Falcons. D24 is going to give it a good go. Does find Nolbu, but going to get taken down in response, and yeah, that's going to get flushed out. IQ is actually still alive in all of this. He did manage to get out of that fight. I am still focused, though, on this fight on the southeast side as we zap on over to it. Falcons with 4, APG with 4 as well. Haven't really been able to find success on either front of that, and APG disengage. They're moving up to the hills to the north and maybe looking to fight D+.
I think for D+, try this fight between D+ and Alpha Gaming, which probably will break out towards the end here, will be the fight of the day. Very excited to see this one happen. Falcons need to break wide though. Currently Joel is holding this spot. For the Falcons, we did speak about this at the start of the game, that there is a big chance to jump up above in a circle, above GOAT into that top position. And honestly, if we get Alpha Gaming, D+, Falcons in the top 3, whew, what a lineup that will be going through to the grand finals. It'll be unreal. I mean, I don't think going into today anyone would have called Falcons with a chance. But this last day, it's the last day always. It's always the last day for the Falcons. It does seem to be, doesn't it? There's something about it. They have a potent resurgence built within them, built different somehow. It's curious as well, because usually Alpha Gaming's like the team that is the last day champions, where in that final day, Alpha Gaming is known to put up a disgusting performance. But right now, they are taking 2 knocks straight away. Falcons equally are suffering versus the Wolves. Just Doran here, actually. Oh, way! Yeah, top 3, the Falcons, APG, TK. Oh, yes. Hang on a minute. Doran? You can't be doing that. Close the Doran door right in the face. I'm sorry I didn't give that too much fanfare. It honestly, it felt like, oh, okay, he's going to get 1, he's going to get 2, and then Falcons will clean this up. Surely. You do not see 1v4s in international. I cannot believe Doran pulled that off. I mean, blink and you miss it, right? Doran was... Oh my God. Okay. Well, Wolves, again, not really probably going to get too much out of this game, but certainly ruin it for the Falcons. The decision to crash onto Doran for the Falcons, though, might be an interesting one here, Blank. It feels like... I think it's fine. I think it's fine. Okay, sure, you can transition towards reject later on, potentially. They're right on the edge of the circle with it, though. I mean, Alpha had that lineup. They couldn't really crash that way on the East. Also, if they do that, reject have sight lines. I think you don't see many players, if at all, over towards the silos. So you just send it, and you get soloed. I don't think the decision-making was poor. I think the gunfight was terrible. But the decision-making, I don't think there was an issue of it. I mean, we need a replay of that at some point. Hopefully the desk will have that locked down, because Doran's going off right now. Maybe he's going to do it again. He's got a lot of smoke to play around. He's going to get up to the wall. Reject don't want to let him cross, but they don't really have too many options right now with the smoke cover. I do like for Doran, he's now just using the entirety of Falcon's utility to cross 20 meters. Oh, dear. I'll show you guys how to use util. Oh, my God. Doran. Reject's like, where's he getting all these smokes from? What? Is it more than one dude? What's going on? Some kind of nimbus cloud off in the distance. Oh dear. Well, he's made it to the wall. Great job. We did it. That's so many smoke. That's insane. OG getting found on their last player. That's GOAT to pick it up. GOAT have been down on the belt buckles for a while as well, trying to crawl across the open ground. 5 teams remain. 8 eliminations for APG as well on this match. They've only got 2 men. No. Come on. You got to stop, man. You've got to. You cannot be allowed to do stuff like this. Kraken has to hit the deck. They can't really take 3 fights here. Doran steps up for another. No, Doran. Crazy. You can't do this. You can't do this. This is pmgc. It's not allowed. Someone put him to bed. It's his bedtime. Surely he's out of this game. Bye, 1v3 कर दिया. Stop it! Don't go down to the Giant Slayer! What is this man doing? He is absolutely crazy! Doran will not let you get a foot in towards the circle. What the heck, a 1v4 into a 1v3. This is magic on the main stage.
We talked about rabbits out of a hat, but right now, Dolphin's making this look easy. Gets up to the wall as well. Probably should go down to this nade, though, but goodness me, what a game it's been from him. Okay. Oh my days, it looks like the nightmare's ended though. And now we're up to the hilltops. APG on 2 players alive. They got a lot, but it's D+ again in this late game on a military island circle. They find top, and now they're looking for Ziol around the corner as well. 3rd place guaranteed for APG at least. That will put them over 150. Or maybe not quite. If they can get another elim, that's what they'll be looking for. But still very, very close. Very comfortable to be in the top 3. Our first team to really, truly lock it down towards those spots. D+ want to join them, though. And with a chicken dinner, you think that they might be able to. Again, in a late game circle. 6 elims. It's almost more important for Reject than anybody else right now. It absolutely is. For Reject, they want the chicken dinner, but they got 2 big dogs in the lobby, and right now they're the Chihuahuas. Let's see if they can make it happen versus the best of them. Ziol takes some shots off and towards the distance. They do have the low ground to play at the moment to Reject. They have vehicles as well, which is the main thing, but D+ continues to send nades their way, keep them backed off from their position. D+ looking to fight out for those bragging rights at the top of the tables. I mean, Reject have the center of the circle though. D+ are sure they've got a higher ground position, they've got an angle, but they're gonna have to move. The point's denied from APG. It's mean. They actually picked up the res in order to deny an extra point there, which is kind of nasty. To the blue zone it goes, but now D+ versus Reject. Already a good game for Reject, but they desperately need this chicken dinner to stay alive in this tournament, to jump up towards that 11th place bubble. Nate's going a little bit long onto Reggie. Downhill, it's always a little bit tougher. If a Reject, they need the chicken dinner. Like you say, it's imperative that they get it. It's not a case of, oh, it would be nice for Reject to have a chicken dinner. At this point in time, it is a case of, it's required. It is a necessary procedure for Reject to grab a chicken dinner here to finish out this game and give them that chance. Because I think even with a chicken dinner here, it doesn't take them out from the bottom 5. But it will be the first stepping stone for them. D+ starting to run a little bit lower on those nades. You can see they've only got 3 remaining. Reggie cooking another. If he finds a knock, this would be huge. The Molotov, probably a wiser decision. Force Reggie off of the tree. The question is, does it land on spot? It definitely did. Look at that damage tick away. He has to fall all the way back to the vehicle. That's going to be a lot easier for D+ to go on towards. They know the damage is there, and they have to go over the top now. Spray down towards Divine. D+ trying to stop Reject from getting on in. And Reggie looks for the spray down, a wild rollout here, and Apollo finds it. Osal is down. They do not find the backlines. They haven't got a knock yet, and there's another one onto Fabian. D+ is starting to fall blank. It's now 3v2. Reject have the inside of the circle. They are desperately climbing towards those tables, towards that 11th place, but Reggie will finally go down to the nade. One more left. Look on for Apollo. Nolbu with the chance here, and it's going short of the tree trunk. Divine's down, leaving it all down to Apollo in a 1v2. An impossible task ahead of him. Pulls the pin on the grenade. Reject looking to reject defeat here in the face of impossible odds. No, it's not they meant can't to quite be. do it. Oh no, they can't get all the way across the line. D+ take it away from them. Still not a smile in sight. They are so cool, calm, and collected. Into the top 3 with them. They looked pretty solid before. Now even more so, but Reject in tatters. A lot of points, but is it enough? Absolutely not. I think for Reject, they did get some of the flushes towards the end there. 6 points total. You can see that they are absolutely dismayed about that one. But again, it is a little further down on this journey for them, because it's a long way coming that they need to go to get out from that bottom 5, but they're getting some successes today. There is still 3 more matches to make it happen, but Reject historically, those Miramars haven't been fantastical for them. I can only hope that they can continue here, John, with these strong performances, but for D+, it is another big game in the pocket.
insane chicken dinner. I think D Plus might have just secured their position to the grand finals. And how do they win this game, Max? Back against the wall. So little time left. They had to hit those knocks. Crazy rotation on the end. But then Chips just said, nah, I'm going to hit these shots. And they shut Reject down. What a game. Oh wait, D+1? I was just looking at Dorian the entire time. I thought he won. No, but genuinely, for D+, such a good game, playing this high ground position for a majority of this game, right, Niptura, just having so much control on the entirety of this lobby. And again, what did we say the last game? This is why you hold on to your utility. Those nades made that transition from high ground to low ground so much smoother for D+. And even then, it wasn't easy to execute as Chips. He's popping off, and he's back to be an MVP of the game for sure. Yeah, and really, really nice stuff coming in from them. The control, what we saw there. Even, you know, IC being able to push up earlier on in the game. I didn't hate the push. It was a good idea. It was pretty well executed, but that third party just helped DK to just overrun them and get rid of that threat. And after that, nobody really looked at them very much. So really love to see that coming in from them. Talk about utility, though, Max. I do want to just point out the smokes for rejects looked really, really good, actually. They had an idea of what they wanted to do, and they were doing it as much as possible. I really liked the smokes coming out from them. It just gave them a little bit more space to work with and just really effectively blocked out DK sightlines. Yeah, as Blank said, you know, another team now that became a Nimbus Cloud. It was not Dorian, it was the entirety of Reject. I really enjoy that one. But no, Reject, as you said, really good piece of utility, keeping them safe from the off angles of APG. And one good point spotted out by John during this game, actually APG going for a revive to then deny just takes the extra point out of the equation. It's a small thing, but again, when you're competing for top 3, that can really have such a big impact that could really have a devastating effect on the leaderboards. I mean, we saw last year, right? Last year's pmgc was decided by just 1 point, right? So I mean, anything you could possibly do, you got to pull all the stops out right here. By the way, nice little setup there on the bridge from GS that shut down Tian Buff, and with that one, I think they are completely out of this match, man. But you know what, I finally figured out what Chips kind of Chips is, Max, man. It's Ice Chips. That man's cold, dude. So cold towards the end. I kid you not. Ice water in his veins. When it comes down to like those super clutch moments, he shows that, you know what, I'm gonna make it happen. Beautifully done there. It really is just levels of rivalry like Sanji and Zoro in One Piece. They're just like, I'm MVP, no, I'm MVP, this me. I love that kind of storyline. Someone needs to make an edit on Instagram. That will pop off, I'm telling you that much, but it would be great. But edit of this. Clutch, though. One, the two. Oh my goodness. I mean, yeah, no, Valo, I feel you, bro. I would do the same thing if I were you. You know what I love, though? That's insane. This is insane. But you know what I love? It's like, listen, guys, Falcons, it wasn't you. It was just Doran, because he turns around and goes down goats the exact same way. Doran, man. What an MVP coming in here, Max. I can just hear Novalu say, oh, bordel, right after that happened. It's just the pure French anger coming out. But another military island, Hot Juice. I mean, are we going to get a third one? Okay. Bring it back. Let's go. Hey, one do it more again. time. Oh, my. I can't even break down rotations here, but of course, teams that go on the bridge rotations early on are going to be given a significant advantage. D+ here, though, taking it a bit slower, able to play the northern edge instead and pushing away Reject. The Reject, good plan from them, Niptura. Respectful. We don't want to take an early game fight and take an early casualty. That's really going to hinder our chances for a win. But everyone's fighting, and D+, big chilling. We got the high ground. You know what? I got a take question. It away. This is easy pickings. Niptura, I got a question for you, right? Yes. When it comes to Reject, all right, would you want another military base finish? Right. And the reason why I asked that is because back-to-back militaries, they put up some decent points, right? But the problem is Loops put up 9 eliminations. You can see it right there. And that, I mean, look, the difference was 23 points. So even though they put up 14, they only move up 5. So if you're Reject, do you even want to go military again? You know what? I actually wouldn't hate it. I wouldn't hate it at all, because I think it would be an interesting thing, because we see D+ get the back-to-back. We see Rejects get a back-to-back top 2, right? So I'm very interested to see if it does go there again, how they're going to play it. My only concern would be other teams now are going to be trying to do something different, so they're not predictable, and that might put RC in a little bit of a disadvantage.
just drop there at that point, you know. Just compete with APG, you know, for all the means, just send it. But no, looking at the leaderboards, I feel like we have to seal the fate of some teams here, Hot Jukes. Team Secret, 0 points. Tiamba, 0 points. For me, game over. For me, those teams, you're going home after this. I don't see a comeback. Not only mathematically speaking, but also in terms of their presence on the battlegrounds is just, we haven't seen anything. So for me, Team Secret, Tiamba, it's game over. I agree 100%. And that's going to mix things up for sure, right? Because right now we're going to have 2 teams for sure that we know are not going to make it to that last chance stage. And guess what, Neptura? That means they got nothing to lose. Yeah, that is so true, especially when you go, it's the final Erangel, we can just go all for it. And you know, game 6 as well, it's going to be the final game, we can just go all out. And yeah, as we look at these leaderboards, there's reason to do that, right? The top 3 looking pretty solid, maybe down to 6th place, could really just try and snatch that 3rd place away from GOAT, but it's looking like the first 2 now kind of have run away with it, Max. I'm looking at the bottom of the leaderboards in particular here. Reject 65 points. They started off the day with 38, man. They're having their best day so far by a significant margin too, and they're just shy of pushing themselves finally out of the bottom 5, Hot Jukes. But they need to keep going. They can't stop now. Reject, if we want to see one Japanese team in the finals, it can only be them. Well, let's see if it's going to be, but get your popcorn ready. We're going to be right back after this break. भाई खेल गया. अगर रिजेक्ट ऐसे ही खेलते रहा तो क्वालिफाई है. कल का एक दिन छुट्टी, फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग, क्योंकि उसके बाद ट्रू रिबर्स का मैचेस है. होप फॉर द बेस्ट. ये सब गलती इन लोग सब देख के उन लोग अपने में इम्प्लीमेंट करें. क्या ही बोलने का. और बताओ गाइस, सब कैसे हो? सब ठीक हो? सब बढ़िया मस्त? लाइक कर देना, शेयर कर दो, लाइक और कमेंट कर दो भाई. मैं स्पेशली उतना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. फिनेक्स पहले मेरे को लगता था चाइना फोन है भाई, बाद में फोन पड़ा भाई. इसमें भी तगड़े फोन है भाई. बट ये किसकी पेरेंटल कंपनी है कि खुद ये मतलब सोली ओन्ड है भाई? ये नहीं पता मेरे को. लगा वॉल्यूम करूँ? गाना यार कॉपीराइट बढ़ रहा है भाई. मेरे को कल से स्ट्रीम में 3 स्ट्रीम में कॉपीराइट गिर गया है भाई. ये दिक्कत होता है मन में हटने के लिए, बहुत टाइम जाता है, इसलिए म्यूट रखा हूँ थोड़ा.
ब्रेक चालू है. चलो 49 सेकंड चालू हो गए भाई. गाइस लाइक करो. चलो चलो जल्दी जल्दी से लाइक करो. जल्दी से लाइक. चालू हो गया गाइस. Snape from Alter Ego. Alter Ego currently not having the best performing day in comparison to what we've seen in the past 2 days. For this squad, what is the plan for the remaining 3 matches to make sure that you can actually get up there in the top 3? Okay, Snip, kalau kita lihat performa AE sekarang tidaklah begitu yang seperti kita lihat dari hari-hari kemarin. Ya, apa rencana AE dan juga Snip buat sisa 3 game lagi nih? Paling dari kita karena 3 game sebelumnya nggak berjalan baik. Game 3 selanjutnya mungkin kita harus menjaga dari kayak mentalitas dari setiap individu ya. Jadi kayak dari kepercayaan diri sama semangat tuh harus yang kayak kayak biasa aja lah. Yang kayak kita tetap harus percaya diri sih. Itu paling dari sisa 3 matchnya. Kalau dari segi makro nggak begitu banyak berubah lah kalau dari kita. Yeah, I mean, we not really perform on the first 3 match. I think for the last remaining 3 match, it's the game of like mentality. I think for each individual, they still need to like prepare their mentality. They need to be that confident. It's because right now it's not about macro, it's not about micro, it's about the mentality itself. So we're looking forward for the next 3 game. Okay, well, I'm hoping that mentality is going to shine through. I'm pretty sure all of Indonesia is going to be hoping for that. Thank you so much, Terima kasih. And I have none other than Rafinha here from Loops Esports. It feels like history is currently repeating itself. Last year at pmgc, you were able to qualify to last chance via 11th place. Right now, you are in 11th place as well. How will you be approaching the last 3 games to make sure you can make it to last chance? Então, ano passado, no PMGC, vocês acabaram classificando para o Last Chance em 11º lugar de novo. E agora vocês estão no mesmo lugar. Então, como é que vocês vão fazer esse approach para o próximo jogo, para os 3 últimos jogos finais? Bom, a gente está aplicando hoje aquilo que foi planejado nos 2 primeiros dias. E a gente vai tentar manter essa pegada. Começamos muito bem as 3 primeiras partidas. Então é manter e o top 3 ainda é uma realidade. Então continuar mirando sempre no topo. E é isso, atingiremos. So, we would continue to apply all the knowledge that we have in the game, and we were planning for the two days. But we are really happy. We started with like 3 very good matches, and we are happy. We are aiming for the top 3, and yes. Hopefully that's going to be the case because good thing you had those 3 matches. You have had a resurgence from Reject. You see OG as well currently playing with nothing to lose. Those teams are 18 and 19 points away from you. In the last 3 games, do you think that Reject or OG can catch you?
Então, a OG e a Reject estão bem próximos de vocês, né? Estão ali entre os 19 e 18 pontos. Você acha que eles conseguem pegar vocês? Never. Ooh, no need for translation on that one. There you have it, ladies and gentlemen. The final 3 games of Group Green are coming to you. Never. That's what I like to hear right there. That is how you do it. I'll tell you what, though, from never to always, man. We got to show love to the Infinix GT30 series, the official gaming phone of pmgc 2025. Engineered for precision, performance, and victory, empowering every gamer to be the one and outplay the rest on the global stage. I'll tell you what, Loops need to apply all that knowledge and then some if they want to make it into the top 3, because mathematically it's still possible, right, with what we have left today. But it's going to require a massive game here and now, because these teams in the mid So I'm still waiting for his moment. He was for a time, right, the new generation of top tier players from Americas, and unfortunately ever since the end of last year we haven't really seen that kind of rise to fame and glory from Ratterboy. But I believe, Loops, you know what, there's still time, there's still 3 matches, there's still an opportunity for them to make that ascent. Yeah, let's see if they can make that ascent coming up soon. But you know what, we heard close for sure. I think that we're going to see these next matches heat up like crazy, because I mean, every single one of these teams, they don't want to go to last chance, right? They want to make it into those finals. So how much percentage do you think we're going to see like the gameplay level up in these last 3 matches? What do you think? I think 50%. Cool. I think 50%. It is a big increase, because I think these teams are kind of holding out just a little bit, but they're definitely doing a lot here already. There's not that much holding back. There's just a little bit, but I think just the intensity from everybody is going to make this a really interesting last few games, especially if we look at the 4th to 6th place, or even 4th to 8th, really, actually, because IC are at 104. In 8th place is Falcons with 96. That's less than 10 points away from a 4th place position for Falcons. So all of those teams in between there definitely going to be bringing in the heat in this next game. I mean, if I can bring up a negative point here, it's Ultra Ego. I'm sorry, they had such a banger performance yesterday. There's nothing to show for it today. Really, this team just kind of disappeared. They've had some decent entry points and stuff, but when it comes to fights, I mean, look at this replay. I mean, I'm sorry to say, but they're just getting completely squashed, literally, by the competition. And there's still time to make up for that maybe rough start of the day, unlike Doran, who clearly has redeemed everything here for his squad. But Ultra Ego here, Hot Jukes, this is the team that I need to see something from this next game, because otherwise, with how performant and consistent the top teams like APG and D+ currently are today, it's going to be tough to make that comeback. For sure. I'm going to say it right here and now. I think we got 1 slot left available, and I think that's the 3rd place position with GOAT. Yeah, I mean, D+ have 139. They're playing so well. Alpha Gaming, they're putting up points regardless of the situation. I just think it's too tough to catch up with how chaotic these last 3 matches are going to be. That's in my opinion, you know. So man, we just see the level up right towards these last game, and we just saw Doran 7 eliminations all by himself. I'm gonna tell you, if the Wolves somehow pull it out here and steal that 3rd spot away from Gold, it's gonna be 100% due to that one particular play. I mean, that's a huge difference maker right here, Max. Could be. I'm actually, you know what, I want to talk about Doran real quick. The fact that we've had so many top tier players from Romania in the past, like I'm sure some people are going to remember Eastern Stars. I'm sure that's going to be a callback for some people. And you had Octavian, you had Kapahala, all those guys. And now the one player from that region, Niptura, from Romania, that still stands strong and is able to perform globally from Romania is Doran. You would have told me like years ago, I would have said there's no way, but no, he is the guy who stood up and is still here to this day. Gosh, that's just a blast from the past. You took me back 2-3 years there with some of those names, Max. But yeah, Doran, it's so nice to see a player stand out even back then, continuing to do his thing. He's still on top. He still got it. It's really, really nice to see, especially at this level, right? PMGC, and you're able to get 7 eliminations on your own. 1v7 in PMGC is insane. Hey, by the way, you're talking about Romania, Texas, right?
Pretty sure. Yes. Right? Definitely. Yeah, no, exactly. We For claim the him now, NA baby. team. He's on the Wolves. He's rocking that USA flag. That's 100% American. इसको देखो भाई. I love to see that. I love to see those plays, and you know, it's these crazy moments, these clutch moments that will just revitalize a squad. You know what I'm saying? Because you know, when you get in these high pressure situations, sometimes you need someone to make it happen. Hey, for D plus, it's Chips in my eyes, right? Because anytime the going gets tough, you got to hit those hard peaks, that clutch shot. He's doing it for the squad. So I mean, the fact that D plus has Chips and Nobu going crazy too, man. I mean, it's they're looking full steam ahead to make it to the finals. I'm a lock them in. While we have a bit of time, I'm trying to think right now. Who would be the group green MVP? Like, you got so many contenders. Of course, Chips. Ooh, that's a good question. You got Top for APG. Goat had some step-up players. Rosemary had some great games yesterday. Like, who would be the one to claim that one? I think it's really close. Way closer than what we had during Gauntlet, right? It showed that we kind of had a good inkling of who it would be. But right now, I'm not sure. I think it's gonna be Chips, to be honest. And the reason I say that is because he was daily MVP yesterday. Was he? Yes. Yes, he was. And then today we've also had a game from him where he was also MVP of that game, whereas Top has not. So Top was MVP day one, but the performance overall from Top has not been as standout as Chips continues to do. And so I think it is probably gonna Chips be just inching that one over the rest of the lobby. That's a good pick. Who do you think, Podrix? I think that's pretty close. I think it's pretty close right there. I think Alpha is not done yet because I think we saw them do that split in Rondo. That made me hype because I was like, you know what? Yeah, if you're gonna mix things up, you really only need one good game if you're Alpha Gaming to lock yourself in, right? The fact that they did that split and they sent Top, like one of their top fraggers out there to try to get some eliminations, I thought was a brilliant play. I think that if they get a normal set, there's no pressure at all on this squad, as opposed to everybody else, pretty much for the most part, Max. Yeah, I mean, actually, I just cheated a little bit. I just looked. It's currently in order top 5 MVPs for day 1, day 2, not day 3, but it was Top, Nolbu, Rosemary, Falak, and then Chips. So Chips actually way lower than I expected, Nipcho. That's kind of a surprise. Wow. I'm so surprised by that, but I suppose MVP for the team maybe isn't MVP for the lobby, right? He's doing things for the team, but maybe the other guys are just out eclipsing him just that little bit more. Well, man, now is the time, folks. You gotta put up some points right here, right now. It's the grassy lands of Arigel for the final time today. John, Blank, who's gonna win this one? Tell me. I want to know. Well, I don't know about you, but I feel like Doran's going to win this one. I don't know who he's playing for or whatever. I'm all about him, right? That seems to be the case. He could just take on the entire world on his lonesome. Wow, wow, wow. What a monumental achievement in that last game. But all jokes aside, it's definitely Team Secret winning. Do you think Team Secret's getting a win here? 100%. Every time it's Team Secret. No doubt in my mind. Maybe another Sosnovka circle, potentially. That could be certainly interesting. I think the players are probably back to normality, maybe? I hope. In terms of the circle, 2 games in a row that favored over towards Reject, and their immediate rotate across towards Sosnovka was very much needed for them to try and get themselves out from the bottom 5. I think that they are very lucky that they got the double Sosnovka, but they also played it fairly well to get towards 2 endgame finishes. Not quite the chicken dinner though. Definitely a possibility on that last match, but not quite able to pull it off. The squad's out nice and early though, and the circle is far east. So no worries on that Sosnovka finish this time around. Alter Ego get to head up towards that north side around the Povka mansion split. So they should have a decent start in this game. Yeah, that east side will be the focus now. As they send it on in. Nicely dropping down here. No roadblocks around those bridges. Now,
we were looking a lot at the Falcons over that last match, right? And Doran was looking at them too. But the thing that they really adjusted in those last two matches was the speed to which they rotated in the start of the match, right? Away from pachinki. They have to rotate again this match. The question is, will it be as fast without the pressure of a military circle? To be honest with you, I don't think so. I don't think so. Unless something has drastically changed within the calling structure of the team, I don't think it's going to be a fast rotate from them. I think that the odd thing for the Falcons is how are they going to bounce back after that last game? Getting 1v4'd is never a good feeling, even in your games at home. It feels even worse on a global stage. So I do think for the Falcons, they might be reeling from that. And again, it's unfortunate because I think the other games of the day were pretty good, honestly, and fairly successful. And even that rotate there was not the incorrect decision. And I'm hoping it doesn't set up a mental block for them going forward, because it certainly could do. I think for the Wolves, that game might have cleared those heads, though, right? That's the big thing. You could be happy with how Doran performed there and hope to do him proud in this game. I mean, the difficulty, though, for all of those teams is that third place is still moving, and GOAT on 112 has a little bit of a lead. We were saying it before, right, that APG and DK at this point, if they're able to get 10 more points in today's matches, they've got 3 matches to do just that. They're locked in. They're pretty much locked in already. It is a question of who's going to join them. And all the way down to the Falcons have a really solid chance of getting there, right? With a good game, they're on top of that pack. From 112 down to 96, it's not easy, but a 16-point gap can be made up fairly quickly if you're able to get into those late games. Ghost Hold is tenuous, to say the least, over in third place. D Plus being 10 points behind Alpha Gaming is certainly not something I would have predicted after the end of day one, but yeah, here we are, which is very cool to see, honestly, the reigning champions having some of those life signs come back into effect. As D Plus do rotate straight away from Rozhok. They get a nice east side start here for them. Towards the center of the circle as well, they should be able to get towards. But you're right, there is a lot of teams towards the middle of the pack, pretty much from 8th upwards, that can challenge for that third place. Though at any moment, there is this case that any moment GOAT could change that. Because if GOAT get a 20-point game in any of our next 3 matches, it does become very hard to catch up to them. Yeah, absolutely. I mean, it's still just out of reach to really say who our top 3 are looking likely to be. We know who 2 of them are very likely to be, but yeah, absolutely. And then down towards 11th place as well, there is a bit of danger there. It's in general less likely that they'll find those big 20-pointers, but it's definitely possible, right? From probably, I mean, it would be difficult for OG and Reject to make it, but it's still just sort of on the doorstep. But certainly GS have a chance. Loops, GS, Gen G, and 97G, they're sort of in this state of flux right now, with GS definitely behind that pack. But whose spot would they take with a big game? That remains to be seen. Let's take a look at the center of the circle at the moment. 9Z coming in from Yasnaya. They do have an outpost down towards the south side, scouting. D Plus also moving their way in. Reject so far have done a fairly good job to start moving up towards the top side of the middle of the lobby, let's say, at least not the top side at all. But currently in 13th place. They're still a hefty 18 points behind, though. And that, again, there's a lot of points to be gained. It does require Loops to not have a great game either. So for Reject, they just have to keep pushing all day. For GS, it's a little bit of an easier story, from 71 up to 83, and we've seen GS make some fairly decent maneuvers. It's still feeling hit or miss with that squad. For OG, only 1 point behind Reject. I think OG is the cutoff of teams that are able to get in towards last chance here, being at 64 points. But again, that is another strong set of 3 games for that squad.
Yeah, absolutely. It is very, very difficult. Again, we were thinking about that bubble towards the lower end being somewhere around the 90s, maybe low 90s, could be pushing up a little bit, especially given where we sit right now. It is very, very difficult to imagine that Tiamba are going to be able to get 40 points in 3 matches. And for Team Secret, 70 points, no. It's impossible. Even though they're going to win the next 3 matches back to back. You're just not, it's just not happening. Imagine, you get 3 20-point games back to back and you still don't even qualify for last chance. Oh, you don't? Yeah, you'd be on exactly. 81. Yeah, so it's rough. It's definitely rough. And I think Team Secret is the only team that is completely counted out here. But even for Tiamba, if they go down here, then they're also counted out. Pretty much. That would be nasty news for Tiamba. Alter Ego really want these points, though. You can see where they are on the tables right now. 5th place. And they were up in 3rd. They've been up in 2nd as well. They've been dancing around that top bubble. But for now, they're in 5th with a team 1 point ahead of them, a team 1 point behind them, and plenty more behind that who would be all too willing to usurp the spot and take some of that prize money and the all-important ticket to the finals. Goats moving in on the southwest side with APG behind them. The circle goes back out towards that western side. For Erangel here, this is our last Erangel of Group Green. It is also the last chance to get stable points and more so stabilize your position in the leaderboard. I think if you head over towards Miramar, as we've seen multiple times, some of the circles are so hectic. And the big thing about Miramar is not the fact that it can't be played well, but you get towards those end games where the circle can really only support 5 teams at most, and that's around about stage 6, stage 7. So there's less chance of you. Unlike Erangel, where you get to stage 6, stage 7, you can have like 8 or 9 teams in those circles, which gives a lot more chance to our squads to have a strong finish there. But you might just be cut out by luck, essentially, in Miramar, whether you can make it or not. You need to make sure now on this last Erangel that you secure that position and make it a little bit easier for yourself, basically giving yourself a buffer going in towards Miramar. That's most important for GOAT right now because they already have a small lead. They could extend that out further. Their life becomes so much easier on Miramar because they can just play it slow. Yeah, it's potential to be a little bit more relaxed there. You'd love to see it. You do not want that pressure of knowing, oh, we need to get like a 17 elim game here to do something on these tables, etc. It's really nerve-wracking, and you do not want that on your conscience. Teams are starting to line up very, very linear down the center of this circle blank. That Yaz field presence being really felt on that west side. Everyone wants access to the mentioned fields if it goes northeast. It does start to splay out. It's down towards Farm, down towards Milter, with that lumberyard on the southeast side as well. But on the north side, it's very much along the road south of Yasnaya. Team Secret do find loops. That's a big deal, especially for the 11th place position. Rafina, lucky to get away with his life there. I'm surprised he didn't find that final shot, but they will look to see if they can finish off some more. You have to hit that, finally. Oh, 2 of his teammates sending over his head. Lovely bit of stunt driving there coming through from Team Secret. Even if they can't make the points work, they'll try and look pretty doing it. And they do manage to get, a decent chunk out of loops and very likely to pick up another point at least. So well done them. Congratulations. Too late, do better the next big thing year. is that getting 2 players out from 11th place, the 11th place team, is actually a massive deal here for Reject as well as OG. Stops Loots from progressing too much and gives yet again another chance for both those teams to put up some strong points here. And with OG being able to play up towards the north side, play in heaven, this is a really strong chance for them to get a good game on here. Absolutely. They need to regroup properly, though. If they don't,
find it in time, teams will start to crunch in. Goat moving in from the southwest side with the Falcons out to their west. Wolves on the northwest of this still D+ ahead of them. Goat do have a challenge here. They don't really have too many options, and Gen G already finding their way in the building that Killer Joe was trying to scout out. Papara Supermassive. I mean, you can't stop off there, really. It's too close to the edge of the circle. Want to get a little bit further. The two from Loops, GS, everybody's sending now. You've got to do. I mean, this is an awkward area of the map to be playing in. Still have Mansion in play. No one really wants to go for that just yet. They're waiting for the circle to make a true decision on where it's finishing. D+ just sends center. They're quite happy with that one to play in that position. Again, Alpha Gaming down towards that southeast side, playing it more towards the edge here. They will have to sweep through teams, but it's a team that has the capability to do that massively. No one getting fully stuck into a fight just yet. But I mean, it is APG really on this eastern side. That sweep through, maybe. Papara Supermassive there as well. Probably the first team to face Alter Ego potentially around this prison mound. Tianba, hey, they still got 4 players alive. You know, they're fine. They're doing okay. They can still do it, I believe. Well, don't even know if I believe myself on that one. You are Captain optimistic today, honestly. Yeah, let's go with that. Let's go with that. Loops trying to move on through and actually finding an opener to Papara Supermassive. Yeah, 1 point. That's 2 players is good. Definitely good. But Papara Supermassive losing a player there to a 2-man team is pretty rough. Playing alongside this ditch. Sits around the dead trees. It's a okay position. Put it that way. Will require smokes though. To keep teams off your back. Also easily crashable. Your outpost as well is also gone due to loops, which does make this a bit more awkward. Waiting for stage 4 now to pop. Wolves on the northwest. 102 points after that game. True heroes performance from Doran to sit them there. I mean, I'm surprised that the teams have managed to compact themselves into this area. I mean, the blue zone isn't quite fully upon APG, and maybe that's going to be the go time. But APG can't find the shots, and it's actually Tianba to draw first on that engagement. And Nate over the top is huge, gets the flush, and another knock to APG. The circle sends all the way down to the southwest, so OG are going to have to move. Can't play that Evan combat anymore. This is big news for IC, and for GOAT, and for Falcons, and maybe even for Reject. It's pretty good. Pretty good. I mean, Reject being able to move him from that south side's massive. Also, big chance here now for D+ to get ahead, right? Get first place. First place over in pmgc 2024. Now looking to top the tables here in Group Green. Will be a great marker for what's to come from this South Korean squad. But yeah, you're right. For Gen G, inner circle. Reject result, very promising. Who are closest to chasing down. Well, I mean, they're trying to get away from this hilltop, but Alter Ego actually sent up towards this fight, right there, and they're losing all of their players now. Over towards just Alva now remaining. That's not friendly. That's not fun. Yeah, I meant more as in, like, why is Tianba suddenly insane at the game? Like, not why are they bad, because this is crazy. They've just taken down a lot of the tough parts of the lobby here pretty succinctly, leaving Alter Ego, who were challenging for a 3rd place position, now with just 1. And Alva, I don't think he survives here, and he does not. No. They're done and dusted. 5th place at the end of this match with 2 Miramars left to play. I mean, they're just going to hope that GOAT and IC go down as well, aren't they? And the Wolves. I mean, and actually half the lobby. It would be great for Alter Ego if you could all just, stop playing right now. They'd love that. I mean, I think there has been a little bit of lackluster performance from Alter Ego today, but fair enough as well, where you look at those circles, it's been really rough. Finally, you get to play a decent one, and it's very open. It's a hard rotate for them too. They get caught off towards prison with 2 teams playing around that location. 2 teams, which I might add, have
basically nothing to lose here as well, with Team Secret and Tiamba playing extremely aggressive. There's a real firecracker about to pop off, I'm sure, there. But GS are crashing. Two teams chasing for that 11th place bubble. GS moving down towards Sarah, but he has got that outpost to reposition away back towards the rest of his team. Will they be able to do so safely, securely? Reiji, though, not so lucky. Spotted on the off angle and immediately flushed away as well. And that's a point added to the tally for GS, with loops going low, down to one player. They definitely want to make this game a big one. See how far they can go. That's an all boot striking from the northern side. But Tiamba's not done yet. The nades, pins pulled, and Team Secret looking to hit the deck here as the explosions come through very quickly. Good damage will find one. Xerus should go down to the splash damage there, and does. Tiamba decided that they can play PUBG Mobile finally. Yeah, they've been allowed to open their eyes, it seems, on this one. A nice pick up there. Wolves trying to make the dash now across the open ground. OG trying to stop them. And they have got a beautiful lineup there for AKOP. Doesn't quite connect for another knock, but slows the Wolves down a lot more. They've got 20 seconds to get back up and into fighting form. With the tanky getting rezzed as well, OG are on 4. They have to move 2. The question is, where do they go right now, Blank? It's open area to the north of Shelter, to the north and the west of Mansion. Wolves who need to make their way out, but like you say, they are surrounded on both sides here. Falcons looking for a little bit of redemption from that last match too, as Alpha Gaming takes this opportunity just to swing through. They see the smokes down over towards 9. See, and swing straight back around again. Worth their time trying to pick that one up. I think for Wolves this is an extremely difficult run out. They are pincered at the moment. Certainly are. Tiamba taking down Papa Supermassive as well. They take a knock. Oh, that's all the way out the back, actually. So Bond might actually be a full casualty. Wolves crashing across the road. The Falcons were trying to make their life hard, and that is going to continue to be the case as Wolves are getting torn apart, crashing into OG. It's not friendly. I think it's just Bat now remaining. Meanwhile, in the picture-in-picture, the south side is getting real hot between Reject and GS. Those two teams looking to chase for that 11th place bubble. I don't quite know who's in the lead right now, Blank, but I feel like GS might have this one. Reject taking heavy casualties. Apollo nades his teammate. GS. And that is it, done and dusted. 65 points now for Reject, and not much more. But GS do profit off the back of that. 4 elims on that game. Wolves down as well. Eagles will go out. It's just Baton left remaining. Good nades coming through from 9Z over towards OG as they try to cross the road. It's a difficult crossing, certainly. I'm just looking. I just had a little chuckle. I looked at Tiamba. They've got 11 eliminations blank. Yeah, we're in minute 20, right? Like this. What? It's very confusing. I don't think they're going to be able to get too much further here, out in the open, but they do have a position in this next circle. We'll see if they can maintain it for a little bit longer. OG also heavily suffering. This 9ZG layering the nades on in, but one nade sent back their way could be beautiful. Falcons having a tough time in the meantime as well. On the other side of it, the other flank against OG, and they find Narvalo. I mean, Narvalo's been down for a little while now. And OG do take quite a bit of damage there from the Falcons. It was instantly healed back up again. Redox does get knocked though. Ralph will have to send out, try and pick him up. Good shot there. Coming through from OG. Will take down Koa, and now with just Ralph remaining. This is what you want to see OG push. That's exactly what they do. Well done. But the next move, again, they are trapped on this north side. Goat have to move as well.
Do they want to try and stymie OG, or do they want to try and get closer? Remember, they're defending their third place right now against IC, who have position in the circle. Okay, nice little pick out there as 9Z try and roll on up, but Tanky has other ideas. He's going to stop them dead in their tracks, look for more spray downs. Finally, a turn on the corner is there, but the rest of OG now need to pick up the slack. AKOP can't do it, but the teammates are still rallying, and Tanky stays alive. One player now for OG to pick them back up. 14 seconds before the zone moves. They might just be able to roll out as 3. Really good stuff. Again, Tanky is definitely my favorite player on that squad. He is very slick with it. Some insane maneuvers from his side of things. I think he's been thrown on the side for a fair few teams as well that maybe underestimated him. D+, though, they send across. There is shots from Gen G. I think D+ trying to finish off that fight between them and OG, but seeing their teammates getting blasted out by Gen G in the background, sees them run back towards the rest of the team. Tiamba still taking shots, but it's Gen G to do most of the work there over towards GS. For Gen G, this is a big deal for them. If they get a chicken dinner on this game, that does shoot them back up into the hundreds alongside a lot of other squads. Oh my goodness me. It is really their time to join that fight, it seems, but GOAT are still alive, Blank. On the western side, they do have to get on in, and Inner Circle maybe a little bit more happy because they are in the circle on this next rotate. D+ with one player left standing. Trying to rack up as many places as they can, but Chips out the open will be taken down, and the point goes to OG, who are now very close to GS, and they're behind Loops on 77. OG with the crash, actually, over towards Gen G's position, and one of them's knocked on the wall. I mean, for OG, this looks a lot more aggressive. It looks good. I mean, they are trying things today, and I like it. I really do like it. A Tanky now on the sidewall. WizGod has to move up in the vehicle. There is a nade sent out. It's a little bit too far, but a nice Molotov will cause Dammy to be sat down on the side. Nade goes a little far again from Gen G, but GS assaulting from the sidelines too. I'm looking at GOAT crashing into IC. That's the battle for third place popping off right now in the picture-in-picture. It's really, really dangerous stuff as Gen G look at a climb, but a nade from WizGod is able to land on target. GOAT are looking to keep this crash going. IC hopping out, but can't quite find on the spray down. And there's a chime in from Tianba, who is still alive, by the way. Oh my goodness me, there's 3 very important fights happening right now, Blank, all at once. As on the south side, it's GOAT who take down IC. 6 elims now, placements into 5th place. And there's still that Lone Ranger running across the open ground. No, hang on a minute. He has got his teammates still going with Aching behind him. Tiamba getting themselves up towards the wall with 12 elims on the match, by the way. Gen G at 10, OG at 10. You can see teams are really pushing as far as they possibly can to try and get into last chance here. We are so close on the tables for 3rd place. We are so close on the tables down towards for the last chance. A Tanky finds Quick. Tiamba steps up but can't find the shots onto a Tanky. Oh, he's dodging down there. GOAT may be onto a winner though, Black, with Gen G starting to wane. This could be the time that they solidify that 3rd place, move it out of reach for almost everyone in the lobby. Inner Circle could have been the last bastion here. OG lock into
the wall, in which case it may not have mattered the circle pushing away from either of these squads. But look how open this ground is. ESO not taking any shots either just yet. He basically smokes for GOAT too. Now the zone will close dead center. It's going to start now, and teams have to move. The smoke's lining up. Tianba have started to push out, but stepping back into the blue zone. ESO finds a play like GOAT. That's huge. Finding that off angle, finding a knock against GOAT. That brings it into a 2v2v1 now. The res needs to come through. Tianba, stop this res from happening at all costs. They need to find it. The smoke there covers off the other angle. Aching. Milo, where are you? You need these sprays. You need them now, or GOAT are going to be back up as 3, up into the wall, and Satan is still there. He's crossing the open ground, and Kraken, he's able to find it. Satan goes low. He's been spotted. Aching with the angle on towards him. Looking to keep that spray going. And Tianba looking to ladder up. They will get second, but they only have the one player to stand, and the nades from GOAT over the top seal the deal, and they might have just guaranteed GOAT's spot in the grand finals. What a close down on the game. Tianba making waves, but it is the top 3 looking all the more certain. Yeah, it's such a messy finish there coming through from those 3 teams. Saiyan does nothing, Tianba does nothing. That's coming across from the side, because honestly that's an international mindset, where as those 3 teams there, you deal with the biggest target first in the lobby, and then you as the solos can fight against one another for the win, right? But that way everyone goes down at separate orders in low placings, and you limit yourself on elims too. I think it's a weird one. It's definitely a weird one. Yeah, it's a really, really weird ending there, but GOAT. And when the going gets tough and everything is on the line, GOAT pull out a chicken dinner. This could be the one that seals the deal for them and gives them that trip on over to the grand finals, Max. What a game from GOAT. I mean, it's not just a great game. This is a team, Hodrix, that dropped in Primorsk, almost a complete opposite side of the map. And they go for a quick pivot. And what stood out to me is not just that early game rotation. Their terrain knowledge was second to none this match on Erangel. They knew what position on the western side of Museum they could use in their favor and just make teams avoid them like the plague. And all the teams could see Orangutan, APG, all those western teams just did not want to get in a 200-meter radius of GOAT because that position was so damn strong. And you can see by some of the damage here from the players, Kraken, Twigs, Vic, Niptura, taking almost no damage this game because their fights were so one-sided. Yeah, really nice show, and you're right. They went onto that western side, they got a great position, and they were just able to clear teams, just very methodical. I think that's really the name of the game so far in the Group Green stage, right, is just this methodical attitude towards the rest of the lobby. They're not going full sends, they're just taking it slow, one at a time with those timings as well. Really, another really good game from GOAT, and that is why they're in the top 3 currently. Oh, such a clutch performance for them. And not to mention, right, that was from the top of the leaderboards, our 3rd place team. But man, this game really just showed the desperation and tenacity of our bottom squads, man. You saw Tianba go crazy with a bunch of eliminations. OG get a bunch of eliminations. GS as well. You can see they're trying to do everything they can. It's just so difficult with this point lead from Loops, right? They're hanging on by a thread here. They're just crawling through these games, just hoping, just one point, sir, please. That is 4v1, just 1 extra point. And you know what? A point might just be the difference maker at the end of the day between 11th and 12th position. Who continues in the last chance and who is sent home after these next 2 matches? 2 Miramars is here to seal their fate, as we still have some of these replays. But man, Museum
all over the place. Oh my goodness. D plus Crazy. Kia going full send onto Gen G. In my opinion, the crash was very poorly executed. Keeping chips as an off angle on a flat train like this for me is the wrong decision, Niptura. And then Orangutan, more opportunistic, right? Looking to go for a third party. I appreciated that play. I did, but again, it was just a little bit too late, right? They tried to do something there on the opposite side, trying to just pincer Gen G there, but it just wasn't gonna work. The timing was way off there, but we see these rotations, Max. You're right? Goat over in Primorsk, a complete opposite side of the map there from everybody else. That was they had to get a lot of fuel to make that rotation. They had to loot a lot of those to make sure those cars were still in working condition. Here, playing really adamant to play these high ground positions in this spot on the map, and then they go for the side next to OP Dip. And this is the terrain knowledge I was talking about. That position they had. It's so hard for teams to breach you entering from the western side. So they just held it down, protected themselves with the cars. And you can see Orangutan. They did not want to have to deal with the side of Ghost. They're like, oh, well, Museum, there's a fight with D+. We'll go for that instead because Go, that position is way too strong. And Go, knowing the Orangutan left, they fight IC instead in that compound. And then, boom, full control of the southern western side. Easy peasy wrap up for that chicken dinner on Goat's side. 20 points on the board. I mean, that is what they needed. Tiamba put up 20 as well. I mean, you can tell they're just trying to pull out all the stops here, Niptura. They really are. Some really good show from Tiamba, but it's just a little too late, Jukes. A little too late. Just 2 games left for them to put up. I mean, we're talking about them having to put up an equal number of points in both the upcoming Miramars for them to really have a shot at the top 11, right? At going to last chance. And so that's just going to be so difficult. But hey, better late than never, I suppose. I really like what we saw from them. That's the Tiamba we're used to seeing. Hopefully we can see that again in the next game. I agree. I personally, with how chaotic I know these last 2 matches are going to be, especially the last match for sure, I think it's done and dusted for Tiamba. But that just goes to say, right? If they somehow make it happen, it will be the comeback of the entire year, Max. I mean, Reject, why 0 points? Alter Ego, why 0 points? Oh, we were having some good momentum yesterday for Alter Ego, today for Reject. No follow through on this game. It was definitely not an easy match for these teams. I do have to say, if you had to be center very early, like your Gen G, like your D+. But regardless, that momentum did not follow through. Hopefully that could be the case going into those mirrors. No. That from GOAT to IC, that's a 25-point difference. All right. We got 2 matches left to go. We know how crazy the last match is going to be, right? In my opinion, these teams are looking at you, IC, all the way down to Wolves. You have to do something different. A regular game of PUBG Mobile isn't going to get you in the grand finals, right? Yes. What would you suggest? I want to hear from both you guys, right? What would you suggest for a team like IC, right, to have to do in order to make it into those grand finals and possibly take out GOAT? Oh, that's a really tough answer. I don't know necessarily that they should do anything different. I think the way I see them playing has been pretty consistent so far today. Alter Ego, I think, do need to step up and try and get more placement, more of that end game positioning, end game presence. For IC, I would say just up the ante a little bit here. Not be more careful, but just be a little bit more persistent with their plays. Max, you agree with that? I would agree. I'm just looking at the hot drops locations right now. So GOAT have a hot drop in common in El Pozo with Falcons. Now that could be a very impactful one. If GOAT go out early, that could open up the floodgates for some of these teams to do a final last ditch effort to get in the top 3. If you're GOAT though, Hot Jukes, now we're going on the opposite side. No, they know they might be targeted. They can't afford to go out early. I would say you change your drop location. You go Ruins, you go Tierra Blanca, you go Campo Militar, you go Prison. For all I care, you don't take the hot drop. Otherwise, you are throwing massively. If I see it happen, GOAT, for me, I don't want to see you in the finals. Sorry, that would be the throw of a lifetime.
Yeah, I gotta agree. I think that GOAT should definitely mix things up here because personally, I mean, we've seen too much esports at this point, right? I think if you're IC and AE, if you do the same thing and just try to add it up, I don't think you're making it. Like, without a doubt, there's no chance. 25 points is too big to cross. You've done this all year long, right? Why not try to get to the finals here and now? Don't even worry about last stage, right? So last chance. Yes. So if you're IC, I'm not gonna say hot drop, right? I don't think you're gonna hot drop, right? But no, do something to possibly camp out a rotation. You gotta figure out a way to take this team out early, because if they put up 5 points, I think it's over, right? Yeah. 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 So they need zero. They need zero, right? So I mean, honestly, if I see IC or any of these teams going down, and this is how I feel about it, right? I don't even want to see you in the grand finals. I don't. Like, I hate it. It's the worst thing ever. You gotta do something different, right? I mean, if this was PMSL, you don't want to, like, you know, upset other teams, fine. But this is where the big money is on the line. Come on. Okay, chat. We're sorry. He's very passionate right now. Okay, he's a bit angsty. Okay, just he'll relax after this game. Don't worry. Yes, it'll be fine. Yeah. It's fine. It'll be fine. It'll be fine for GOAT if they put up 5 points. I'll tell you that right now. Calm down, Hot Troops. That is Let true. us talk, okay? So it's too much. We need to hold him back. Oh my goodness. But you know what, Niptra? I think that, like, genuinely to have a bit of a conversation on what Hodrix is talking about. Do you want to go for the hot drop and take that risk? I would not recommend it. No. I just don't want to see a full squad out of those teams that are competing for top 3 get towards the late stage, circle 5, 6, and just play hyper passive. Placement points aren't going to cut it. You need to frag out, and late game, we need to see some strong presence here on these Miramar matches. We do, and I think it's for those 3 teams in particular, right? GOAT, Inner Circle, and Alter Ego. Those 3 teams in particular have a very similar playstyle when it comes to the late game. They play mid to edge. So you're going to see all 3 of those teams actually on the edge of the circle trying to farm out other teams and spread and split in the end game. If one of those teams can catch GOAT early before they do that, or in that push to go split on the edge, they actually find GOAT, see them in the Elim feed, and head to their direction, that could be a huge rotational sort of backstab that doesn't include the risk of a hot drop to me. So I would love to see both of those teams do that. Definitely. If we have one of these teams that are chasing the top 3 and you see in the elimination feed when you flush out a player, that is GOAT, I want you to, and you have all your players in a healthy condition, I want to see you just rush them right away. Yes. If we don't see that, for me, you don't have what it takes, Hot Jukes, to be a grand finalist team. I agree. That's what I'm talking about, right? I'm not saying the hot drop, but if you even get the slightest scent, right, that GOAT is near you, you need to be headed in that direction without a shadow of a doubt, because a chicken dinner, 10 eliminations ain't gonna do it if GOAT puts up 5 points here. Now, that's the top, right? Now, to survive to the last chance, I think GS needs to do the same thing with loops, right? I mean, reject, it's such a big point difference. It's gonna, I think too many things need to happen, right? And the same goes for, you know, like Tianba. But I mean, I want to see something different from the teams at the bottom as well. And since you have so many squads having to do that, these last 2 matches are gonna be insane, Neptura. Yeah, they are. I mean, if Rejects had Tiamba's game in that last Erangel, we would see probably a very different storyline coming through if Rejects able to get into the top 11. But the way it's looking, I think both Tiamba and RC are just not looking where they need to be for that next 2 games. मैं एक्चुअली कॉल पे था तो इसकी वजह से सीन हो गया. किधर गया? पॉइंट्स टेबल दिखा रहा था ना अभी तक, किधर गया? That's an word. Them more, almost a complete opposite side of the position they had. ये देखो, ये तुम लोग को पता है, अगर तुम लोग को नहीं पता रहेगा तो ओजी का रोटेशन क्यों बता रहे हैं लोग. पूरे पीएमजीसी में अगर किसी ने एकदम जोन टू जोन अगर एंट्री लिया है विदाउट एनी कैजुअलिटी तो भाई वो ओजी था. मतलब विदाउट नहीं, मतलब उसमें एक आधार हो रहा था, बट 90% ऑफ टाइम वो जोन में 4 के 4 बंदे रहते थे. इसलिए उन लोग का दिखाया क्योंकि टॉप 4 टीम तुम लोग को पता था. गोट था, जेन जी था, टियानबा था, और एक कौन सा तो एक टीम था मेरे को याद नहीं आ रहा, और एक था. ये 4 टीम यहाँ पे फाइट करते. गोट ने चिकन निकाला, ठीक है, अपन पहले मर गए थे.
इसकी वजह से वो शॉर्ट है भाई वो। It's so hard to see orangutan. देखो They did. ये यहाँ पे जो ये गोट जो ये खेल रही थी ना, ये डीप, ये बहुत यही डीप अगर पहले भी लेते ना बहुत किल आ जाते, बहुत किल, बहुत मतलब, लेकिन उतना किल मिल भी सकता था, मर भी सकता था, इसलिए ये बहुत इजीली स्पॉट होता अगर खड़े होते। लेट के खेलेगा तो कोई नहीं मार पाता। Yeah. Not want to have to deal with the side of Ghost. Like, oh, the last chance, but then you got to be top two. You got to qualify now, otherwise it's going to be so much harder for you to actually make it to Bangkok for these grand finals. It just is so difficult from here on out. And if you thought, you know, group stage was hard, last chance is going to be even worse, because now you've got all those teams in last chance just desperate. You think these teams are playing hard now? Wait till we get to last chance, because that is the end of the line for the majority of the teams. There are so few slots left once we get over there that those teams just going to be having a really hard time to do anything, I think. So we'll see what happens when it comes to that. So I wouldn't want to be in those shoes, in that place, in that position. So really these last two games coming up, it's do or die, because man, I don't want to be in last chance if I were them. That's a fact, right? For those guys that don't know, we got Group Red coming to happen the day after tomorrow, right? And we're going to have some monster squads joining. Monsters nahi. So this stream, this pmgc, PUBG Mobile Global Championship, या अपन Global Championship बोल सकते हो, PUBG Mobile बोल नहीं सकते स्ट्रीम पे, बट को-स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम बाय रेड बुल, और ये मैं खुद से खरीदा नहीं हूँ, स्टिल अभी मैं बोल रहा हूँ 120 रुपये 125 रुपये मैं खुद से जेब से बार बार तो डालूंगा नहीं, मैं हर स्ट्रीम रेड बुल दिखाने, तो को-स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल। थैंक यू सो मच रेड बुल फॉर स्पॉन्सरिंग मी, ये एनर्जी पार्टनर। बस मेरे को सिर्फ रेड बुल स्पॉन्सर है और कुछ नहीं भाई, ना मेरे को पैसा मिल रहा है ना कुछ, बस मेरे को रेड बुल स्पॉन्सर है और कुछ नहीं, तो जाके बाई कर सकते हो यार तुम लोग, और क्या बोलूँ। We're going to be going crazy, pushing everything. So, man, you got to be able to do it in this game, at least in my opinion, Neptune. Yeah, it's gonna be something that you really just need to get your head on straight for these Miramar's, Jukes, because this is the last chance. Well, you know what? I want to hear from Jafar from GS. Let's see what Seven has to say from this guy in their last match of the day, possibly. Welcome to a quick report with the 7WG. I'm joined by none other than GS Jafar. Yesterday, going into Miramar, you had one of the best performances. You ended up getting 9 eliminations, a 4th place finish. Now, with currently just 3 points away from top 11, what is the mentality going into Miramar? انت بارحه ميرامار يعني ابدعتوا ما شاء الله عليكم، هسه 3 نقاط من توب 11، شنو تفكيرك لما اتجاه هاي ميرامار بالنهايه؟ والله شوف، مو بس بميرامار، اليوم من بدايه الجيم عقليتنا انه مو بس انه توب 11 عشان نحاول نجيب لنا جيم حلو ونتاهل، بس الحمد لله راح نحاول نركز بقيومتنا، نحاول نلعب مثل البارحه وان شاء الله نقدم اداء حلو. It's not just Miramar. We're entering today with a completely different mindset. We're aiming to actually make top 3, but it doesn't seem very likely. So more likely we're aiming just to make it to top 11. We're doing really well in the previous maps, and we think we can continue that momentum. Well, hey, I like that mentality. At first, you guys were aiming for top 3. Top 3 teams are playing lights out. That turned out to be unlikely. Top 11, it's almost right there. I'm hoping you guys can make it. Thank you so much, brother. Back to y'all. Yeah, top 3 is a little too far away for GS, but last chance is still right there. Okay, well, we're going into Miramar, Max, right? Yes. I like what you said. I think GOAT should change up their drop location. I know you're very familiar with the drops here in Miramar, okay? If that's the case, where would you want to see GOAT drop? How about that? I think I gave a few options earlier. You got Ruins, Campo Militar, Tierra Bronca. Prison was a bit of a meme pick, to be honest. I don't mean that one seriously. Yeah. But you got a lot of northern positions. Even the trash loot around water treatment wouldn't be a bad option. I think northern side here, Niptura, would be the best option because a lot of the lobby is or central or more focused around Chumacera, Los Leones. Those positions are heavily just cluttered with teams at this point. So yeah, northern side, I would say not a bad shout for Go Team.
Yeah, I'd also avoid anything near the teams that are coming for you, right? Alter Ego in particular do an El Hazahar truck stop split, as we've seen in the past. So for that, you're talking about the northern side, I completely agree. Just stay away from the northeastern side. Maybe some ruins, maybe something over there would be a lot better. Didn't we have... sorry, my memory is... it's coming back to me. Didn't we have a hot drop? Gen G versus GOAT team in Hacienda de Patron day one? That's right. That's right, we did. That was their first No win, way we right? see that again, right? No way. Bro. There's no way Maybe. GOAT risks it. Maybe? I mean... But the thing is that if GOAT... kind of cool. And that's the thing, is that if GOAT does it and they win it, I mean, that could be it. Here and now. It's done. You know? Yeah. I hate it. They got enough of a gap, Jukes. They could risk it in this game and then come back in Miramar. I think they might just have enough of a gap to maybe make that play. I said that for the memes. I can't believe you guys are like, actually, yes. I was just like, it happened once. Don't do it, please. Go, if you're listening, don't it do was a it. bad idea. But they might. A party in Hacienda. That is what I want to see for sure. Well, guys, you know the leaderboards. You know which teams need to perform. We're headed to the desert here. Last 2 matches of the day. Are we going to see that hot drop? Thank you, John. I know you want to. That's for sure. If there's one thing I love, it's a hot drop on Miramar. It's थोड़ा मैं गाना बन गया वो गाना बजता है भाई ये कॉपीराइट वाला Interesting aspect of it all. I think we can refocus in on the top 3 after next game if a team starts to chase. Yeah, I think that's a totally reasonable outlook to take going into the final 2 matches into the Miramar set. The last potentially of the year for some of these teams. For 5 of our teams, they won't be playing a tournament again until the new year. The circle, okay. It's not dramatic here. And to be fair, we've had our fair share of dramatic circles. We had 2 military islands back to back. So fair enough. We got a little bit more sane on this one. Yeah, down towards the south side. It's a very easy playing path into a very easy circle. Papra Supermassive are dropping here. I think Inner Circle, like we say, are the closest, but even then, what is that? 25 points behind. We require GOAT to go down early twice. They are on that north side towards Hacienda. There's no hot drops happening there. The closest really is this between Papra Supermassive and Alter Ego, but even then, they're looking to send out and get away. I think every team's trying to maximize their chances to get in. Now, Loops is that marker, and they have been that marker for a very long time now in 11th place. GS chasing just 3 measly points behind. It's also wild to me that all the way down in 9th place, 98 points, is still chasing towards that top spot. Sorry? Ooh. Why did Doc do that? That's... Why did Dammy... What's Go? Hello? I feel like there's something going on. Oh, it's a rehost. This can't be It's right. absolutely a rehost, yeah. It's got to be a rehost. There's no way that this is just happening, right? Yeah. Okay. Okay. All right. Okay. Interesting. That's okay. Wow. That was a little nerve-wracking for a second. Yeah, they'll start to name themselves out. Very clear that is what is going on. As soon as the second team started to do it, I thought, okay, yeah, definitely. We'll hopefully be told what is going on as soon as possible. Yeah, it seems like Reject's got some issues. Yeah. We'll be getting back into game pretty soon-ish.
Let's go, But guys. it being Let's Doc, I was go. like, I didn't put it past Doc to do something odd, right? Luckily for us, get straight back into things. We can see here, I mean, teams are worried, right? I mean, Tiama's definitely worried of where they're going to end up. It's a stressful one getting into that game. You know, you've all had all this pent-up tension to now suddenly in this position where you got to get a restart. अरे PUBG mobile Oh, थोड़ी that है, adrenaline is sorry. out the window. Sorry. 6 घंटे का limit Yeah, है ना it's. इधर है. I mean, we'll see if the circle's as friendly as it was this time around, right? Like, that's what we were looking at. We're thinking about, okay, the circle's kind of chill. It seems to be okay. Everything's fine. Sure. This is when the circle goes out to the East Islands, right? It's after a game like this, or a Partona, right? We'll see if we'll get some crazy shenanigans unfolding very soon. Reject looking to fix their issue. I believe we are going to be going back over to the analyst desk fairly shortly to give a little bit more. ये भी कर रहा है क्या आज वॉच पार्टी? नहीं तो करता नहीं है. तो 5 दिन पहले साला परमिशन नहीं था, मिल गया ना, अब रेपटा देंगे. मेरे को वॉच पार्टी का परमिशन नहीं मिला था. स्टार्ट हो गया. ये कौन सा है? ये तो अपोलो है आई गेस, सबसे राइट में, कि ये रेंजी है भाई. बोल रहा था मेरे को भाई, इसको तो मिलना चाहिए था भाई. Decision made by D plus Kia here to actually. We know that GOAT are going to Hacienda. That's a fact, right? So they're not changing up their drop location. They're not doing that water treatment split max. So I mean, 30 सेकंड का अभी टाइमर चल रहा है. लेट्स गो. लेट्स सी क्या होता है अभी.
चालू नहीं हुआ ना अभी तक 30 सेकंड बचा है चालू हो गया And that is what we are going to be paying attention to, right? Let's go, guys. Let's just go. before there, Blank, you were talking about how it is going to be much more interesting to focus on that bottom side of the tables for this game upcoming, rather than go Thank you so much. a Thank little you so bit much for the towards the top 20 sides, likes, right? Thank Because you it so is a much. question of can a team have a massive game here, and then we'll look at them. So that bottom set, much more prescient, much more present in the mind. Feels like we're getting a bit of deja vu now, getting back into Miramar once again. There are definitely a fair few squads that need to step things up. I can't believe Tiamba was able to get such a high placing finish in that last match. The amount of points they're able to accrue as well is just, it was a silly amount. I think they were able to get 20 points in the end to close out that game. Still more to be gathered here, but we'll take a look in with the leaderboard when it does pop up on the screen shortly. It's so crazy that everyone has been. It's very, very competitive Group Green, honestly. It's a scary lobby. Whoever chose these groups is really quite mean. Oh, yeah. And I mean, Group Red will be interesting. Hey, Blank, I think we're going to Bartona this game. Pretty sure. 100% going to go all the way down south. Let's kick it off. I wouldn't mind it. It's a hard circle, though. You know, Minstelvae, Chumacera in general is pretty difficult. Alter Ego, this time up against Papa Supermassive in close range. One player very low, looks to head upstairs. Still darting around, has a gun now to work with. But just a couple of shots from Rosemary, and he's whiffing here. By Rosemary, भाई Rosemary's figured out exactly what he's got. Nico, I mean, it looked like he had a bandage there, maybe a stim. He was able to pop. Rosemary certainly has some healing on, but a full med kit here is huge for Rosemary. To be able to get all the way back up to full HP, this is a massive advantage now. Drops down for the Julies and will start for the spray on the hop out. Oh, he's not quite on 12 rounds, but he's only going to need a couple of them. 3 remaining in the chamber, and Rosemary picks up a crucial point here against Papa Supermassive. I mean, I said we weren't going to focus on the top 3, but Alter Ego, they want it desperately. I mean, to be honest, Alter Ego having issues that last game, which is why we did have that reset, where they're able to effectively get away from Papa Supermassive to a very stressful start here versus Papara. But Rosemary, absolute legend in the game, able to get it done versus Nico, who is also a very, very good player, by the way. So 2 extremely strong fraggers going face to face. Alter Ego do get alive. Do get away with it alive. But 82 points for GS. I was highlighting that just beforehand, but it's only 3 points to go. It's not many. This is Loops' time to kick the old engine into gear, because it's been very slow today to get off this marker, consistently being in the danger zone. That's really unpleasant of a place to be. I mean, yeah, it's 10th and down that are in danger here in these last 2. Losing players, losing points, losing opportunities is big news for the teams at that lower side. D+, I mean, they're fairly split right now. Osal is on his own, picking up a pan. I mean, if another player from Papa Supermassive goes down here as well, that is going to be real bad news. I don't think Kamikaze knows there's a player on the inside, or actually maybe he does here, knows what building he's in, but they're going to regroup and get out of there. So see if they can stay alive, keep everyone now that they have remaining in this match. They definitely need it. I mean, they're right at the back of the pack chasing. They're just ahead of the pack. E+ though have laid a trap. And they'll spot Kamikaze, do a lot of damage, but it's actually Nolbu to find Tron B out the open, and Papra Supermassive are bleeding. Yeah, now, we can put it this way, is that Papra Supermassive, their run's done. So we'll be seeing them in last chance now. You go down to 2 players this early on Miramar, you are not finding a lot of points. And in 98, it is a tall order from them. Even in the next game, I think it would be mathematically impossible to make it in towards the top 3. I think for Papa Supermassive, I think we can count them out now.
as a team trying to chase all those top 3 spots. Yeah, it would be so they'd need to, you know, wipe half the lobby themselves in the next match to be able to even think about getting up into 3rd place, and even then that relies on GOAT not doing a thing in this match. So we'll have to see just what they could do. But I mean, just solidify yourself, right? Play for those small ball games. If you get 10 more points this match, in these next 2 matches, you will be very, very secure. For Papra Supermassive, that might be what they're looking for. Anywhere over that 100-point boundary generally is what we said feels very safe, right? For not getting bumped down into the full elimination from pmgc. And right now, it's not the greatest of company there, right? With Team Secret getting 24 points only. Yeah, bad time for them. Reject, who tried their best today, and Tiamba, who out of nowhere had a little bit of a comeback. They're sort of in a possible launchpad position. So I think for this game, Tiamba and Reject, this is where we can count them out or start to really consider them and have the team start to fear them. Yeah, again, you do have this situation where this is last chance saloon. This game, everything relies on this match. It's not going to be match 6 that's going to be the decider. It's this one which will enable match 6 to happen. For OG, again, if WizGod gets taken out of the vehicle here, now their life becomes a lot harder, but they still have next game to work with over towards top 11. But for the likes of Tiamba, Reject, for them, this match is so important. I think Tiamba had just a crazy run over on Erangel to set things up here, and it really will be some of those final moments to get this done. Yeah, it's really tough stuff from front to back here on the engagements. Teams now moving their way down to the southwest side around Los Leones, where we saw Team Secret just there, along with OG. Moving down north, actually, it's only GS who are still up on the north side of this circle, north of El Pozo. Everybody else crammed in now to the hills to the southwest of Chumacera. Actually, Papra Supermassive did send over to Bartona. So as a duo, if it goes there, that's one way to try and earn a lot of points, even as a duo. Indeed. He's got to live it out, really. D+ still looking to breach over the top side of Alpha Gaming. Themselves up in number 1, where they used to be, is number 1. And doing it by 1 or 2 points would really rub salt in the wounds, considering that's exactly what they did to Regnum Kaya last year. A nice central position right now from Reject, John. I think they can play. It's a bit of a split, but they're waiting for zone 2. We know that is a really big shrink on the circle. So for this kind of split, it's absolutely fair play by Reject when they're center. Yeah, we'll see if they can earn the points for it, though, on that central position. Next circle, just about to pop. Okay, we're not going to Partona, but we are going to Bayo de Mar. And these hills are really very dangerous. APG sit atop them. Falcons are going to regroup. 9ZG taking the town by storm. And the Wolves crunching in from the north, from Ladriera. So, who's going to join them? Who's going to be able to push on through? And that central position for Reject is basically taken away immediately. It's a bit unfortunate for Reject there. Being so split to try and get a position to then have to move over towards this portion of the map, which we actually haven't seen a lot of here at PMGC. I don't even think during Gauntlet, this is the first time we'll really see this position of the map. I know OG actually has a pretty good hold down towards the eastern side of La Tirera, but they're quite far from this one, and taking that position is going to be difficult. GS, though, rotating in from that west side, should be able to get a nice-ish position, but there's so many teams looking to get towards Minas del Valle. Head down towards that southwest side. I mean, GS making their way on the west point. Up the top on the high ground. Big dogs of the lobby. They have shown weaknesses, though. And will this be one of them? It's not going to matter really too much for them either way. They're locked in those top spots. There's no way that 2 teams will be, or 3 teams rather, will be able to jump up on over.
It might be a question of who's first and who has those bragging rights going in, but for now, it's more important for them just to chill out, have a good time, learn as much as they can about all these other teams that they may well very be facing in those grand final stages. IC, they had that fight with GOAT in the last game where they just weren't quite able to hold out on their compound. GOAT were successful on the crash, and that's really what allowed GOAT to get that chicken dinner, right? If IC had got that chicken dinner, this is a very different match, but now they sit not quite 30 points behind, Blank. They're 25 behind, but a big game here. They can take APG down on the hilltop. I mean, it could be for IC. I mean, they are the closest. Like you said, we go losing one player. It's a good opportunity to make it happen. Good as any. Wolves also in a fairly central spot right now. Alter Ego are on a long approach. In a circle. Take a knock here from Alpha. Sadly, OG do take a knock as they move in versus Genji. He's over towards Falak as well, which is not the player you want to lose. Not in a moment like this. Definitely not. They'll be missing him sorely. But they've still got 3 players on side. Next circle coming through as well. With Minasavaye held at the top, as we're seeing on our camera feed. And we're going up to the north side. So D+, going to roll straight past Papara Supermassive. And over towards that bridge. I wouldn't be too surprised to see Papara Supermassive going down fully here, but D+ might use the full squad. Supermassive looking to take shots. They're coming in right on the south side here. This is an interesting rotate coming through from D+ Kia. Papara Supermassive getting ahead of them, though, is a big deal. And yeah, this is the team that D+ has been chasing down almost all game, which feels pretty rough for these poor guys. As their attempt to assault towards the top side of the lobby, it's just not happening. More damage pouring in. Now Wolves looking to finish the job here. Igor consistently playing split from the rest of the team. He does survive far out towards the end, but I think sometimes he doesn't provide enough support to the team by the time that they need a regroup. He's not quite with them. Go lose Kraken. Ooh. That's to Jafar. Just start to put some points on the board potentially. I mean, this is big news for the bottom of the tables, right? But it's also big news for the top of the tables. If GOAT goes down here, and right now they are split from their reses with a lot of nades in hand for GS, every single one of them carrying some ordnance there. If GOAT go down here, that stops the third place bubble dead in its tracks and will make it a little bit easier for the teams chasing. And if GS get the points, they're chasing down loops too. D+ getting on over the bridge. It would be nice to hold up the top there, but I mean, it's really difficult to keep this one under control with the number of positions on the hill to this northeast side that Osal's looking towards that have oversight, right? I don't think for D+ you could stop here. That's exactly what they're doing. They're just using it to leapfrog. And Osal might even be able to find an Elim for it as well. They're crashing in. They know that there's someone down, someone wounded, and Doran can't do the dirty, not this time around. Not a repeat of Erangel, and now it's just Batten on the inside. And guess who's nowhere to be seen, Blank? It's Igor. But it's a crazy setup coming through from D+. The fact that you have Osal on the bridge and he's calling that I have the shot and I'm going to get the knock, and the rest of D+ trust him. That's the only way that they are that fast towards this fight, is if they trust him to get that knock and they sail in as those bullets are flying. Wolves had absolutely no time to react to this. I think for Igor, this is one of the few times where it's sort of excusable because that push was insane. We're seeing a couple of nades flying in as well on that southwest side. Blank, GS, and Go still at loggerheads. Batten is besieged beneath on the ground floor. A lot of shotgun shells flying. There was a double nade over in the GOAT fight, and they found another. Now just one player standing. Batten is down on our main stream, but it's GOAT looking for the swivel. GS still giving it a good go, and that is GOAT down. They will fall short on this one. So a non-moving target now. 133 for our teams chasing. It's too far out of reach maybe for this match, but put yourself next door for the next one and see what you can find. Not only that, but Blank, GS, 11th place loops. What do you got?
That does knock Loops down, but this is Loops in a fantastic spot atop the hill right now. West side Lediera. It's a really, really strong position to play. Alter Ego are trying to put some feelers out towards that location, though, see if they can get something done there. Tiamba, fairly central. They do take a fair bit of damage over to one of their players, but not down just yet. OG still at 3, so despite all the shenanigans happening on the eastern side, they were able to slowly push their way through. Still just not a pleasant zone, this one, though. The valley that sits right down the middle is so polarizing on this next circle shift. I mean, the eastern side is slightly better, arguably, but I mean, it's a tough argument, even at that, right? Like, you've got Minas de Valle sat right on the southeast side, a little bit further north. The compound, obviously, by Gamba, by OG, those two positions. There's that road that sits in like a river, splits the circle. Loops finding Wolves, last player there. That puts Loops back into 11th. They do take a knock though. I think that's from Alter Ego chiming in. And D Plus takes down a lot from GS. So just as the door opens, it's suddenly closed by one of the best teams in the lobby, D Plus. In the artists of these western roads. Yeah, I mean, doing very well. Doing so much work, but they do have to leave for D+. Their road forwards is going to be fraught with danger, I'm sure. The Falcons are a little bit ahead of them, but they've lost a player before as well. Papra Supermassive, they still got there too, and they found themselves a ditch. Will they be able to survive this one? You've got to wonder. Luke's taking damage. I mean, they kept GS out by just a breadth of a hair. If they go down here to Alter Ego, I mean, OG would love that. That would be brilliant news. To be able to find that opening. Maybe even Tianba in their central position. Really question where this next circle goes, because if it heads over towards the western side, suddenly that hilltop becomes extremely important to a lot of teams. It's pretty awkward over towards the eastern side anyway. Although Tiamba looks like they've got a okay spot to play around with. Getting assaulted on that location of the map is going to come through thick and fast because a lot of people will want that location. So anytime there's a third party up there, Tiamba better be ready to rebuff any other teams coming their way. But it's a slow game other than that right now. Reject still holding on to 4 players, playing just under the foot of the mountain on the southeast side. And it is this next shift which will determine how the rest of the game plays out. I mean, unless it goes dead center, that would be the worst circle. I feel like a north shift. I mean, that is kind of the worst case scenario. It could be a little bit further northeast and be a little bit worse. But for a lot of teams, look at the ring of teams that is now out of zone. You've got GS, or the remnants of them, DK, you've got 9Z, you've got Gen G, APG, Team Secret, all now needing to push forwards from that south side. And they have to pick one of west or east. It is so nasty out there. Yeah, it's that easy. I mean, for Alter Ego, they actually get a blessing here. We've been moving over towards that north side. Cuts a lot of their position in. There is a small location over towards the north side of them with buildings that they can play from. But I think right now they're more concerned at clearing out teams trying to get in from that western side. So that includes GS as well as D+. Papra Supermassive, hats off to them. They have had such a tough game. Yeah. Looking like Thelma and Louise right now in that car. Actually able to get the repair on it. Okay, fair enough. One of the newer additions to PUBG Mobile, and that might play quite well for them. I mean, it's one vehicle, you know. This baby can pack a lot of Papra Supermassive players and lives to tell the tale. I think that is feeling more like a trusty friend. A vehicle now. Gonna go with them to the very end, and they'll be sad to see it blow up in flames. Which is very likely to do. I thought Jafar might get the drop on Alva, but the wits were about him. Probably more preoccupied down towards D+ though. Actually,
This does mean that Jafar could potentially just run in underneath them, under the cover of both of these two teams holding front against one another. Stepping too far forwards, I don't think you can. Yeah, he's going to be able to make this dash because neither team's going to drop down and crash the other one just yet. It's probably going to be more onto loops. And I mean, what a way to test your bubble skills right now than have players crash up on you. Falcons going to feel the brunt of it. Already a knock center. We know that when D plus spell blood in the water, they head on in, but Narvalo's here to play. And he gets the first on the Norbu. And Narvalo with 2 now as well. Will look for the flush. Fabian now under pressure with a nade from Redox, and Falcons just pretending to be wounded. But no, they're ready for the fight. I love the push from D+, but yeah, I think that it was a very aggressive play, and they have been disrespecting the lobby all over the place today. Finally, Narvalo steps up with a DBS. Great double from him. Gen G, though, looked to take position off the back of this one. The fight was very quick, though, going through for the Falcons, so they got a nice reset on this, and it is a 3v3. Sadly, Narvalo's down. It's down to Koa and Ralph on the top side, but Koa whiffs the initial DBS. pmgc, sorry. And Redox is out of ammo. Oh, no. It's just nothing they could do. One hold was enough. That was all they could manage. And with 4 elims, the Falcons draw short of the mark. That means that very likely they are going to be looking in towards the last chance stage at 31 points behind the bubble, with it potential to move as well. It's just not going to happen for the Falcons. Not today, unfortunately. We'll see how far they can get to secure themselves into that last chance, but they're doing all right. Again, this circle split down the middle by this road valley. Tiamba and actually Papa Supermassive. Well, okay, maybe not Papa. You've cursed them there. You've absolutely cursed them there. Okay. Yeah, that was really mean of you, and you should be ashamed. How do you say sorry in Turkish? I don't know. Couldn't tell you. Team Secret. Currently on the top side, looking down towards inner circle, immediately getting shot as they step up. D+ still being a problem, and they take down Rosemary. The solo left remaining in chips. Oh, it's terrible news for Alter Ego. That is painful. That is really, really painful. It's good news for Loops, though. Another player taken out from their flanks. Chips is going to do a lot of work to maybe keep them safe. Gen G able to run him down, but gives Loops a little bit of time whilst Claus is healing to deal with Alter Ego on the north side. They can re-establish. They do have to move, though. This zone is putting a lot of pressure on. APG still alive, by the way. They've been marching in slowly from the southeast side, from their high ground, and marching as they go, taking these shots out, taking these fights. Doc, he knows there's players up top. He's not too worried. That ridgeline, really difficult to descend towards APG. They're all going to line up on it. I think OG's been spotted by Alter Ego on the top side. Loops versus Gen G now, though. A very important fight. Ooh, absolutely. For Loops, especially. There is a knock already over towards Ratto Boy, and Alter Ego are starting to come down the hill as well. Are they going to crash in, or are they going to try and bookend this fight? The knock, the flush comes through onto Ratto Boy, and now Alter Ego are within nade range. Gen G taking a lot of damage as Team Secret are swept aside. Tiamba still have a player going as well, but their run is going to be over soon. Gen G tried to get out of here. They spotted Alter Ego over the hill, and they didn't want to get embroiled, but Reject are crunching in as well. Oh, Gen G have nowhere to go. Not a hope. Not a chance, and they'll fall down in the open hillsides here. I mean, Luke's getting a lot of value off the back of this, though. Tiamba held versus Team Secret. Did really well. Currently, just a solo player left remaining. But for all these teams down towards the bottom, they are hoping that Alter Ego can live up to their name and take down Loops. In the smoke. Alva biding his time, steps up, but Moana's down in the back lines. No trade, and Alva's going down next. Loops holding on for dear life in 11th place, and they want more than that. They're going to move in with 3 now blank from the high ground. Reject not quite in position to take them down. Look at the chase. It is on. They are actually up into 10th place now. And with Tiamba chasing, in 11th place is 90 points. I mean, they've got 4 players alive. It's maybe a little bit out of reach for now, but
How close can they get for the last? We'll see what they can do. And not only that, in a circle, down on that roadside too, dead center. मैं क्या बोला मेरा जोन देखो Looking to push over, and the circle moves over towards them. For Tiamba, they need to deal with Alpha Gaming. It will be one of the biggest tests of their tournament so far. Considering the fact that Tiamba's been barely into any of these endgames, just a step up now in these final hours of Groove Green is somewhat surprising. But yeah, 9Z is now the target in 11th place. Loops see themselves a little bit safer going forward. But Tiamba, it's not the craziest of points that they need at this point in time. I think they need 7 more elims and the chicken dinner to break even, which is doable. It's definitely doable from this spot. I think that the issue comes is that Alpha Gaming is also in these ending circles, and that is not a team to be trifling with. They are in these circles, sure. They are getting shot at by Loops. OG get run down by Reject. And Tiamba aren't the only team chasing, remember. It could be a really, really close battle going into our last match blank as to who's going to take that 11th place spot. But for the 3rd place bubble, if Inner Circle don't get a big game here, get close to 133, we're pretty much locked in. But they might be on for a big game. If they can hold this side of the road, they can hold their position. But with APG above them, that's so difficult. Yeah, basically, Inner Circle have to win here. Joel knows exactly where the players are. Drops a Molotov down. The util's pretty lacking on the side of APG, but when has that really mattered? These guys are gun skill gods in the lobby. Tiamba, though, took this moment to move over the top. The nades are feeling pretty lackluster, though. Not quite hitting on target. They have the high ground, but they've got to find these shots if they want to move further through this tournament. Loops crossed away. Reject just behind that little ridge. And मैं खाना खाने मैं पानी पीने को क्या मार दिया भाई they are in these circles, sure. So I think, and that is not a team to be trifling with. They are in these circles, sure. The lobby. Lackluster, though. Not quite hitting on target. They have the high. 4 points between them and Papa Supermassive. Blank, I think they've already jumped up to potentially being completely safe here. Well, after being on the precipice of getting eliminated, down in 11th place, this is what the game that they needed. For IC, though, the Reject, it is so important for them as well. Yeah, for Tiamba, they're done. Couldn't quite make that push down the hillside, and we're a little bit too afraid to take the fight over towards APG. Top gets knocked, and time is dwindling away. They will be able to pick him back up again, so be able to get that heal through. It's the exit from this hillside that's going to be tough for Alpha Gaming as they move down the hillside. Reject, although their position is extremely uncomfortable, very claustrophobic, it's not that bad. It really is not that bad in this game. Way down this hillside. That's the team they desperately need to take out.
Good shots though from Reefus over towards inner circle straight away. Doc also finding one over towards Neil's side, and this is a commanding presence to be felt inside the lobby. And they're just letting this vehicle roll. All right, I mean, use it as that moving blockade. Yol still behind it. Nobody stopped the tires just yet. But Reiji slides one under, and that is going to be Yol going down. Loops are starting to fall as well. Reject in with a chance here, but Reefus makes it all the harder, and APG still got 4 players alive. Flank Loops are stepping up now. With APG taken off that hilltop, they could go for it, but no, they still have to play broadside. They will be taken down. A rechecked guarantee a second place locked in. Reiji needed to get back up here, but remember, there's no nades. Hang on a minute, they found one. That's from the crate. Over on towards IC. Top launches it forwards. Is it going to connect? It looks good, and it's going to get both of them. They pick up the spoils of war, and APG, they are spoiling plenty of days with that chicken dinner. Yeah, and I think now it's definitely the bragging rights should be in the Alpha Gaming camp over in first place. It's been a wonderful set of 3 days. A little bit of a scary one on day one. Sorry, a little bit of a scary one come day two, but day one was just incredible. And they've just kept things fairly consistent from there. Miramar, they do extremely well on, but for Reject, second place, couple of points. Still need to do a lot more in this final game, but I do believe now the top 3 should be fairly secure. I mean, it's 133, I believe, for the third place bubble, and just behind them, within arm's reach, is IC. Maybe it's a 2-horse race. Maybe things could change. There's only one way to find out. कॉपीराइट दिला के मारेंगे इन लोग भाई मेरे को। यही का भी यहाँ पे गेम भाई, यहाँ पे तो भाई इसने जेंजी और इसने दोनों ने मिलकर गेम खराब किया टीम सीक्रेट ने भाई, पहले ही नॉक उतार के।
I love to see what teams can do when they're relaxed, right? Because the moment they aren't really feeling much pressure or any pressure whatsoever, right? Top of the leaderboard, well away from the rest of the other teams, they were big chilling. They were just like, hey, we could do this. Let's be smart with it. Let's have fun. Let's take advantage of these teams. And that's exactly what they did. It's a real masterclass coming in for them in terms of those rotations, in terms of those splits. This final one in particular, I really loved, you know, Zeal going on the off angle there. But this is what a relaxed team play can get you. 22 points on the board, 12 eliminations. I mean, it's 22 points they don't need, and crucially, it's 22 points that have now been taken away from the rest of the lobby from those teams that really did need those points. Yeah, because Reject put themselves in a position, actually, Hodrix, where they could escape the bottom 5 finally. They almost did it at the start of the day. They kind of slowed down in the middle, but this 13-point game, does it keep the hope alive for Japan to have one team, just one, maybe go into last chance, maybe make it to the grand finals? Because again, if they don't make it, Japan, they're fully out of this year's global championship. I'm gonna keep it real, right? I'm gonna keep it real here. You know, I've seen too many final games of tournaments, right, to have faith. We see it time and time again where that last game is so crazy. It's so difficult to even get 3 points, let alone more than that. So it's really up to them here and now to flip the script entirely. If they're able to pull it out here, Max, it will be historic in my eyes. I will explode in excitement. I'm sure Sarah would be so happy to make it happen, but we just got to see the leaderboards. Sure, we got to see how many points. If it's double digits, it's going to be tough. If it's single digits away, there's a chance. Maybe it could be happening for them. There we go. Oh, yeah. Oh boy. Oh, that's a lot. That's a lot. Let's see right now. Okay, for Reject, yeah, 9-0. So by the way, loops. Once they got that position, I was like, if they don't put up some serious points right here, they're throwing completely. So they did that. They got it done. They're no longer the place team. That is now to 9Z, right? GS, 5 points away. It can happen. OG, 6 points. Actually, no, wait, no, that's way more than that. 11. Oh, that's 11. Yeah, 11. And then you got Reject with 12. I think there's too many factors, like I said, going on for it to happen. But is it mathematically possible? Yeah. Yeah. But realistically, improbable, right? That's correct. That's the situation we're in. Yeah, I mean, realistically improbable, but if we look at the wins that we've seen from a lot of these teams so far, it eclipses 12 points by quite a bit. So it is very much possible. It's just, I think that 9Z would have to go out early and GS would have to go early just to make that really a feasible thing. Because for both of these teams, that we've just not seen the presence from either of them as of yet to really dominate both the two teams ahead of them and the rest of the lobby to get the win. So, question now, top 3, is it done? Is GOAT remaining in top 3 until the end? What are we thinking, guys? I think that with that point lead, it seems pretty locked in unless a massive hot drop happens, but I don't see it happening. It's over. In my opinion, it's all over. It's again one of those things, right, where we have to see something magical at this point, and it's gonna be hard. The reason why, just to back up that data, right, besides what we saw in the gauntlet with 20 players left in zone 5, right, which could definitely happen here, APG just got tons of points, and they're just destroying dreams at this point, because every single one of those points, so many other teams desperately need it. And then on top of that, can we just talk about that push from D+ onto Wolves? It was disgusting, right? Oh my gosh, one knock, the rest of the team was on them, and the Wolves didn't stand a chance. So when you got the top squads going like that, and so many squads at the bottom that know they ain't got no chance, it's just so difficult to put up double-digit points, let alone just a few, Neptura. Exactly, especially with what we've been talking about, right? The last game of any sort of stage is the one that's the most chaotic. It's the one that has the most unpredictability in it, right? So for a team that has already been struggling when teams are playing normally, for them to expect them to then go all out in a chaotic game is going to be really, really difficult. The only thing I could think of is that they might just take that chaos and run with it, because that's kind of the only thing left to them to be able to take advantage of. But otherwise, it's really going to be difficult in this final match. Hot drops, man. I know we say it every time and it never happens. Maybe this will be the one to make it happen. Jamba, Reject, Orangutan, GS. Maybe if you're looking for a cheeky little 9Z, you know, just saying, that will be a juicy one for the history books, or even towards the top. I mean, if you want, genuinely, if you want to eliminate
GOAT team, you need to fight them early. You know where they dropped. They went Hacienda. I don't think they're going to change that up realistically, Hodge, because I think that they went for Hacienda despite Miramar, the previous Miramar, still being really tense for these teams. I think they're going to go back there if the plane is not too bad. That's a target. You can go, and Hacienda, we know on Miramar is like the hot drop location that teams love to go for in competitive. If there's any place to make it happen, it would be on this game in Hacienda. I mean, we know it's not going to happen, but damn, do we want it to, right? I mean, it's just like every part of our analytical brain, right? I mean, to be us, it's common sense. Why not, right? If you don't make it here and now, right? It's going to be so stressful, right? So why take the risk? What do you got to lose at this point, right? If I'm not mistaken, if I'm not mistaken, sorry, I'm jumping in. Didn't you have a chat with Sara at PMWC last year, Hot Jukes, and he regretted not going for the hot drop on Alpha 7, right, on Miramar? That's right. That's right. Yeah. So in the last, so the year before at PMWC, I was saying Reject need to hot drop Alpha 7. They gotta do it. They didn't, and they did not win because of that. It actually punished them big time. They lost serious money. And I talked to Sara after that tournament, and I was like, bro, how could you not hot drop? And he was like, dude, I mean, we just thought that we were just going to leave it to play and just play how we've been playing. And he looked at me with tears in his eyes, and he told me, I will never do that again, ever. Next time, I'm hot dropping, you know? And honestly, this is it. Sara, make it happen, brother, right? I mean, there could not be a... इधर है भाई, मेरे को तो दिखाने बैगन। जब आएंगे तो मैं आता हूँ स्ट्रीम पर, डोंट वरी। मेरा तो ये जीसी का वॉच पार्टी का परमिशन सब मिला है तो इसलिए। Hope so. Last match. Chalo, let's go, guys. Hope for the best. May the best team qualify. अब मैं इसमें कुछ बोलने It is here and now. The teams need to make their stand, to make their mark. अरे पापा आराम से खाऊंगा मैं, अभी खाया तो कैसा खाऊंगा? खाना ही नहीं जाएगा अंदर। Grand finals. कैसे है रे मेरा There are पापा? a few things up for grabs. There are a few things in the light now, and we need to conclude our tournament here for Group Green. Storage box नहीं है मेरा, पेट है भाई। That bubble at the bottom looks very, very dangerous. The top a little bit less so, but still qualify. could change at the drop of a hat. We'll just have to wait and see as our teams drop in for the last time. GOAT realizes it though. They drop very differently down towards Minas del Sur here. I think they're expecting a hot drop, which is fair enough, all things considered. I think the teams likely were looking for that, and the team in particular would be in a circle. They don't really have anything to lose. They're the only team that can catch up at this point in time. So don't want to risk it. Right? As long as they get 5 or 6 points and then just basically hope the inner circle don't get a 22, 23 point game, they're fine. They really are chilling. So I think for GOAT, they just need to play it slow. The fact that D+ are down here, though, is a little bit odd. That is a shift and a half as well towards the north side of the map.
मेरा Ooh, that's tasty. Up onto the north side. Hey, it's Tianba. अरे सॉरी, म्यूट कर दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। आ गया। अरे मतलब मेरा 1 महीने से नाइट शिफ्ट चल रहा है, तो मेरा शेड्यूल की पूरी वाट लगी पड़ी है। मतलब कैसा है कि ना, अभी और एक महीना नाइट शिफ्ट है मेरा। अभी मतलब मैं सुबह आज 10 बजे सोया है, डार्क सर्कल आ गए मेरे को पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ भाई। मैं एक जॉब स्विच के पीछे लगाऊँ, मैं इसका मतलब मतलब बोलते हैं ना प्रिपरेशन में लगाऊँ। मतलब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। मतलब अभी बस सैटरडे संडे था, उसमें भी देखो मैं अभी आया, मतलब कभी ऑन किया मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटा मतलब स्टार्टिंग के 2 मैच हटा दो, 3 मैच हटा दो, क्योंकि 3 के एकदम एंड में आया था मैं। बस अभी आया। मेरे को पता ही नहीं क्या चल रहा है लाइफ में भाई। मैं उठता कभी हूँ, सोता कभी हूँ, मेरे को वो भी नहीं समझ में आ रहा है। ऑफिस अभी सपोज करो आज संडे नहीं होता, मंडे ट्यूसडे होता, तो तुम सोच रहे हो मैं क्या होता था? अभी मैं ऑफिस में रहता, सुबह 5 बजे आता मैं घर पे। मेरे को 8 बजे से नींद पहले नहीं आता था, मैं 8 बजे तक जागता हूँ। फिर मैं नहा धो के सो जाता हूँ, उठता हूँ 2 बजे, फिर से स्नान लेता हूँ और फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे पास टाइम किधर? मैं फ़ोन भी बहुत बैरली यूज़ कर पाता हूँ। अब मैं किसको बोल बता नहीं सकता ये चीज़, क्या बोलूँ मैं? मतलब बहुत हैट्रिक चल रहा है भाई। मेरे को जॉब स्विच करना है करके मैं थोड़ा अपना लगा पड़ा हूँ कि भाई थोड़ा कर लूँ कैसे तो। क्या मतलब? पहले भी नाइट शिफ्ट चलती थी? नहीं नहीं, पहले, अरे पहले चलती थी बट 2 वीक ना। अरे मतलब तुम समझे बोलने का मतलब? पहले 2 वीक चलता था, मतलब मैं 2 हफ्ता करता था, तो 2 हफ्ता मॉर्निंग आता था। मेरे को मॉर्निंग ही नहीं आ रहा है। दिवाली से लेकर अब तक मैं नाइट ही शिफ्ट कर रहा हूँ। बस 1 वीक का मॉर्निंग मिला था, 1 हफ्ते का। और उसमें मैं स्ट्रीम पे आया था क्योंकि उधर 2 टाइम स्ट्रीम हुई थी और दोनों टाइम मैं आया हूँ। एक एक ऐसा शॉर्ट स्ट्रीम चल रही थी, और एक बीजीएमआई कस्टम रूम्स करने के जस्ट पहले मैं आया हूँ भाई। मेरे को सच में टाइम नहीं मिल रहा है। मैं फुल आने का ट्राई करता हूँ भाई, और जब मैं आता हूँ मैं पूरा ही आता हूँ। लास्ट टाइम भाई उधर चैट भी क्या पता भाई रीड नहीं हो रहा था, फिर मेरे को लगा कि भाई क्या पता बुरा बुरा लग गया किसी को तो, और कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा था उधर। पता नहीं कुछ इशू था। पहले रोटेशन था, अब काइंड ऑफ परमानेंट चल रहा है। हाँ पहले रोटेशनल चल रहा था, अभी काइंड ऑफ पूरा। अभी मेरे को एक, अभी देखो मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को जस्ट फोन आया, मेरे को लगा मेरा वर्क फ्रॉम है। फिर से मैं वर्क फ्रॉम कर रहा था, मैंने तुमको शायद से ये भी भेजा, स्नैप भी भेजा। अब देखो क्या बोल रहा है कि ऑफिस आ गल। अब मैं क्या बोलूँ? मैं बस क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। एक ऑफिस जाना मेरे लिए एक सरदर्द है भाई, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। 4 घंटे का ट्रैवलिंग भाई ऑलमोस्ट, क्योंकि वो कैसे बस है, अपना कैब नहीं है कि भाई 4 लोग को बिठा दिया तो फटफट बजे। नहीं भाई, 4 लोग, बस आता है, वो बस सबको रुका रुका के जाता है भाई। वो 4 घंटा, 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, भाई उधर ही वाट लग गया पूरा बॉडी का। क्या ही करूंगा बताओ? जो मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकलता है उसमें भाई कभी कोई फ्री नहीं होता है। और मैं अपना काम कर रहा होता हूँ किधर ना किधर। एक और जगह जहाँ पे मैं जिसको साइड में काम देता था, उधर उन लोग गलत काम कर रहे हैं भाई। उसमें क्या होता है कि बाद में नाम खराब होता है कि काम दे तो रहा हूँ किसी को लेकिन कर नहीं रहे, तो फिर उधर जाके देखना पड़ रहा है कि भाई काम सही से हो रहा है क्या। कोई बात नहीं करता या मैसेज रीड नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बात नहीं करता, मैसेज रीड नहीं करता? सबको ईगो
नहीं नहीं नहीं, अरे बात नहीं करता मतलब भाई मैं आया था, मैं सामने से बात कर रहा था, मैं अर्शिका नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबका ही बोल रहा हूँ, मैं सबसे याद किया था, इन्फी भी नहीं था उस टाइम तो। वो तुम लोग को लग रहा है, तुम लोग गलत सोच रहे हैं भाई, वैसा कुछ नहीं, मेरा कुछ किसी का कुछ झगड़ा बिगड़ा नहीं है भाई, ना मेरे साथ किसी का साथ कुछ हुआ है, बस मैं एक जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि लिए किसी को पता ही नहीं है कि मैं हूँ किधर आजकल, बस इधर दिखता हूँ ना लाइव स्ट्रीम पे, इसके अलावा दिख किधर हूँ मैं, तुम लोग को समझेगा नहीं। इन्फी गायब है, पता नहीं क्या हुआ उसको, अरे उसके भाई की शादी है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी इन्फी बीच में गायब हो गया क्योंकि वो पूरा टाइम रहता था, अब वो 2 दिन 3 दिन नहीं दिख रहा है तो तुम लोग को लगा ना वो गायब हो गया, बाबू उसका भाई की शादी है, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ही मेरे वर्क की वजह से गायब हुआ, और मैं किसको समझा नहीं पा रहा हूँ कि भाई मेरा सर दर्द हो गया मेरे को ऑफिस से, मैं किसको कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, इवन मेरे घर वाला परेशान है उस चीज़ से, मैं क्या ही बोलूँ, अभी यही तो क्वालिफाई हो गई है तो उन लोग तो रश करेगी, मैं तो नहीं समझा, मैं तो नहीं समझा। अच्छा चल रहे भाई, मस्ती कर रहा है तू भी यार, क्या मत कर वैसा, कुछ नहीं हुआ है रे, मतलब बस इतना इतना बता सकता हूँ कि बहुत बहुत हेक्टिक चल रहा है भाई, मेरा लाइफ बहुत हेक्टिक, इतना हेक्टिक किसके भी लाइफ में ना हो भाई, मैं तो चाहूंगा भाई कभी ना हो। हाँ रुको, बढ़ा रहा हूँ, साउंड ला रहा हूँ। Yeah, there's been some weird plays from Alter Ego towards the end of this. Honestly, again, that sort of felt like we're going to last chance. That's it. We're going to last chance, mate. Type of fight there. We head over towards credit fields. Nice bit of high ground to play around with. Wolves can play in there as well, but Tiamba in that position. Where's OG? Where is OG? I don't know. Blue zone somewhere. Lost track of the very close to getting knocked as well. Yeah, I think that might be coming through. That's hopefully being healed up. Yeah, okay. They've got some meds, so getting top back up. But yeah, that's a long way from the circle. We'll see when they appear. I mean, they started over on the south side, down towards Impala and Truck Stop. Yeah, so I guess they're just looting for ages. Yeah, now they're getting to the zone now. That's a long journey. Very, very long journey to take. Reject coming through, taking a pretty swift rotation on the southeast side of things. This is around Loops, who, in those final moments, yep, they're able to make it happen, get into last chance. Reject don't really want to take shots at them too early here. For Reject, they are 12 points behind 9Z, who are coming in from the south side, and it's quite a safe path for 9Z as well. A lot of areas that they can deny sightlines from and stay undercover, under wraps as they move into this circle. Most of the most prominent positions are already taken towards the center here. So 9Z can play a very secretive game going forwards. Unfortunately, though, they're close to D+, which is going to make things a lot harder when they inevitably clash with them. The hills in the middle of this zone are really dominant in terms of sidelines flank, and that's where Wolves sit right now. I think if I'm any team that's surrounded them, I'm worried about it. The access from the north side is the easiest approach, and that's where Igor is going to be starting out. Reject. Ooh, they've been spotted. They've taken a knock here. An APG, they just won't leave them alone. This is playground bully levels. It's hard to get Sarah back up as well. I would 100% say Sarah is probably the best player on that squad. Him going down here is a massive nail in the coffin. Or Reject, if they can't get him back into the fight, I don't think they're going to try for it. They have to just basically ask him to crawl into cover, and maybe then they can grab him. But even so, APG is going to be ready to pick him up quite quickly, and Ziol does exactly that. And with that, I would say the chances for Reject are becoming very, very slim. OG finally makes their way into the circle through water treatment.
क्वालिफाई कर जा team भाई that desperately needs a से हो जा large भाई game now to और get into थोड़ा टाइम last देखने मिलेगा chance इंडियन टीम को भाई or खेलने का risk भाई अच्छा खासा प्रैक्टिस हो getting जाएगा भाई taken out of the tournament here and now in the bottom कि मतलब 5. नेक्स्ट टाइम इनको चांस वापस मिले तो भाई इन लोग Well, that circle certainly helps. They need 11 points to catch up to 9ZG, but that assumes that 9ZG don't get any points this match, Blank. We'll see if D Plus can ruin their day. Help out OG just about skin through. GS, though, still another roadblock in the way. That's what we were talking about before, right? There's so many moving parts down at the lower end of these tables that you can't just go for one team and target them and take them out the running and hope that you can catch up after that. Because there's about 4 teams really chasing for 9ZG's spot, and then a 5th team if you include 9ZG as well, it's definitely not something that you can just allow to happen. Losing a player like this, other teams get a massive benefit for it. It's a nice spot for Reject. It's a shame they're not here with 4 players. Tiamba in a very similar location off towards their north side. Tiamba and Reject, you know, clasping hands right now. Bottom of the tables, just trying to make it happen. Ralph takes the knock there. That is from Papra Supermassive. From B able to find that one. Dropping Falcons now down to just 2. Putting Papra Supermassive up on 99. Anywhere over 100 is where we were saying that safety zone is, right? In terms of getting to that last shot stage guaranteed. And I think they're going to be able to do a little bit more than that if Team Secret continue to allocate points to their tally. And crucially, not to the teams around the bubbles. Is a little bit lackluster for our teams on the bubble so far. But it is Miramar. This generally moves to the late game. Papa Supermassive want that century. They will claim it with Xerus as that final triple-digit maker. Go thread the needle, by the way. Pretty good rotate. They just get to the south side of Papra Supermassive and Team Secret at the moment in a fairly decent position as well. They find a shot over towards Wolves. And I think that it's going to be hard to assault that position. I feel like because GOAT was able to grab that spot with near to no casualties, basically no utility required to get into that position as well, their inner circle's life now becomes really hard. To catch up to them whilst they're sat here, it's very difficult. I think that GOAT's going to remain in the circle for quite a while as well off the back of that. It's not looking promising for inner circle. We'll see what this next stage brings, though. The circle will show itself in about 10 seconds now, Blank. And a lot of teams on that north side, so potential that they want to use that as an approach route. You see D Plus went for a wide wrap around that east edge, Blank. And on that north side, they're pushing now in towards Gen G with OG poking their noses in. And you're right, I think this might be GOAT having a real solid time. And if Falcons give them 2 points, that's going to make Inner Circle's life so much harder as well. Now Valo goes very, very low, does go down. Redox now finds one, turns it over now to Killer Joe, who is in this building, looks for the pump action, and he's good for it. Uh-oh, GOAT lose a player. They haven't been able to find an Elim just yet. Now Valo's still alive. Is there a third party? The Wolves chime on in. Navalo's still bleeding out. The point's still not allocated. A lot of damage done by Redox. And the threading needles come on through from the off angles. Steps back, goes for the first aid. Goat looking like there's some trouble about it. The Wolves come on in. Maybe they'll steal this point against the Falcons. Look for that Elim. Look for that flush. The spray down around the corner. And they might just give that point over. But I think Goat might be on the ropes. I think GOAT is absolutely on the ropes here. They might not even get that point over towards the Falcons either. It will be picked up there. GOAT do not get a single point. 0 total. Inner Circle, someone just answered their prayers, and that someone was the Wolves. Plenty of prayers going out right now, and not least of which, going towards the goodwill of OG. We do manage to get back across with his god. The transition's there for a tanky. I mean, getting across even with the re-knock is a solid option. D plus right on the other side of this compound. Nades are going to start to come in fairly soon. GOAT not done and dusted just yet. 2 points here. Might be all they need to stay safe. The nade, though, is big. And Wolves want even more. Igor around the outside with the bouncer. Gets the knock. It's all up to Twix for GOAT to keep them alive. But this will be the second game in a row that they go down. They only got 1 point in that last Miramar. This time around, it could be a big fat 0. And it could spell
their drop भाई गोट ऐसा from the top मिस्टेक नहीं कर 3. सकते भाई लास्ट जोन में But it all relies on IC, what they can do. लास्ट मैच में लास्ट जोन Twix, क्या बोल रहा हूँ भाई what have you got? Go is certainly teasing in a circle. We'll put it that वो way. शांति बैठेगा मेरे हिसाब से कुछ जाएगा नहीं फाइट लेने वो Giving them a chance 2 times in a row. We're in a circle. Absolutely just have to feel the pressure off them right now. Just play their game. And it is going to require a pretty big one, but that is the 0-pointer there from GOAT, setting the boundary at 133 in a circle with 4 players. It has been a while since we've seen a big inner circle game. We know they have the chops on them to do it. They do have that chance. A 9 Elim chicken dinner would be what they need to draw level. I don't know who wins the tiebreaker right now. But we'll have to get that info fed over to you as soon as possible. APG going down to, well, one of their players going down towards Papra Supermassive, who are still racking up the points tallies. They're on 101 now. Trying to school the rest of them, but it wasn't too long ago that they were in with an outside chance of getting into those top 3. Not to be this time. Crash for APG. Up towards OG. OG. This is with the sad. Getting pincered by the 2 top teams in the lobby is so rough. Huge. Needs to finish that flash and gets away with it as well. WizGod backs up. The healing can come through, so no opening casualties, but that nade does connect. And it moves over towards the northeast side on this circle. Blank, I'm thinking IC are having a real tough time here. And it is really up to them to change that 3rd place spot. In the meantime, though, we're back on board with OG. Atanki's bleeding out. Aru is down. And D+, they're holding. They're not pushing out on this one. Yeah, it feels cruel. It does feel cruel. I mean, D+ knows they don't have to move out on this one. Good shots from Tiamba, though. We'll find one from Loops. The players get into the building. Top's furious with D+. Like, why won't you join the fight? Sends a big nade over towards him. Wakes them up out of their reverie. The stupor shaken from their eyelids. As Loops are burning away. That is a flush coming on through. You need that first aid to come off very, very quickly. Last player for Loops. They've done enough, though, today to stay in for the last chance guaranteed. And, I mean, that's as good as they could have hoped, really. I think for Loops, it's better than certainly where they were earlier in today on that 11th place position. They're up in 9th. They're over 100 points. They're feeling pretty chill with it. ZG just playing things out slower and makes sense as well. Good day from AKOP over towards D+. They're holding their own in one of the most difficult fights they have ever been in. Well, the assistance of APG, big knocks galore, but no elims for OG. That point went over to the nade from top. Doc now moving across the open ground. They have to shimmy out of this compound, and D+ have the good side. Nade still trying to catch them, and there's the point that they were looking for. Claim that one back. AKOP leading the charge, but Osal's on the deck. Can he find the shot? Stands up, but no, Osal goes down, and they move through fast. Doc low as well, and AKOP gets that flush going through. A nice pick up there, and they will find it again. D+ now gone. It's 4 elims found for OG. They want to keep this one going, and it's APG to try and stop them. Bouncer off the wall, looking for the nade to connect, and they still need to get out of here. APG down on 2, and it's 2 of the strongest teams in the lobby coming up against OG, and found wanting. This is India fighting for their lives here, for their tournament lives, versus 2 of the most insanely strong squads in their lobby. Not holding their own right now. It's impressive. It's definitely impressive. It's a market improvement, but it comes right at the end of the day. They've got a little further to go here with 9ZG getting 2 points. It only makes things worse. Rejects. They are done and dusted. Unfortunately for them, they just came in at the wrong time. A little resurgence, but it was not to be. 9ZG hold reject. They get 4 points for it. Back on board with OG, getting the name onto Doc. A little taste of his own medicine. And Top now, the last to stand in a 1 versus 3. Can he play on the inside? Can he play this boundary hard enough? He steps in, the DBS does so much, and OG take them down. Blank, they have 6 elims, but with 9ZG getting 4, they're moving further and further off into the horizon. It's still necessary for OG to go further.
no matter what happens in the 6th game of the day, at least India puts to bed all the rumors right there about the firepower not quite being up to scratch versus the 2 top teams in the lobby that are able to come out victorious with 3 players on board. I genuinely think this has been a great learning experience for them, and I can only imagine that when they play in their regional tournaments, it's going to be very scary for some of the other teams after they come back from this boot camp. But let's see if they can make it into last chance now. Like you said, the target is still moving. It was 10 points. It's still now 9. And not only that, the team that is likely to take down 9ZG, or most likely rather, is GS. And if they get the points, then they're just closer to that 11th point boundary as well. And it is a real domino chain that needs to fall for OG to make this one. Crashing through Papa Supermassive might be the way to do it. If they're preoccupied with Team Secret, maybe they can extract value. And getting over here and getting the third party on it, I don't think this is a terrible idea for OG. They do need the points. I think for OG, they have to start sweeping now and get a little aggressive with it. I mean, they are looking very good in this match so far. Nico takes shots down towards Dora. I think that's an aggressive push out from him. But I think that Wolves realize they need to leave from this compound at some point. Inner Circle's been far too quiet this game. Absolutely far too quiet. I think that they're worried about giving away those points. They're worried about going down early. But they still need a strong position in the circle. I can forgive being quiet as long as you've got a strong smoke. 2 players already down. It's done. It is done. It's all done and dusted. No third place change around for them. Icy could not make the transition from that high ground. Golds lock in third place unless the Wolves pull off a miracle here. It would be a 102 towards the top to jump up. It would be, what is that, like a 31-point jump? I don't think so. As 3 players, they're right on the outside. In the meantime, though, OG trying to move around this fight. Wiscott moving in position. Maybe they're going to get a third party here. They do have cover off from this low ground engagement as Tianba still haven't got rid of Ratto Boy. This is an unbelievable battle for last chance, by the way. We have 9th downwards still in, barring reject in 15th place. It is unbelievable what we're looking at right now. OG still hasn't jumped in on this fight. I feel like they could have come in a little bit sooner, mopped up some of these elims that they desperately do need. The Wolves down on their last leg. Out. 1 player now alive for the Wolves, looking to get those reses. Doran crawling forwards. OG more preoccupied with getting closer to the zone, but as teams start to fall, the placements add up. And those gap closing potential positions eke away from them. It is getting really late in the day now as GS move up to clash. They're third partying with 3-player flex out. Just take shots. They find one. I feel like OG should have made this push over to the west side a little bit sooner. They're looking for center right now, looking for those placement points to see them ahead. But what they don't know is that 9Z is currently on a 4 side on the east, but Ratto Boy currently dealing with Tiamba. Needs to close this out. They can still get the reses. On the corner, bouncing the smoke. Ratto Boy still not in the sightlines. Has another nade. He's moving around. They've got the players stepping up to deal with it, but they haven't connected just yet. In with a shotgun. Now for another chance. The reses can come through. In the meantime, Team Secret taking down the walls on this north side of the circle. Ratto Boy still scrabbling around. There's a big nade on the airburst, and he's able to get a flush. Another nade cooking. And they're not stepping forwards. They're not moving in. They're waiting for these reses, and immediately he steps out and re-knocks them. It's still only 2 players for him to deal with. He's charging. Ratto Boy scurries on in around the outskirts of Tianba's compound, and finally they're able to snap the trap. And it is loops going down, but that is not what you want to see. I mean, to be fair for Tiamba, I wasn't expecting great things today, but they made me hope with the position that they had, something could happen. But the teams now challenging for 11th place are getting fewer and further between. Just push the guys too, man. Come on. I know you want to confirm, but it's 1 player. You just play from both angles. He's got no smokes to work with. I think they're absolutely terrified here. And again, I would be as well. The adrenaline must be pumping for that squad, and the nerves must be an all-time high. OG suffering 86 points.
9Z starting to earn those placement points too, makes this all the harder now. GS with a player inside the building, and 9Z continuing to try and put up more points going forward. Tiamba not quite making the flex out yet. They will be out to open zone. It's hard, it's tough, it's scary. And there's the backstop for GS getting taken down. AKOP goes down to an aid from Wolves as well. As that bleed out comes through. And another point added to the tally for 9ZG. For OG, it's all up to Aru for Orangutan. They need him to come up trumps, but Tiamba are making a move as well. They're flexing out across. On 83 points, they are also within striking distance, but with the placement points that 9ZG have to get, a lot of elims need to be found. Leaving Aru alone, standing for India. 86 points. We'll go further off the back of this one, but I think for OG, today has been an incredible improvement. Much better gameplay overall, but it just came slightly too late. I do think they'll be fearsome, again, when they head back to their own regionals, but I'm not sure they can go too much further here. Good shots from Jafar down towards Baton on Wolves. Well, yeah, I think Tiamba does have a good chance here. 9Z has to leave this building, but 9Z has to go down soon. They can't be gaining too many more placement points now. Otherwise, Tiamba's chances are really, really not looking good. For GS, this is the team that has the greatest ability to jump out of the bottom 5 into safety zone above 9Z. Circle just about envelops them now. I mean, 5th place is 3 points, which means that guaranteed it's 98 at least for 9ZG, even if they go down here and now before the Wolves. 4 points if you jump up into 4th. Good shot. This is how you want it to start to happen. And if Tiamba are going to be able to pick them up, then brilliant. Okay, they're moving through with the bullets and lining up these shots. They have the angle. GS denied the points opportunities. They're closer, but it's not quite a cigar, as it's not going to flare into existence. Tiamba moving out, blank. With Eagle crashing up, they could be getting another point here. Bond on the backlines forces him over. Aru is still playing as well. The battle for this bubble is so close. That angle from Bond is incredible. I love that. On top of the boxes, looking through the top windows. I don't think anyone expected that when it took down Colligot as well. But it is going to be Tiamba versus GS. Both teams, desperation in their hearts towards this endgame. Aru looking to go further beyond, but it is Jafar. And GS to look towards him. No shot is found, but Jafar goes down. And this opens things up now for Tiamba, who've been down that look all day. That 14 elim game might be doing it. GS with 2 players alive. They're looking to chase the bubble. Will it be enough? Are they far enough ahead of Tiamba that it won't matter? A GS going to take that spot from them. It's all in the lurch here, Blank, but you just want to close it down now, and that's how you start. Tiamba trying to rise from their own ashes as they launch the nade assault forwards. It's looking good. They've got it in control, but with 1 player left standing, Bond's going to spot him. The spray down there does not connect, and Tiamba over the top. 11 elims, 12 maybe if they can find it. Tiamba get the chicken dinner, but Blank, is it enough? I think they might have just made it from that moment. Some great finishing gameplay. It was wobbly towards the middle of the game, but they've got to now wait and see. Does Bond have a license to qualify? Let's wait and see. Oh my goodness me, Blank. It's so down to the wire here. I don't think 9ZG held on though. I think either way that you slice that one, it's not going to be the case that they survive this tournament. They are going to be getting pushed out here. GS, Tiamba, both looking to try and climb up. OG pipped at the final moment as well. It was everybody who was on the chase, on the hunt, looking for it, alive in those final circles. And we're waiting for the number crunchers to do their job, because honestly, at this point, it's just impossible to have kept track. Oh, Tiamba, though, I wonder if they know something we don't, because they are smiling. They are looking good. Not so happy in the GS camp, so maybe, it's not come through just yet. We'll have to wait and see. Oh, my goodness. The team's on the edge right now. I don't know if they know.
We'll have to wait and see. The desk is going to break it down. But either way, I think it's clear that this has been the most exciting group we have ever seen. What a close down. 8 teams from the bottom of the leaderboard, all giving it their all in those final moments. It's never over until it's over. And Tiamba proves just that. Are they a point shy or a point clear? हर टीम कुछ ना कुछ पॉइंट्स ले रही है नीचे का 0 पॉइंटर कोई जा ही नहीं रहा है भाई कोई जा ही नहीं रहा है I think it might be a tiebreaker. Blank, I think it might be a tiebreaker here on the bubble. I just don't know. I mean, it's so tense. I can't figure it out. Oh my goodness me, I need these overall stats as fast as we can get them. This is really what I'm waiting for at the moment. But our top 3 also locked in. Blank, APG atop the pack. Goat held out. APG? IC couldn't do it. They tried to crash into Tiamba themselves. Qualified Goat bhi qualify ho gaye. Top 3 You know what? My best maths right now is that it's a 3-way tiebreaker on the bubble. I just don't know who has it. I don't know if that's correct. I don't know if that's correct. Celebration in the 9Z. You think? You think they've held on? Well, I mean, the admin's just giving them thumbs up. I don't know. I'm not sure. We'll have to wait and see. But that's a little bit of a spoiler potentially. अरे बैगन ले भाई कॉपीराइट भी खाता हुआ मेरे लिए बस 30 सेकंड के पहला बंद कर दो और फिर से चालू करो तो कॉपीराइट नहीं गिरता है क्रैकिंग द यूट्यूब एल्गोरिथम Are you kidding me? The last game curse could be broken right here, right now with Tiamba. Man, I tell you what, if they did it, it was 100% due to that insane angle and stealing all those eliminations right there at the end. What a crazy finish, Max. Peeking through the windows on top of that box, able to successfully transition over to this ridge, eliminate 9Z, go for the push, make sure none of these high ground northern teams can even compete with that kind of oppression. You are settling down on this lobby. And Bond there just with the buggy push up, trying to go for the squash, but doesn't quite secure it at the end. And they just overwhelm that final player. Bond, what a performance. 5 eliminations, Aiken 4 eliminations, Niptura. Those two guys carried this game hard on their shoulders, but was it enough for them to make sure they at least can survive a little bit longer and go into the last chance? Oh gosh, only time will tell, but I tell you what, Tiamba did everything they possibly could. I mean, generally, if you have a zone where you've got that compound, but it's, you know, low ground behind a hill, or rather in front of a hill, right? Many teams would just go, we're just going to hunker down, we're going to be here, we're going to let those teams fight it out. We're just going to wait a little longer. Not Tiamba. Tiamba went, yeah, we have the compound. We're going to push up this hill and make sure those other teams can't do a thing. And that's exactly the attitude we needed to see out of this team, because Tiamba, we all know it. They were in so much danger going out. Have they done it? We don't know, but this is the actual best shot they could have given themselves. Man, these guys were out here like stranded in the desert for a month. They were so thirsty towards that end. I kid you not. The second we saw a knock, it was just gone. Tiamba was just stealing them away. I was like, are you kidding me? I was like, they're taking every elimination right now. And the numbers were so dang close here. This game had it all. It really did. You know, we saw Goat go out once again, right, with a 0-point game. But that lead, Max, it was just too strong. Yeah, so we know who's going to the grand finals. Oh, no, for sure. Come on. It's not budging, especially the team that did have an opportunity was Inner Circle. I can say their name now. We're done for the day for the Group Green. That push onto that warehouse, Niptra, was, I have to say, it was terrible. Not what we wanted to see. No, there were so many weird plays coming in from a lot of these teams, and I think it's just that desperation coming through, right? It's the final game. There's always a little bit of chaos in that final game, but man, yeah, I mean, at this especially, I mean, if Serafina doesn't have any bullets whatsoever, and he's dodging around while you're trying to shoot him with a shotgun, that nade is insane. But, like, come on, you gotta kind of rethink some things here.
Yeah, I'm waiting for the replay of that Eastern fight. D plus Kia, APG, and Orangutan. That was a fight for the history books. India trying to defend their spot there, maybe trying to make it into last chance, but unfortunately they couldn't quite win that final fight. But yeah, AKOP, that nade! Oh my goodness, then they just go on to D+, APG, don't even have time to fight back. It was such a good fight, but unfortunately, it felt like after that fight, Niptura, all that confidence was just lost. All the steam for this team just disappeared in thin air. I'm so sad for them because it was looking so good. As you said, they came off of a brilliant fight there, immediately pushed forward, go, we can do this, and then just missed the timing completely. I'm so upset for them because it could have been so good. We could have seen a very different result, but it is what it is, you know? They just, that's it. Yeah. Learn for next year. That angle from Bond, and I know. This is so cool when you have such intricate map knowledge of these buildings, of the terrain. You're like, I know what I can do to abuse that position to our advantage and create an opening to make that move into the circle. As you go and check out the replays on the rotations of these squads, and actually looking at the drops, Jamba, very lucky here, Niptura, not having to really budge too much away from the eastern side of La Cobreria, and because of that, free ticket into the mid to late game section of this match, and they can just use that full man advantage to overwhelm and conquer this game. Yeah, absolutely. And I just, seeing Orangutan over there just reminded me of when John and Blank were like, where are they? We don't actually see them, but they showed up eventually, right? They showed up, and I did like their gameplay. It's more towards their gameplay style, which I've really liked that we're seeing more of their usual play style come through here as the days have progressed. Unfortunately, a little bit too late to really do much, I think, here, but still a really valiant effort. I did like those rotations coming through. They just, in the end, just had to send it to center and hope for the best, which they did get 1 point, but at what cost? Yeah, well, you know what? We can see the points ringing out right here. Tianba, 22 points. OG bust out 12. Hey, you know what? I got to give big props to OG, man. For a team, their first time here in PMGC, I'm super proud of what they were able to accomplish. And, you know, rotation-wise, they're at the level of all these squads in my eyes. You know, I mean, we saw them right there at the end. You know, they were waiting for the third party, waiting for it. And we were like, oh my gosh, if they time this perfectly, they got this, right? But when it comes to difference from PMGC versus every other tournament, that 1 second reaction time, right? Their push would have worked in every other tournament here, but here you got to be that one extra step quicker to make that push. And if you're too late, you're going to miss all the action. And unfortunately, that is the problem, I think, with OG. But you know what? I'll tell you what, guys, it's such a quick fix. You know, it's something that now that they have this experience under their belt, I'm so excited to see what they can do next year. I mean, so cool to see, of course, India back in PMGC in this stage for Group Green, and Orangutan showed hope, showed potential, and I'm sure that, you know, given even more time, that region is going to prosper on the international stage. Don't forget, we do have True Rippers in Group Red, so that's going to be very entertaining. But Alter Ego, Niptura, the boys, what's happened on Miramar? Absolute, it was, again, I'm going to have to use this word for Alter Ego too. It was terrible. What are they're just falling apart so quickly. There's no substance to their presence on these Miramar matches, and I didn't even forgot they existed, to be completely honest. Alter Ego had a chance, and I think they fumbled it big time. Yeah, I think they did. It was so weird because normally we're used to seeing such a big presence from them in these Miramar games, right? Alter Ego tend to step up when it comes to Miramar, and today there was no step up. It was a step down for them. These pushes they were making felt very desperate. They felt very just like, you know, just go for it and see what happens. It's like, that's not Alter Ego. I just looked before this game where they actually, wait, they got 5 points today. Yeah, no. On the whole day. They had 100 points at the start of the day, and they ended up at 105. Oh, Alter Ego, please. Don't do it again in last chance, please. Please. Last chance is going to be stacked, guys. Stacked. So from Group Green, right, we got IC. We got Genji, Wolves, Alter Eagles, Falcons, Loops, Super Papa Massive Blaze, and what's going to be that last T, right? That's the question. What is it going to be? Did Tianba, did GG Bond do it? 5 eliminations. It's going to be so dang close, dude. It's so crazy how every single time, we said it all tournament long, Max, right? How these things are usually decided by just one singular point. So that's why, for everybody wondering if we're being like hypercritical of certain plays, right? Because that point could have been the difference, right, Max? Yeah. Yes.
Yeah, you don't want to look back on an entire tournament and be like, that one elimination you didn't flush because you were focusing on something else, you just miss out on qualifying to the next stage. You don't want that situation to happen to you. So I do think we're going to have a tiebreaker here, Niptra. I think it is going to happen as we check out the leaderboards very soon. I think we are going to have a few tiebreakers, possibly. That's my guess. I mean, I wouldn't be surprised. We've had teams on ties all 3 days, haven't we? I mean, somewhere on the leaderboard, there's been at least 2 teams with a tiebreaker having to come into play. So for it to come down to the last match and there still be a tie would not surprise me at all, Jukes. Yeah, there is a tie. Again, folks, it would be decided by chicken dinners first, correct? Yes. I believe so. All right, well, let's go ahead and see it right now. It's 9Z! 9Z, hold on by the chicken dinner. Are you kidding me? Three-way tie. Wow. The three-way tie coming out from 9Z Globan, Tiamba, and GS. Those 2 chicken dinners lock it in for 9Z here. America's going to have a new team making it to the last chance stage, meaning that Tiamba, GS Team, Orangutan, Reject, and Team Secret end their PMGC adventure for 2025 prematurely and will be going home after these matches. Wow, Neptura. It looks like those handshakes, right? It looks like those thumbs up that we saw from the admins run true. 9Z, hang on by an inch. Oh my gosh. I'll tell you what, if I'm 9Z, I ain't got no more nails after this one. That was close. That was insane. GG's, but we gotta say big old GG's to the top 3. Oh, wait, hang on a second. Daily MVP, it is gonna be Chips. DK coming out on top there, not quite eclipsing APG for that first spot, but dang, Chips taking in the Daily MVP. That title is his. Yeah, daily MVP for day 3. This guy's been an absolute menace for the entirety of D+. Mike, it could have been notable also, we'll have to see, but here it is. Group Breed MVP, the man, the myth, the legend. It's Top. Woo! He's back once again to claim another PMGC MVP award. The Grand Finals, that's going to be next on his list for sure. Well deserved too. I mean, in day 1 alone, he had more eliminations than majority of teams had points total, right? These guys started off the day, this whole group so strong. And then, you know, day 2 is like, let's chill out. No big deal. Day 3, we're going to wrap this thing up and take all the titles, Neptura. Yes, indeed. APG just have to be on top when it comes to those MVPs every single tournament. It was Doc and PMGO, and now it's APG, at least for this stage of the PMGC. Group Green is gonna be tops and tops alone. I love seeing this from him. I mean, we saw so many cool things, and I think, was it yesterday we were talking about this, Max, where it really feels like Doc has had a huge influence on how the rest of the team use their utility and the improvement that's been made here, and Top especially. We saw so many amazing nades from Top that have helped him get this MVP title. And I'm telling you, that survival time, I want to add the extra minutes of life he's provided to Doc by keeping him alive with that Mini 14. Right? He's been keeping Doc alive so much in these matches when the dockening does happen. But no, he is the best sniper in the world, in my opinion. If you don't agree with that, for me, you're just not paying attention. We're not watching the same esports. This guy, give him a Mini 14 and he will 1v60 the entirety of the lobby. This guy is a legend. And Hot Jukes, he got a PMGC award in the past. He's only missing an international trophy. And you know what? With APG, with this roster, if they bring their A game like they did today, maybe they could make it happen for once. Man, can we talk about improvement from this squad? First off, right? They were in the gauntlet, right? They ended in the gauntlet 13th place with 83 points. But let's go ahead and take it on the stage to wrap things up. Oh, never mind. We're here. That's right. Okay, so we are here. All right, I just wanted to double check. We'll get to the stage here in just a little bit. All right, but you know what? I want to reiterate that APG during the gauntlet, 13th place, 83 points, guys. They had 83. Now they finish with 174 with the same amount of matches. Not to mention R8 led it with 154. So they even outperformed R8 during the gauntlet, right? So, I mean, what a massive improvement from the squad, and well-deserved, Max. Yeah, very happy with their performance. I mean, APG looking great. D plus Kia, the reigning champions in the finals. It feels very fitting. And for OG,
और क्या ही बोल सकता हूँ भाई, ओजी के लिए लास्ट मैच अच्छा था, बट बाकी के जितने भी मैचेस जो चोक हुए उसमें अगर कुछ हो जाता तो भाई, जो 0 पॉइंटर से जो भी थोड़े बहुत जहाँ पे कन्वर्जन आना चाहिए था वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ, पता नहीं, बट आई विश अभी ट्रू रीपर क्वालिफाई कर जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। पता नहीं अभी क्या सीन क्या है, but Right, Hot Jukester, we are going to be seeing them trying to defend their title from 2024. Out there, anyone out there in the community, I'm telling you, they're probably very wrong because, oh my goodness, this event is so hard to know what the hell is going to happen next. And the next stage is going to be even more intense, Hot Jukes. Well, I can hear it in my ear. That interview is ready. Let's go ahead and take it down to the 7WG in the stage to wrap things up. टॉप 1 वाले का टीम I got none other than first place APG Doc right next to me. Despite underperforming in the gauntlet, we finally got to see APG fully perform here. I mean, this is going to be sending you guys now directly to the finals. How are you going to be able to keep that consistency in the finals, Doc? За бидний өмнө нэгдүгээр байранд орсон дөг зогсож байна. Танабагийн хувьд болохоор Gauntlet stage дээрээс яг өөрснийхөө үзүүлэх гэсэн амжилтаа үзүүлж чадаагүй ч гэсэн нааша ногоон групп руугаа орж ирээд айгүй мундаг тоглож гарч ирлээ. За та бүхэн одоо гранд финалдаа орох үедээ өөрснийхөө тогтмол амжилтаа хэрхэн үзүүлэх гэж бодож байна вэ? Ер нь манай багийн алдаанууд дээр маш сайн ажилласан. Тэгээд финалийн үед нэрэлээ юу болохыг тааж мэдчихгүй, ямар ч сан сайнараа хичээнэ. Болох ёстой юм болох хаа. From our team, I can say that we are fully confident that we fixed the mistakes that was happening during the counter stage, and I will not say anything prediction related about our grand finals because the things that are supposed to happen will happen for us. All right, smart man, making sure you don't want to end up jinxing yourself. Now, a little birdie did tell me that it is your birthday. You didn't want to tell me how many years you're turning, but happy birthday. You do get the wish of going to the grand finals. Is there any other wishes that you have as you get the birthday cake? Production by. За төрсөн өдрийн минь төрье. Одоо ингээд төрсөн өдрөөр гранд финал руу шалгарч байгаа. Өөр ингээд төрсөн өдрөөрөө чамд хүсэх зүйл байна уу? W भाई. Тэгээд ямар ч байсан сайнараа хичээнэ. Тэгээд дэлхийн авраг голыг гэж ер нь тэгж л хүсэн дээ. The first thing is that I will do my best and my wish will be become a world champion. Well, I'm pretty sure you definitely want to be able to achieve that. You know what? Before we even end it here, do me a favor, Doc. Blow that candle and make a quick little wish in your head. За дөг лагууллыгээ төслөө шимээрээ. There you have it right there, ladies and gentlemen. Not only is it his birthday, he was also able to qualify in first place out of Group Green, being followed by DK and none other than GOAT. The stage is set and it's getting closer and closer to the grand finals. We have eliminated 5 teams. Don't forget that in 2 days' time, Group Red does start, and we'll be finding out what other teams will be joining APG in the grand finals. बिग डब्ल्यू भाई, बिग डब्ल्यू। ये लास्ट चांस है। यहाँ से ये ग्रुप, ये देखो ये ग्रुप ग्रीन है ना, तो अब ये ग्रुप रेड भी आएगा इसे, तो वहाँ से भी 3 कोई क्वालिफाई करेगी और वहाँ की जो 8 टीम है वो 8 टीम दोनों लड़ेंगी, 2 लोग वहाँ से क्वालिफाई कर टॉप 2 बस। जी भाई, लास्ट चांस क्वालिफायर्स।
क्या ही बोल सकता भाई, बहुत मतरंगी मैचेस हुआ है भाई। उफ, बट क्रेजी बे जो भी हुआ। वो उनके फेवर में तो गया नहीं भाई, लेकिन बैगन क्या ही कर सकते हैं अपन। सच बोल रहा भाई, उनके फेवर में नहीं गया, क्या ही कर सकते हैं।
So guys, make sure you like, share and subscribe to the channel. ये क्या है भाई? अच्छा ये भेड़ की चल रहा है। अरे यार बैगन एंटर नहीं कर पाया था गेम में। दो गेम में जीतूंगा अब देखना।
करो यार तुम लोग भाई कवर नहीं कुछ नहीं मेरे को कैसे मारूंगा इतना This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ऐसे ही मारेगा तो अपन मर गए।
बैठ उधर ही साले, उधर ही गाप देते। तेरी माँ क्या कैम करके बैठे। हेड मारा। मार रहे इसको। बस जीत गए। हारने वाला था मैं तो, तीन ही मारा मैंने। ये क्या? अच्छा जोन के बाहर है क्या वो? मार रहे भाई, आगे भी नहीं आते, पीछे भी नहीं आ रहे।
हूँ वहाँ पे, बहुत थका हूँ। मैंने हम लोग आ ही नहीं रहे अभी। दिया, एक फुट नीचे दिया मेरे को बाइगन का। भाई मैं नहीं जा रहा अभी, इनको ही आने दो। मैं मार दिया था इसको, 2 हेड मार दिया था मैंने उसको। रे मेरे को ये साइड से खेलना चाहिए था। किल तो मारा इसने, क्या फायदा हुआ लेकिन किल का। ट्रेड पे ट्रेड बस ट्रेड लेके आ जाओ, ट्रेड लेके आ जाओ।
आग नीचे से मार दे साले को, एक को मार बस हो गया। भी जीत गए। लिया रे क्या अलग अलग अंगर मंगा के मारो बता भाई। परेशान हो गया
मैं वो टिप्स एंड ट्रिक करते रह गया भाई मारने के चक्कर में। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
तेरी माँ की आँख क्या यार तेरी माँ ये किया मार डाला ठीक है था कौन आ गया हेलो बोल रोमा बोल देखता हूँ चल पहुंचा दो बात करता हूँ मैं बात नहीं हुआ दीदी से तेरा बात हो गया ना तो ठीक है मेरे को दीदी फोन कर देगी मैं उनको पूछता हूँ कैसा क्या करने का है। चलेगा ठीक है मैं बात करके रखता हूँ मैं तेरे को बताता हूँ ठीक है चलेगा अच्छा किया बे अरे यार ये क्या है बे
हाँ ओके आ जाओ भाई कोई नहीं। क्या बोले तुमने 11th 12th क्या 11th 12th को क्या डेट आ रहा है? एक सेकंड मेरे को चेक करने दो रुको। नवंबर ना दिसंबर 11th एंड 12th बोला तो अबे यार फ्राइडे को ही आ रहा है यार मेरा वापस नाइट शिफ्ट पे ही आ रहा है यार। तुम सैटरडे संडे देख लेता यार कुछ तो ऐसा। मैं इसे बाद में नहीं कर पाऊंगा। उसको धप्पा देने का था यार, धप्पा ही नहीं दे पाया। क्या था रे? क्या है, मेरा गोली कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या इन लोगों का कैसे हो रहा है रे? बाल को मार रहे थे। क्या है रे बैगन?
अखिया कितना मारू भाई अखिया। भाई बहुत घापचू हो रहा है भाई अपने को। ये क्या कौन सा गेम है भाई, वो दिखा ही नहीं। वो दिख रहा मेरे को। अरे यार क्या गंदा। तेरी माँ की अखियाँ, इतना मारने के बाद भी अखियाँ ही मिल रहा है अपने को। नाइस, वही तो करना था।
क्या ये गेम बजा दिया पिंग अरे तू एक किल जाके देता है रे गू तेरी तो भाई गू इंसान लोग जाके जाके मरा उफ This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
जहरीले सांप थे भाई तीनों के तीनों. इतने जहरीले सांप थे ना कि पूछो मत भाई, इतने जहरीले सांप. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Prem, sorry, darling. ചുറ്റും നോക്ക്. ചുറ്റും നോക്ക്. ഇത് സുഹൃത്ത് അലക്കെ രീതിയിൽ अंधा है ना तू. अल्लाह लौड़ा. प्रेम मैं कौन करूँगा? फीलिंग के लिए डालना मत क्रेजी. मैं कौन करूँगा कि तो गया. इधर इधर तुम बड़े बताने नहीं हुआ तेरे को. अभी तो तेरे को आवाज नहीं आ रहा क्या? एयरफोन क्या अल्टीमेट आ रहा है क्या? ऊपर ऊपर नहीं डाल, ऊपर नहीं डाल. अरे गलत इंसान को मारा है तूने. दोन फोडले आणि लवकर आहे ना.
अरे यार ऊपर से भी मार रहा है, बाजू से मार रहा है, किसी से मारूं? भूसड़ी के आ बोला तो खंड उठा के आया मैं, मर गया। उतरते ही मार दिया, बाहर ऐसा कूदा खिड़की से, पेटी। तेरे साथ ये होगा। ब्रेक ब्रेक गैंग क्रेजी आगे तक गया, क्रेजी तो फेल दिया। बगल द्यायला विसरू नका. चुच्चुम नोक क्या लिख रहा है ये 3 जन है। अरे मैंने देखा नहीं है, 2 देखा, ये तीसरा भी आ गया, ये नहीं देखा, 4 हो गए। देख किधर उतरा जल्दी बोले एड़ा बोर्ड पे। अरे इसने ही मारा, इसको चाकू मार, इसको चाकू मार, इसने ही इवेंट पे मारा अपने को। उतर उतर एक एचपी बाहर वाला प्लीज। अरे भोसड़ी के उतर किधर जा रहे भोसड़ी के क्रेज पागल लगा रही थी मत से। मैं को लगा अंदर ही रुकेगा, ये बाहर गया मारने, मेरे को क्या मानता। मैं नॉक हुआ लेफ्ट साइड, तू राइट साइड से उधर किधर जा रहा है। तुझे पेटी बंद ना मैं तो सामने तुझे पेटी। अरे भाई प्रेमी है यार, डोर से स्क्वाड करो ये भाई। सोए दो को खराब चले मगापासून। मेरी हीलिंग ही नहीं है, मैं क्या करूं। ये देखेगा ये पहले नॉक हुआ, सुना ये सोम इधर है, मैं तेरे को रिप्ले दिखाता हूं, इधर ये सोम। अरे मेरे को पता है, मैं नॉक दिया ना एक। हाँ अरे मेरे को पता है सब। मेरे को लगा ये हील विल करेगा, रुकेगा उधर ही, भाई ये गया, मैं पीछे से घूम के मारने को जा रहा था उसको। मेरी हीलिंग नहीं थी, मैं हील मार रहा था, मैं तो कुछ बोलूंगा भी नहीं। वो गू खाने गया था। अभी वो जाने क्या कर गया था, बोला तो गू खाने गया था, हील नहीं था तो भी क्या। मेरा हीलिंग नहीं था, मैं शांत बैठा था, तूने देखा ना। लेफ्ट साइड पे नॉक हुआ, हिने काय केलं माहिती का, दरवाजातून बाहेर आलाय, राइट साइडने डायरेक्ट त्या साइडलाच गेलाय की। अरे तो भाई मैं यूज कर रहा था। अबे तूने बंदा फिनिश करवा दिया ना, पर उसके क्या कंपूस किया उसको। अरे लेकिन तू भाई तेरा हील नहीं है, तू क्यों जा रहा है उधर, लेकिन मेरे को वो तो बता, मैं मारूंगा चलेगा। चूते मेरा फुल एचपी था, फुल एचपी था मेरा। बंदा है क्या उधर? मजा आएगा अभी। मैं बॉट है, चूतिए वो 2 डाल रहा है उस पे। अरे वो ऐसे आगे पीछे हो रहा था इसलिए। भाई बस झालं सॉम भाई, नको मला मस्त बस झालं। चिरली आमची रिटायरमेंटच गेलं, रिटायरमेंटच भाई। ऐक ना सॉम, माझ्या पेटीवर जा ना, 2 मिनिटं जातो, 2 मिनिटं जातो। तुला नीट सांगतो काय झालं आता। हे बघा ही माझी पेटी आहे, लेफ्ट साइडला जा, डाव्या साइडला जा। इथं माझी फाईट झाली, इथं 1v1 मी हारलो, ह्या साइडला आलो इथं, आणि ह्याने काय केलं माहिती का, इथून डोर मधून ह्या पेटी लुटल्या मधली, बाहेर आला, बघ तसं नाही, आज जा। मग इथून
सेम पॉइंटला इथून बाहेर आलाय असं पाठ दाखव तिथं नाही गेलं चुतीया दरवाजातून असं बाहेर गेलं आता डाव्या साईडला जा आता राईट साईडला जा राईट साईडला असं ह्या साईडला गेला रुक जा इधर अब भी मैं हाँ बता ये भी है ना इसको रितेश बना दो हाँ बता आ जा रितेश इधर अंदर इधर नॉक हुआ है हाँ जा इधर है वो रितेश इधर मैं नॉक इधर चूतिया रिवाइव दे रहा हूँ सुन अरे तू बंदा उतरा है मेरे को दिखा हाँ, हाँ। है दो उतरे मेरे को दिख रहा है एक लेफ्ट गया एक राइट गया था पहले इसको क्या गांडू जरूरत करके इधर आके इधर ते पास कवर है ना इधर खड़े रहे ना उसका ग्रेनेड थोड़ी आएगा मैंने एक नॉक दिया था इधर जाते जाते हाँ तो वही इसलिए तो मैं इधर से बे घुसा ना चूतिए बंदा ही अभी उतरा था तू राइट साइड क्यों गया और मैंने बोला भी वो एक एचपी करके कितना गोली मारा उसको भी बता मुंह से हाँ मारा एक दो गोली बस लेकिन बता रहा हूँ चले तू राइट साइड क्यों गया ऑपोजिट गया एकदम बंदे को एकदम मौका दिया फिनिश करने का क्या गांड मार उसकी अभी जाके चिड़ी के अभी उतरा है वो क्या सरप्राइज दे रहा है उसका गर्लफ्रेंड है क्या तेरी चूती 7 साल से खेल रहे आईफोन में खेल रहे हो ऐसे चूते जैसे खेलता है ये बंदा उतरा ये बंदा लौड़े I'm recalling a teammate. माइक ऑन कर Thanks. ले दे रही आकृति फाइट ले दे आकृति अरे वो भी मर गया अरे मैं लास्ट वार्निंग देता तुला माइक ऑन कर Marked a location. प्रेम झटम आगे भी गए माइक ऑन कर के आजा आजा आगे वाले को ले दे मैंने ऊपर है या बोलो तेरे को ऊपर काय बोल लवडा माइक ऑन त्यासाठी बोलवलं का तुला मी नाइस रे खेळणं लावडा काय बोल Watch out. Don't give up. Your teammates can still recall you. क्या भागे देखो मला रिकॉल देन चल ना आपण मारायला तो Don't give up. Your teammates can still recall you. भाई मैं क्या बोलता है मन मैं तेरे को ये इतना बड़ा गांडो इंसान है ना भाई क्या बोलूं अरे अबे मेरे को क्या ही आइडिया था भाई गाड़ी आगे मेरे अंदर साइड है रिकॉल दे अबे वो अंदर साइड है पैनिक रूम में मैं नेड कर रहा था मैं बोला मार दूंगा उससे अच्छा देखा तो ये किचन में बैठा है कुठे रे त्याच मार्कर कुठून आली फाय बंदे चढले माझ्यावर डायरेक्ट चढले वरती माझ्या छतवर दो है मेरे छत पे Help! किधर से मार दिया बे एक लो है एक इसमें क्रेजी आके मेरे को उठाएगा क्या जीत जाएंगे फाइट अच्छा अच्छा सीधा आके उठा ऊपर हो डेंजर है एडब्ल्यूएम वाला है लांब है एक फाइट ये सोन कौन सा लाइव क्या पता थर्ड पार्टी जाती बहन ओनली फैंस पे लाइव है बहन का बड़ा
रितेश पेटी बनाने बुलाया था, कह रहे मेरे को, मैं मार देता रे बाहर से ही। युद्ध से मार। लवड्या 16 आहे मग 16 आहे मग हे की रिलोड का करतो। काय खेळलेत भाई. क्रेजी सा डाउनफॉल हो गया है। अरे मैं तो मार रहा था, ये ऊपर गया। मैं तो मारने वाला था। ए चुप गांडू, मैं तो मारने वाला था, तू ही मेरे को बुलाया। Start the match. ए सोम, ए रितेश, जा रहा हूँ, मेरे से जा रहा हूँ, मेरे कल ऑफिस है, तुम लोग खेलो। ऑफिस है। हाँ भाई, यही जिंदगी है। काम पे जाए बड़वे, काम पे जाए बड़वे। चल ठीक है, जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। चल ओए कार्य, एक मिनट रुक। अच्छा फोर ये खेल रहेगा। टू पावर पॉइंट फ्री फ्रॉम। अबे तूने डाउनलोड नहीं किया था क्या वो? क्या डायरेक्ट किक हो गया। सेंटर में. अच्छा हाँ, वो नहीं था मेरे पास। चल कोई ना, तेरे देख सेंटर ले में फिर। लगा था. इरशाद को बोल दूं कि तू चला जाएगा अगले मैच में? क्या बता लेजिट। भाई अपना असली डाउनफॉल तो कार्य कल है रे, आज नहीं है। क्यों? वो ट्रेनिंग है ना। ये तेरे को भी डाला? अरे क्या नाइट में हो? तेरे को भी ट्रेनिंग में डाला है कि नहीं डाला है? सबको ही डाले ना, फिर ठीक है। मेरे को लगा भाई गिने चुने लोग को डाला रहेगा। फिर बारी है, फिर मजा आएगा। कीड़ी भगा दूंगा भाई जो सिखाने आएगा। अबे क्या हो गया इसको? बैटरी खत्म हो गई इसकी? सांप सूंघ गया। आया कह रहा है व्हाट्सएप पे। कॉल भाई किडनैपिंग है। फिर अब भैंस की इसके घर में इसके नंबर है, मैं बदरू को फोन करके पैसे मांगता हूँ। क्या फोन करके पैसे? कौन सा नंबर है तुम पे? हाँ अरे अब हमने इसे किडनैप कर लिया ना। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks. I got and 5 play eliminations just responsibly. मैं इतना अच्छा डायलॉग मारने वाला था तुमने। अरे रुक जा, अभी आवाज आ रही है। अरे भाई उल्टा मेरे घर वाले और सुनो तो। तेरे को पता है? अरे रुक तो सही, आवाज तो जान दे, रुक जा एक सेकंड, आवाज ठीक हो जान दे। हुआ क्या? हाँ हुआ, अब बोलो। अरे उल्टा मेरे घर वाले पैसे देंगे वापस ना भेजने के लिए। और ऐसा बोलो फिर, कर ले करे फिर क्रेजी भाई, किडनैप करें। पैसे से ही मतलब है ना, क्या फर्क पड़ता है? 2 वक्त का दाल चावल रोटी दे देंगे। अरे वेज नॉन वेज है हमारी तरह। हाँ चिकन बोलो। टेस्ट ज्यादा लग रहा है वेजिटेरियन। ऐसा अरे तुम पे कितने लकी कॉइन पड़े? मेरे पे 450 के करीब। अरे तो वो मिथिक शॉटगन रिडीम कर लो, बढ़िया है वो भी। अरे मिथिक शॉटगन किस काम की, वो चलाता ही नहीं मैं। पम्प शॉटगन नहीं चलाते?
अरे यार एक सेकंड मेरे को फोन मारना पड़ेगा पहले। केवल चुप नॉक आगे वाले में चलते हैं, आगे वाले में चलते हैं, फोन मारते केवल हैं। को बुला लो, मैं फोन अगले मैच में मैं हाँ जा रहा हूँ। अब एक केवल का नंबर नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को कुछ काम अबे है। ये कमीना 4 बजे तक खेलता है। तेजित काम कल करेगा। होता तो मेरे है घर भाई। वाले सब सो गए, सब सो चुके हैं। हेलो केवल, एक सेकंड रुको जरा। हाँ अभी आवाज आ रही है? हाँ वो बुला रहे हैं भावेश कृष्णा। 10 मिनट ठीक है बोल। उसको बोल 5 थूक के बात कर रहा हूँ। अब भैंस की यहाँ भावेश को फोन में लाता हूँ। लैंडिंग ठीक हो रही है ना? एकदम गाड़ी देखना पड़ेगा। छोले भटूरे बंद हो जाते हो 4 बजे। अरे एक टेढ़े जाने। उस दिन गया था, तू नहीं था तभी शायद। नहीं तेरे को ही बोला था यार ना, अंधा नहीं था तभी। हाँ वो खत्म हो जाता है, बंद ही हो जाता है भाई। उस दिन तो 6 बजे क्या बंद ही था। सुबह खुला रहता है सुबह। आओ बैठो। सुंदर बैठ। अपना नाम कोई नहीं। ये ऐसी फोन ना उठा रहा। गेम खेलता है यार। इसकी ये डायलॉग नहीं जाने वाला कार्यो। यार ये तूने क्या किया यार लेजेंड में? इसकी जिंदगी भर का रोना चिपका दिया तूने मेरे पे। किस चीज का? क्या मजाक मजाक में भैंस की जो तूने जो रॉयल पास दिया है ना, ये अभी तक सुनना पड़ रहा मेरे को इसका ताने। कौन बोल रहा है अब किसने बोला था सोम? कृष्णा ने भावेश ने? अरे एक काम करो तुम, दुगना रिफंड मार दो, सब चुप हो जाएंगे। हाँ फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा मेरे को। कम से कम वो है ना 8,500 वाला एक पैक है, 8,500 वाला एक पैक है। माय गॉड, उसको जरा यूनिपिन से डलवा दो। भेज 250 रुपए के। कार्यो तेरे में पॉप कितने भावेश पूछ रहा है? एक ही बहुत है। बहुत क्या करेगा? बहुत स्टार्ट हो गया ये? हाँ कब का? अरे मैंने एंटर ही नहीं किया। कोई ना, रजिस्टर नहीं किया। नहीं है। तूने क्या किया? हाँ किया पर किसी काम का नहीं, बेकार है बोला तो। अच्छा ठीक है, तो मेरे को बताने क्या होता तेरे को? अब तू था नहीं तब, अब नहीं होगा ना रजिस्टर? नहीं अब नहीं होगा, था नहीं। अरे बताएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, खुद चाहिए। बताया था मैंने सब। बता, एक मैसेज डाल देता तो पढ़ लेता मैं। तो कैसे बताता? एक मैसेज डाल देता। ठीक है नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। ये कौन चला गया छोड़ के हमको? क्रेजी भाई ये क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? हम पसंद नहीं है क्या? नहीं बता दो, तुम चालू भी वैस की किसी और के साथ खेल रहे थे 4 लोगों के साथ। अरे बाबा उसके बाद चालू किया, ये आया नहीं था और तुम किसके साथ तो खेल रहे थे और तुम्हारा मैच खेल नहीं रहा था मैं, हमसे बातें कर रहे थे भाई, बातें कर रहे थे। कार्य भी नहीं है, कोई नहीं, और क्या पता और फिर उतने में ये अरे यार ये थोड़ी ना। हाँ और मेरे को डायरेक्ट चालू किया है मेरे को।
मतलब किडनैप किया। डायरेक्ट चालू जैसे भी मेरे साथ हुआ, जैसे मेरे साथ भी हुआ। हाँ जैसे एक साथ किया हमने। इसलिए मैंने तभी ये भाई बड़ी को चीज डाला, जल्दी मैं याद सोचा रहे। एक मैच रुक जा मैं यार। अच्छा ऐसी बातचीत चल रही है। चलो निकलते ही हैं, क्या करें अब यहाँ पे। एक बंदा नहीं आ रहा, एक बॉट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली आया अरे था। बढ़ गया, एक बंदा बढ़ गया। बॉट होगा देखो। वो मिला। ये कौन आ रहा है यहाँ पे? अरे उधर आया है। अरे किसी को 4x चाहिए? मेरे पास 2 4x पड़े हैं और 6x भी पड़ा है। अरे गाड़ी निकालो। अरे सारा उड़ गया। क्या बोल रहा है कार्यो? अभी इसको नचाता। ये मैं बर्फ फेंक रहा था मेरे पे, मैं उड़ गया डायरेक्ट। अरे जॉर्ज नाचने गया, उड़ गया है। जॉर्ज में फ्लेयर चलाए, निकलता है यार। चलो चलो अपना मॉन्स्टर ट्रक उठाओ और के करीबी में आटा गीला। ए बग्गी कहाँ गई मेरी? वो बग्गी ले गए भाई। अरे पार्ट टाइम के लिए क्रेजी भाई ऐसा कर रहे हैं ना वो। ये सिला दे रहे हमारे लिए। तुम कौन से कोने में हो? आओ फटाफट। तो हम चलते हैं ना, ये लेके कौन है ये? गाड़ी में बैठेगा हीरो। अरे तो गाड़ी पास लाएगा तो बैठूंगा। विलन बैठेगा विलन। अच्छा गाड़ी पास मेरे बीच में एक पहाड़ नहीं था। आओ। और क्या मेरे बीच में और क्या पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं पता। चलो आओ 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 आओ। अब तुम्हें बहुत शौक है अकेला घूमने का, तुम गाड़ी चलाओ अकेला हो। वैसे तुमने गलत बंदे को दी है। ऐसा ही होता है भाई, देखो अकेले जाने वालों के साथ हाँ तो गए ना तुम, अब तुम अकेले हो गए हो भाई। तो तुम हमको भी उठा के देखो, मैं भी तुम्हारे पीछे ही था सामने। मेरे को भी उठा के लेके चल सकते थे, मैं नहीं मारता, एटलीस्ट गाड़ी ड्राइव करके लेके चलता। क्या बात नहीं भाई, मैं बैठते जाते हुए देखा भाई। अरे मारो, प्रॉपर मारो, आगे इनको मारो। अरे लौड़े। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे मर गया मैं तो। वो अंदर तो। अरे सुई भी नहीं लगती। Watch out! ए क्या हो रहा है? मेरे को छोड़ के चले गए। अरे बग्गी लेके आता। ना बग्गी पीछे बग्गी। अरे हम उतरे नहीं है, हमको उतारा गया है। सुई मार कारी, सुई मार दे कारी, सुई मार दे। वो देख एक बंदा है वहां पे, देख कैसे देख रहा है कमीना। वो देख फिनिश दे सकता है, देख के रहियो। बढ़िया। अरे इसकी भैंस की रोटेशन मार रहा हूं। नहीं और लग रही है। भाई तुम ही क्यों उतरे? अबे नहीं लगी, इसकी भैंस की छूट गई। कुत्ते की क्या किस्मत है, क्या माँ की चूड़िया। क्यों नहीं लगी? पता नहीं यार, पूरा बीप बीप सब बजा है, पूरा हुआ। गोली मारती होगी। अरे भी ये कहाँ मर गया? आया उड़ के आया। किधर? पीछे पत्थर पे। Watch out! पत्थर पे है। अरे बग्गी आई और कारियो तो सेफ है क्या? नहीं मेरे सामने बंदा है। कितनी दूर है? हाँ मैं सेफ हूँ, बस आ सकता है। क्रेजी भाई आओ, एक ऊपर नॉक है। ऊपर नॉक नहीं, ऊपर और एक गाड़ी गई, बग्गी गई।
हाँ कोई ना, मारेंगे और क्या। सैफो 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 गाड़ी पड़ी है। मुझे भी गोली मारी किसी ने, वो दूर से मारी है। मैं कवर दे रहा हूँ जितना देर दे सकता हूँ। भाग गाड़ी पे भाग, गाड़ी पे भाग। अरे यार करके रखा है कि 2 बंदे आए। गाड़ी पास से चल के लेके दौड़े चलना, गाड़ी में बैठना। चल 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 चल। मेरी पेटी कहाँ है? बाद में लूटेंगे जब। तेरी पेटी में बाहर। अरे ये सेफ जगह है, ये सेफ जगह है, ये सेफ जगह। अंदर आ जा, अंदर गोली नहीं पड़ती। पहाड़ी पे 4 बंदे पूरे। 4 बंदे पहाड़ी पे। ये देख ये देख ये देख बंदा लेट, ये देख ये खड़ा है यहाँ बंदा, उसको मारेंगे। रुक कहाँ मारा? पहाड़ी पे। उन्होंने गाड़ी फोड़ दी लग रहा है। अरे कहाँ? अकेला बंदा था ये, चोक कर दिया। चला रिकॉल एक बार। चलो क्रेजी भाई दे देंगे। मैं तो गूग गया था। इधर बताओ, इधर ही दूर। यार कितने बंदे आ गए कहीं भी। इधर निकलते इधर से। अरे भाई नहीं निकल सकते रे, गोलियां मार रहे भाई बाहर। इधर बंदे, इधर इधर तो चुपचाप निकलते हैं ना। अरे मार रहे, देख मार रहे हैं। क्या कर रहा है ये? देख के है ये मत कर, मत करिए, मत करिए। ले लो फाइट, ले लो और क्या। भाग, आजा 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 जल्दी आ। अरे जल्दी आ। निकलो निकलो। अरे इवेंट पे रिकॉल दो, इवेंट पे रिकॉल दो रुद्रा। इवेंट इवेंट इवेंट। अच्छा हाँ इवेंट में, सही कह रहे हैं। फटाफट फटाफट। अरे मेरे पास है रिकॉइल। मेरे पे भी है। वहाँ से प्लेन फाइट लेनी है। Don't give up. तेरे को फाइट लेनी है। रिकॉल देके Can still recall you. ये लेके जा, ये लेके जा। ये लेके छी भाई। मोड़ो लेफ्ट, मोड़ो पूरा। कहाँ जा रहे हो? किधर? बंदे जा रहे हो देख। ये ले, बंदे जा रहे हैं। ले इससे लड़ने जा, जा इससे लड़ने जा। अरे छोड़ छोड़ मारेंगे इसको। इधर है ना सेवरनी में। सेवरनी में क्यों? इवेंट में लूट लेंगे। अबे लूट लेंगे ये लोग। इवेंट में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? रहेगा रहेगा, ऐसे कैसे नहीं रहेगा। अभी हमारा पीला रिकॉल भी बचा है भाई, पीला भी बचा है अपना। भाई तुम पूरा लेफ्ट से मोड़ के सीधे सेंटर जा सकते हो। हाँ तो अभी भी तो जा सकता हूँ। ये गाड़ी स्लिप हो रही है भाई। तुमको रिकॉल चाहिए कि क्या चाहिए? चलो कैसा लगा? चलो भाई हम फाइट लेके आ रहे हैं। चल कारियो आजा। बाहर आ। तुम लोग पीले रिकॉल में ही रुको, अभी जोन है यहीं पे, बंदे आएंगे। तुम गोली फायर करके बंदों को यहीं बुलाओ, ऐसे बुलाओ यहीं पे। Marked a vehicle. बग्गी पहले मैं अपनी पेटी लूटूंगा कारियो। पेटी में पेटी बन जाएगी अपनी। उधर ही बंदे पहाड़ पे। उधर ही बंदे तो रुक, मैं बाइक लेके जाके लूट के आता हूँ। थोड़े राइट में चले गए होंगे भाई, अब तक तो चले गए होंगे। ये 5 जन हो गए। कौन रुकता है इतनी देर? 5 जन हो गए। बस फटाक से पेटी लूटूंगा, फटाक से। ले कारियो तू इधर रुक, मैं देख के। रुक 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 रुक। अरे मारो मारो। अरे तो वहाँ है ना, यहाँ थोड़ी ना है। तुम पे आए क्या क्रेजी भाई? पता नहीं किधर गए। आगे गए आई गेस। ये रे आगे बंदे। इस वाले पीछे वाले कंपाउंड। फटाक से लूट लो। चले इनके पास ही जाते। अरे चल 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 दिख रहा है सामने दिख रहा है। चल 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 लूट लिया मैंने। चल चल निकल निकल निकल।
उन्हीं के अरे पीला दिख रिकॉल रहा है अपना मेरे को। बर्बाद हो रुक रुक जाएगा। रुक, मेरे पे मत आ, मेरे पे मत आ। नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। ये पेटी में है। अरे तेल खत्म गाड़ी में, बहुत बढ़िया। 6 बंदे हो गए। अरे अभी 2 गाड़ी चलाते ही बैठे, कौन है तो? लोग पुश आ रहे हैं मेरे पे। अरे भैंस की हो रही। अरे लौड़ा रुद्रा। अरे अरे P90 वाले हैं। सेफ हूँ मैं सेफ हूँ। मेरी फर्स्ट एड ले गए जाके। सेफ हूँ, गाड़ी हूँ, पकड़ ले। कम हुए ऐसे आएगा जी भाई, पूरा रीच है भाई आराम से। अरे अरे भैया भाई रिकॉल देने जाना पड़ेगा किसी को। 1 मिनट, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। कारियो को बोलो। कारियो पे भी बंदे हैं। कारियो एक काम कर, नॉक गाड़ी है, फिर रिकॉल दे दे। हम पे गाड़ी छोड़ी ना है। गाड़ी बतख वाली ढूंढो ना, एंट्रेंस पे होगी। 40 सेकंड यहाँ पे कॉल दे सकते हैं क्या अभी भी? इधर नहीं मिलेगा। अरे चल जल्दी गिव अप मारो। जल्दी गिव अप, कारियो रिकॉल। क्या बे, क्या कर रहा है? एक गेम नहीं खेलने दे रहा है। एक अरे लाइव यार नहीं खेलने क्या दे है? रहा है। अपार्ट में गए बंदे, गए, एक ही बचा है बंदा। गए, अरे यहीं बंदे यहीं अपार्ट में 25 वहाँ पे बंदा है, 25 लेजिट सेकंड। लेजिट वहाँ पे बंदा था अभी मैं जब लास्ट टाइम देखा तो। तुम किधर किधर किधर? आगे साइड जिधर तुम गए अभी। तू यहीं रुकियो, मैं फटाक से। अबे 15 सेकंड है, क्या मजे ले रहा है चौधरी? 13 सेकंड गया। अबे हाथ से हटा। I'm recalling a teammate. चलो 5 सेकंड में होता है। Thanks. 5 आना साथ में आना। गाड़ी है। चल एक काम कर। कम हो गए बंदे। कहाँ कैम मार रहे हैं? आओ ना साथ में। गया वो भी। रिकॉल गए होंगे पक्का। आ कारियो बैठ, उसे छोड़ दे। रुक, पहले वाईफाई स्विच करने दे मेरे को। बैठ के करना गाड़ी में। चल करो। चलो हम भी कैनन से चलते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। हीलिंग मिल गया ना, इसलिए हीलिंग चलो। मेरे पास स्कोप नहीं है। हाँ यही पता था मेरे को, रिकॉल पे है। गाड़ियाँ तो लगी हैं। अबे जिसमें तेल नहीं है वो गाड़ी लेके बैठ रहा है दोनों से। अबे M4 वो निकल गए। भाई क्या चलाना पड़ रहा है। अबे और उठा फिर। चल लूटा नहीं क्या? चल सारे हाले पेट्रोल तुम मैं लोग के साथ पहले पैदा हुआ नहीं आता ना। अबे यहाँ भी लूट मिलती है। चलना अभी। अबे लूट मिलती है, रुक जा। कुछ गोली नहीं है यहाँ पे इन तो। अरे गोली में क्या करेगा जब मार ही नहीं पाएगा। क्या बोल रहा है? दोस्त है ना। बस इसलिए छूटे। और अगर बंदी होती? और अगर बंदी होती तो? पेल दिया होता अभी तक। कौन कैंपर स्नेक भाई? मारा हो। क्या कह रहे हैं क्या? भाई क्या पता किसको तो मारा रहूंगा। लास्ट मैच बोलता है बेस्ट कैंपर स्नेक ऑफ द ईयर बोलता है। ओह तेरा नेट थोड़ा Marked a location. ला मेरे को दे दो। ये देखो 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 भैंसी क्या चला रही है। बत्तख ठोक इनका बत्तख भैंस। उड़ना भैंस की उड़ाओ ना इसे। पंख काहे को दिए? बत्तख कब से उड़ने लग गया? उड़ता नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, थोड़े टाइम के लिए उड़ता है भाई। Marked a location. प्रॉपर नहीं उड़ता ना। ले ले रिवर्स, ले ले रिवर्स भी अच्छा है इसकी स्पीड। हाँ देख 60 की स्पीड जाती है रिवर्स भैंस की।
यार रुको थोड़ा पेटी लूटे। लूट लो ना इसकी। अरे तुम तो लुटेरे लोगों को, हमको भी तो कुछ कुछ नहीं है, दो। छोड़ो चलो, कुछ नहीं है। चलो भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अरे हमारे बंदे लिए कम बहुत हो कुछ रहे है। हैं, बंदे कम हो रहे हैं किल्स लेने। हाँ वो बात भी ठीक है। चिकन निकालना है, 3 चिकन। 3 चिकन ट्रिपल चिकन यूसी मिल रहा है। आ जाओ आ जाओ। चिकन वो 2 घंटे के लिए आया था भाई, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए था। क्या 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 चीज है? 11 बजे तक ही के था। लिए एक इवेंट आया था जिसमें 500 से 9 से 600 11 यूसी हाँ दे रहे थे। कब दे रहे थे? दे रहे हैं चिकन निकालने से। नहीं खत्म हो गया इवेंट, 2 घंटे का था। ट्यूसडे तक है। हाँ नहीं रे मेरे हिसाब से तो खत्म। अरे और मतलब पहले 50 लोग हैं भाई। सुन मेरी बात, पहले 50 लोग 3 चिकन जब वो इवेंट आया था तब ले लेते तो उनको भैंस की 600-900 यूसी मिल जाती परमानेंट। लौड़े दिन लिखा है उधर दिन मेरे और सबको नहीं मिलेगी, सबको थोड़ी ना मिलेगी। पहले 50 लोगों को मिलेगी, पहले 50 लोग भाई, पहले 50 लोग अगर हाँ उसको यही रुकता है। चलो भाई हीलिंग नहीं बनेगा तो डैमेज और करा ले। चल कारियो अपनी पेटी लूट के आते हैं। वाह ब्रेक क्यों नहीं लग रही इसकी? फेल क्या? चला गाड़ी चला। हाँ दे तो सही। चल पीपी है यहाँ पे, आना है? हाँ दे 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 M4 फेंकूंगा। आ जाओ। और पीछे से तेल ही भरा लिया था हमने। अरे अपना ही है, मजे ले रहा है वो रेजी भाई थे। हैं? बंदे कहाँ है? सप्रेस कारल कौन चला रहा है? डिपी किधर है? पीपी है, डीपी नहीं बोला। हाँ पीपी दे दे भाई, कुछ भी दे दे। M4 फेंकनी मैंने भाई। पीछे आओ पीछे आओ। वाह मैंने अपना उड़ने का फेंक दिया पिस्टल के चक्कर में। अबे किससे बातें कर रहा है? फटाफट आओ। अरे अंदर आओ। आया रेड डॉट उठा रहा था। भालू किधर गया? आलू खाने गया क्या? ये ले तू, ये ले ले, ये ले 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 ये ले 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 कर रहा है। आ गया मजा, स्वाद आ गया लूट के। ठीक है ठीक है। उसमें भी अपनी 3 है। ये तू मेरे जब मैं सामने मिलूं ना तेरे को तब बोलियो ये चीज। ठीक है। अरे क्या कौन सी बॉडी बना रखी है क्या? नहीं भाई पूछ कार्यों से। तो फिर किस बात का घमंड है? तो है। तेल पे नहीं चलाऊंगा तो किस पे चलाऊंगा बता? ओहो अबे कहाँ गए सारे बंदे? I got supplies. ओरे भैया नाच चाले। ना नाचता हूँ ले। ये तू नहीं नाचेगा साथ में? आजा तू भी तो नाच। रोज़ोक से आ रहे होंगे दोनों नाचेंगे। आजा रोज़ोक से आ रहे होंगे बंदे। नाचना नाच। ये नाच ये तू भी नाच। मुझे ऐसा लग रहा है डीजे पे नाच रहे हो जैसे। अब बंदे पे फोकस कर लो, कहीं तो है। अबे एटेक्स पड़ा है यहाँ पे भाई। एटेक्स वाली बंदूक है किसी पे? गलती से हो किसी पे। ओके पहाड़ी पे बंदा स्पॉट हुआ। आगे बंदे। मैं तो पहाड़ी पे ही मटा कर रहा हूँ। हेड लगा। कहाँ मार रहा है? एक एचपी है, एक एचपी जस्ट।
ये देख रोजा हिल पे ही मारा मैं, Marked a डैमेज दिया। location. बर्स्ट स्प्रे दूं क्या? अरे भैंस की उरे उरे ले। मैंने तो बहुत गंदा गेम चल रहा पकड़ना पकड़ना, डैम पकड़े पकड़े, सेफ हूं मैं। इधर आना करी हूं, है ना अच्छी जगह। कुछ है पड़ेगी बैंड सारे सामने के। नहीं पड़ेगी। ओ उड़ के देख कहाँ जा रहा है, इधर को आया, उड़ के इधर को आया। अरे मार कैसे करूं, इधर को आया, Watch इधर को, out. इधर को देखो, देख देख रहा देख रहा, देख कैसे देख रहा है। ये क्या कर गया? लो भाई रिवाइव लो। और क्या कर रहे हो? पट्टी है रगड़ने को, फर्स्ट एड तक नहीं है। फर्स्ट एड ये ले। देखो मेडिकेट ला। अरे क्या बात है, धन्यवाद। अबे दो अटैक्स, क्या हेड मार रहा हूं। दो अटैक्स पड़े भाई। अटैक्स की गाने क्या? नहीं है ना, यहाँ देखा था मैंने लास्ट एक बंदा। जोन तो अपन पे ही है रे। भाई अटैक सिंगल टैप मारो ना भाई। Marked a location. भाई सही 400 में तुमने दी, मस्त प्ले जा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ। और ये और लगा ले, देख ये लगा I ले, got supplies. ये लगा ले I और got ये लगा ले, supplies. स्वाद आ जाएगा। अरे हमें जोन जाना है, उन्हें भी जोन आना है। जोन कैप्चर करो सबसे पहले। करो 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 बे। भाई एक किल पे चिकन होगा यार। सामने रीच कैप्चर करो आप। ये वाली रीच कैप्चर हो जाए। अबे कारियो, इसको रिवाइव कौन देगा? देखो दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। 40 सेकंड है कारियो, नीचे आ। नीचे भी नहीं यार। क्रेजी भाई मेरे पास हो एक बार। कोई भी नहीं है मेरे साथ। जल्दी क्या सुन, गाड़ी में लगा के बैठ के पट्टी लगाइयो। अबे क्या कर रहा है, गाड़ी में पट्टी लगाइयो, जल्दी बैठियो। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर। अबे नॉक है। अबे भाई 20 सेकंड बचे यार। सुन गाड़ी में बैठ के पट्टी लगाइयो, जल्दी बता। अरे हट। अरे यार भाई चोक कर चल 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 आओ क्रेजी भाई आओ, वो बहुत दूर है। आगे बंदे। अरे इधर है, उधर ही उधर ही। चल आगे बंदे। लगा पट्टी। जाओ मारो, पहले इससे मारो। ये रहा आगे बंदे। हट यार। दे दिया रे, दे दिया। कैसा मार गया रे मेरे को। मार जल्दी ले। रुद्रा आओ। ले तो रहा हूँ, बंदा आ गया। आगे बंदे। अबे ये देख, ये लो भैया, ये अरे गांडू उधर गाड़ी चलाने आते क्या? बंदी के तो और बंदा आ गए, पीछे भी आ गए भाई। गाड़ी भी नहीं चलाने आती उधर। करने दिया ना, वो बड़ी बात है भाई। बाकी सब ठीक। तुम हमारे पे आते ना, आराम से बच। यार रिस्टार्ट मार के इसको रिवाइव दे रहे यार, गलत टाइम करना हुआ। थोड़ा रुका करो रे। अरे हमारे साथ आते, बढ़िया एंगल था मेरे पे तो। एंगल बढ़िया था, पर इसको उठाने गया ना मैं कार्यों को। मैं आ ही रहा था तेरे से। नहीं फ्रेंड्स अपने। क्या रहेगा तुमको? आ रहे क्या सक्षम तो बोल। टुकले लेजेंड भाई तो जा रहे। बोल दो तो रोक दे, रुकवा दे। प्लस देखने में हमको चाहिए 50 का प्लस और चाहिए। 50 का क्राउन एस लगा के जाऊंगा आज। क्या बात है। आउटफिट बढ़िया लग रहा है ना। इसका हेलमेट हटा।
क्यों? मेरे को हेलमेट हटा। हाँ, चश्मा वश्मा लगा ले, चश्मा वश्मा मास्क वास्क कुछ लगा ले, लगाना है तो। फिर उसके बाद गेम में हाँ गेम में भी, हाँ यही गेम में भी रहेगा वो क्या कहते हैं, हेलमेट के साथ मास्क। अबे बिना वो कुछ ज्यादा बड़ा हेड गियर लग रहा है इसका, दिक्कत देगा। नहीं लगेगा गेम में। अच्छा समझ गया। तो एम में थोड़ा नहीं, रिस्टार्ट देखो मेरे को दो ऑप्शन बताओ, एक ये है, एक अपने पे ये, सक्षम और एक ये बाल ठीक थे। एक सेकंड में उसको पूछ कर पहले वाले बाल कर रहे तब तक, ठीक है? ये ठीक है अपन भाई यही वाला मास्क ना तू बाल हटा के लगा के देख, मजा आ जाएगा भाई। यही मास्क बाल हटा के, ये नहीं इससे पहले वाला काला काला वाला। हाँ बस भाई, मजेदार मैचिंग। पर मजा नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत आ रहा है भाई, क्या बताऊं, स्वाद भाई, बाल के साथ भी ठीक। Just now. कल क्या हका था भाई, चिकन हका था लिटरली रुद्र ने। कल से लगेंगे यार बस 90। और अभी अपने को इसमें 2 छुट्टी मिलेगी, टेंशन मत ले, 2 से 3 टेंशन मत ले। काय के लिए वो तो को बोल रहा था ना 25 का वगैरह वगैरह मिल जाएगा शायद, क्योंकि अपना पीक नहीं है ना तो दे देगा। 25 अरे HITL में डालने वाले अभी उधर ट्रेनिंग ये होने वाला है। तो भी कितना ट्रेनिंग चलेगा, 3 वीक हो गया, दिसंबर में 3 वीक खत्म हो गया तो क्या आता है, 14 दिन इधर गैप कर क्या ही कितना ही रे। अरे कल फ्राइडे को ना 6 जन नहीं हो गया, 6 जन ने रिजाइन। क्या 6 जन को रिजाइन दे दिया? हाँ HITL। हाँ उन लोगों को बोल रहा था ना जिसको जाने का जाओ करके बोल दिया। सब कुछ HITL में से क्या? अरे लोड़े Marked a location. 6 जन को ले आओ। मैं भी जाऊँ कि नहीं? क्यों जा रहा है? मुझे तो मजा आएगा। जल्दी चल बंदे। अरे चलो, कहाँ जा रहे हैं? अबे गवार है क्या? गवार है भाई, लिटरली बता रहा हूँ भाई, गवार है ये। अरे निकलो, गाड़ी स्कारल वाले हाथ में। अरे वो बग्गी वाले ले, बग्गी चक्कू मार तो जल्दी ले। अरे लोडू रुद्र इसकी गांव गाड़ी भी नहीं चलाने आती इसको, जल्दी ले। माइक ऑन करके मुंह खोलेगा।
भगाओ फटाओ। अब मैं माइक बंद करके बड़बड़ा रहा हूँ। चूतिया एक नंबर का लो चले गए वो लोग। लो 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 नहीं स्प्रे गए पड़ नहीं रहा। गए, यहीं पे ही है अभी। लौड़ा पहुंच गए। आने दो, हम तो जा रहे 250 की रफ्तार से। तो की बस स्लो नहीं होनी चाहिए। पहुंच गए वो लोग। कभी कम मुंह पे मत रोकना ना। हाँ घुस गए मेन बिल्डिंग में। राइट लो आगे बढ़, राइट लो राइट लो। राइट ले लौड़े। ले रहा हूँ ना, स्किट मार के लूंगा ऐसे थोड़ी ना। पूरा नीचे ले लो। मेरे को ही मारा उसने। चल के जाना पड़ेगा मैं, जो इतने नहीं होगा गाड़ी। लोफ पोश आ गया मेरे। अब भाई अंदर कब्जा निकालना पड़ेगा भाई। हट यार। क्या कर रहा है लेजिट, रुक जा यार थोड़ा। पोश मैं रुका, वो आए। आ गए तेरे पे। वो और क्या। अरे दादा, हीलिंग्स भी नहीं मिली अभी तक मेरे को। किधर है किधर? अबे मारा किधर? अरे इसको उधर ही। मेरी पेटी बनी है। तीस सेकंड बाद खोल देंगे ये लोग कमीने यार। तो तुम जाओ रश करो सेंटर। अरे हीलिंग यार, रुक तो, अब जाके एक फर्स्ट एड मिली मेरे को। छी भाई बच गया हो कैसे। बैठे पड़े बहन के लौड़े। अरे भाई एक ने बेट बनाया, एक ने बेट बनाया भाई। जी भाई लिटरली पीछे आ बैठे रहा हूँ, पड़े भाई। सेफ हूँ, टेंशन मतलब पीछे आ जा। क्रेजी भाई घूम के आ सकते हो रोड पार करके, मतलब रोड पार। आ सकते हो क्या भाई? क्रेजी भाई पीछे से घूम के आओ ना, उड़ के आ जाओ। एक मिनट वही कर रहा हूँ। मछली मार रहा हूँ, रुक इधर आ। अरे नहीं, अरे भाई क्या रेंग के आए भाई। रुक मछली मारता हूँ। अरे नहीं हो गया रिवाइव 7 सेकंड बाद। अरे दादा, अरे दादा इतना सेकंड वेस्ट। वो इतने में भाई उसको खोल देंगे। खोल दिया लाउडो लोग ने। खोल दिया उन्होंने, खोल दिया मेन। लोकेशन आएगा थोड़ा ये करके रहो, लोकेशन चेंज करते रहना 2-3 मिनट में। एक जगह खड़े रहेंगे ना तो फिर वो हैंडल होगा, इजी होगा। हाँ करेंगे उंगली। आ जाओगे तुम पे आज? अरे भाई पीछे आ, पीछे आ। कहाँ से पड़ी पीछे आने को? तू चूते आ रहे उधर बहनचोद, क्यों गांड मारा रहा उधर? मैं कहा तू पहले बेचो ना हो गया उधर, तू पूरा घुस गया, अंदर घुस गया था। मैं बढ़िया पूरा डाल दो। मैं पूरा ऊपर चढ़ गया था भाई, प्लानिंग कर दिया था मारने का, बम बम खींच के। भाई पीछे आना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ ना। अरे सामने से क्यों आ रहे हो? मरने दे उसको। तुम फाइट लो। अरे तुम फाइट लो क्रेजी भाई, मत दो रिवाइव। मैं दे दिया लो फाइट। उनको मारा है मैंने, एक को नॉक दे दिया। फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड होगी भाई। मैं कहाँ पे हूँ? मैं किधर हूँ ये बताओ। हमारे पीछे वाले घर पे आ सकता है। गाड़ी भी नहीं है। फॉल बैक करना पड़ेगा, फॉल बैक करना पड़ेगा भाई। सेंटर क्या है? सेंटर में क्या है? सेंटर में है बंदे पर। हाँ चलो ठीक। फॉल बैक करो भाई, फॉल बैक करो पहले अभी। गाड़ी लेके इधर हमारी लोकेशन पता है क्रेजी भाई, फॉल बैक करो। गाड़ी लेके इधर लोकेशन पता है। कहाँ पे हो? कहीं भी घुमाओ, मैं पट्टी कर रहा हूँ। अरे अरे ये कहाँ से आया? ये क्या है? कैंपर है भाई, ये रहा दूसरा। अरे दादा क्या कैंप? मैं मैप खोल के देख रहा हूँ। कमरे में क्या बैठा है तब से? भाई 2-3 जने। अरे यार मैं डर के मारे तो पीछे गया। नहीं बे, तेरा माइक से कितना आवाज आ रहा है? अरे क्या आवाज आ रहा है? एक सेकंड। किसको? किसकी आवाज?
दूसरा इवेंट चले तो आ जा रहा है। पता नहीं। अरे कारियो तो उधर बैठा है वैसे ही पाकिस्तान में। तो उसको रिकॉल दे देंगे। गाड़ी लेके आ जाना कारियो। I'm recalling a teammate. अच्छा रिकॉल दे रहा है। Thanks. कहाँ चलना है फिर बताओ। इवेंट चेक कर लो तुम, वो दूसरा वाला कोई है तो ये बताओ। छोटा वाला? हाँ ये बताएं बड़ा ना वाला। कारियो। बड़ा वाला। बड़ा वाला तू नहीं आएगा? आ रहा हूँ ना मैं, पता हूँ मैं आ रहा हूँ। जो भी हो चीज हो गया, क्या हो गया कि देखते हैं। कैसा है? सब बढ़िया से एकदम मस्त। पूरा तो बढ़ ले भाई यार है। कुछ इवेंट है तो बता भाई, सैटरडे संडे कुछ है काम तो बता है। पहले एक गाड़ी छापते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। अरे बंदा कूद रहा है देख पेट्रोल पंप पे। कहाँ? पूरा छत पे है। पहले ए मां चोद दिया। और ले ऊपर में खुदा है। ले ऊपर में ले। मारो मारो। रुक ऊपर से भी मार रहा है। रुको ऊपर पहाड़ी पे लेता हूँ। की आग। अरे भाई वो इवेंट जा रहा है। अरे मेरे को तो लेके जाओ दूसरा अजीत। और एक खुद रहा है। हाँ आया। अरे एक बंदा मेरे को मार रहा था, वो उंगली कर रहा था अरे मैं उसको उसको जरा थोड़ा। मारने के लिए यहाँ पे उतरा कि मैं वहां से दूर से मारूंगा तो यहाँ पे लेके आएगा। अरे नहीं आया ना, भाग गया वो कमीना। मैंने कुछ फायदा नहीं अभी। चल 3 बंदे। हाँ Marked a location. भाई ये क्या फोड़ेंगे? अरे क्या तुम हम जाओगे, उनको? एक काम करो तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं यहाँ से मारता हूँ। मैं पूरा डिस्टेंस मार दूंगा। एक मॉन्स्टर ट्रक वाले पे चलूंगा, वो अकेला ही तो है। रिकॉल है ना? तो रिकॉल है वैसे। अरे यार चल इन पे चल। मैं उसको ही मारने हाथ के लिए में मैं तेरे लिए उधर उतरा था कि मैं ऊपर से हाइट से मार दूंगा। चलो बैठो। समझा क्या हो रहा है भाई। कितने बंदे हैं रुद्र? यहाँ कितने बंदे? वही देख रहा हूँ। 2 ही हैं, 2 4। अरे 2 ही लोग हैं। 2 ही हैं। चलो आ जाओ। चलो रिकॉल डालो। मेन इवेंट जा रहे हैं। बीच में से डालेगा तो पिछले हाँ रिकॉल जब डालोगे तो बताना। डालने का ही सोच रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। कर रखा है, नाम कर रखी है प्रॉपर्टी। तो 2 रिकॉल कार्ड होंगे। रिकॉल कार्ड वो देख रहा हूँ, नहीं है। ये दोनों लोग कर क्या रहे हैं वैसी बार? बॉट फायर स्कैम। छत पे हैं दोनों, छत पे ध्यान रखना। मैं आ रहा हूँ तब तक होल्ड कर। मैं आ रहा हूँ तब तक होल्ड कर। ये गाड़ी ले लेफ्ट वाली। अरे हमको नूब कोई ना समझे पहुंच हैं। 1v3 हो गया। क्या गाड़ी है बे? सीधा जनवरी। मैं टीवीपी लेके बैठा हूँ, उस पे रश कर रहे हैं। इवेंट में कहाँ बुलाऊं? अभी सीधा जनवरी चलेगा। जनवरी में जो भी इवेंट रहेगा मेरे को पहले ही इन्फॉर्म कर दे भाई। मैं वैसा सब कुछ प्रिपेयर हो भाई, क्योंकि मैं लास्ट इवेंट तो तेरा कैंसिल हो गया था। मैं मानता रहे वो कैंसिल होने वाला है, ऐसा सीन था। मान मैं तेरे को तो अभी कैसा बताऊँ मैं तो, कैसे मानू पड़ा वो चीज़। इनसाइडर था थोड़ा, मेरे को पता था, इसलिए मैं तभी कुछ बोला नहीं था। अब आए हैं वैसे अपने लोग। जब सार पता है यहाँ क्या हुआ है, कितनी गोलियां चल गई यहाँ पे। बस आ गए ना। कितनी गोलियां चल गई, लाशें बिछ गई वैसी। अब आ रहे हो, आओ नाच लें। नहीं नाचूंगा। कुछ गनवन नहीं है? MG3 P90 ऐसा कुछ? AMR
एम और कौन चलाता है? ले नाच लिया। ले 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 10 गोली 10 गोली पड़ी है। एक बंदा बड़ा। तो लूटना क्यों रुक जाता है भाई, लूटते भी रहना, मजा आती है। बंदा उसके लिए मारा ही नहीं था। रियल बंदा है, मेरे को साउंड आ रहा हाँ बदला लेने आए हो, बदला लेने आए हैं, पक्का बदला लेने आए हैं वो। नहीं बॉट है ये, बॉट है। इसको नचा। इसको बच्चा अबे इसको नचा। मार, सुई मार। हाँ ले नाच ले डाल, मार नचवा दे। चले पॉइंट चाहिए क्या? हाँ मेरे को रेड डॉट चाहिए। और एक बोला रेड डॉट नहीं है। चलो जाते मरने के, रिकॉल तो ऐसे भी खत्म हो गया। मरने मारने बोला भाई, बोला तो शुभ शुभ करो। अच्छा अरे यार भाई एक रेड डॉट नहीं है। वाव वाव कहीं साथ की एमो पड़ी? मेरे से हाँ ले जी डॉट है। साथ की एमो तेरी मक्खियार की पूजा करनी है। अरे वाह रेड डॉट तो फ्री में आ गया, पर यार एमो नहीं है। साथ की एमो है कहीं पे? अबे यहाँ जंगल मैग पड़ा है, जंगल मैग और फ्लेयर पड़ी है भाई। भाई तुम ये पहले नहीं बोल सकते, अभी जस्ट मैंने खरीदा। अरे मुझे क्या पता यहाँ मिल रहा। फ्लेयर पड़ी है भाई, फ्लेयर मार दूं क्या? मारो, आउट ऑफ जोन जाएगा। या अभी मत मारो। अरे फिर मैं उड़ने का कैसे लूंगा यार? फ्लेयर रख लूं तो उड़ने वाली वेपन कैसे लूंगा? लाओ मेरे को दो। तू उड़ नहीं पाएगा, फिर तू उड़ नहीं पाएगा। कोई ना। अबे एमो तो ले ले, उड़ने का वेपन तो चाहिए भाई। बिठाओ तो सही, खिले जाओगे क्या? साथ की एमो तो नहीं है। अबे यार गांडू गाड़ी है गाड़ी खराब नहीं है, ड्राइवर खराब है। ये चलती गाड़ी है, इधर बग भी नहीं थी गाड़ी। और मेरे को कौन लेके जाएगा? और ये बात, अरे भाई अपने भाई तो रह गए। रुको ब्रेक लगाओ। पेट्रोल पंप क्या? पेट्रोल पंप में कहाँ बैठा हूँ? अरे लेजिट पेट्रोल कहाँ पंप। बैठा हूँ? और तुम भी आओ रे पेट्रोल पंप, पेट्रोल भराओ पहले। अभी भी बोलो एक पेट्रोल पंप खोल लो, अच्छी इनकम होगी तुम्हारी। गेम में कुछ नहीं। गाड़ी फोड़े से, फोड़ो इसे। फोड़ो। अरे एमो ज्यादा है नहीं, 50 ही एमो है। अबे इतना दूर निकलेगा वो। ठीक है तुम चलो, मैं फोड़ूंगा। फोड़ देगा ना, अभी पेट्रोल भर रहा है भाई। 140 एमो है। अरे निकाल के एमो नहीं, नंबर आ रहे हैं अभी। चलो कहाँ गया? तो यहाँ शॉर्टकट से लो। There's an ambush. Play it safe. ये तो देख ले डब्बा, डब्बा फेंका उसने। कुछ नहीं फेंका, चलो। अरे फेंका था वो। और खा रहे हो क्या उधर? फाइट हो रहा है इधर। अरे डब्बा तो चल फूट गया। माल अच्छा दिखेगा। अरे अपन के पास प्लेयर भी तो है। माल अच्छा दिखेगा। 7 फर्स्ट एड हो गई, 7 P90 के एमो है। कौन चला रहे P90? लो
7 फर्स्ट एड में से किसी को फर्स्ट एड चाहिए? P90 की एमो है इधर है, उठा लेना भाई लोग। मैं यहाँ 3 फर्स्ट एड फेंक रहा हूँ मैं इसकी। बढ़िए। अबे यहाँ अबे सुई हुई पड़ी है, सुई चाहिए, सुई फर्स्ट एड है, बैठाओ तो सही है कभी। अबे सुई गाड़ी पड़ी है वही। ठीक है चल आ जाऊंगा फिर मैं। ए फ्लेयर मार दी किसी ने तो, मार मार साले को। अपने ही बंदे ने मारी भाई। मार साले को। अपने ही सांप है। फ्रेंडली फायर था यहाँ पे। अरे एक बार वो शॉप मंगाना। शॉप ग्रिप चाहिए मेरे को, एक ग्रिप निकालो उसमें से कोई जिसमें बैट की ग्रिप निकाल फटाफट रुद्रा। महंगी? आ रहा हूँ 44 कॉइन है मेरे पे। बैट की ग्रिप निकाल, बैट की ग्रिप। चलो मिल गया। सस्ती वाली शॉप से निकालूं या इससे खरीदना है? अरे अभी फ्लेयर आएगा, बीआरटीएम आएगा। फ्लेयर है, फ्लेयर है। इसको कुछ चाहिए क्या, खरीदना है? Marked a location. के ऊपर बेटा? अरे कहीं बंदे दूर रुक जाए, स्नैपिंग करूंगा आज। तेरा गाड़ी में खराब है। अरे कुछ चाहिए? अरे भाई गाड़ी आ रही है सामने से, देख। किधर है? सामने से दिखी थी मेरे को। क्या बात कर रहा है, क्यों डरा रहा है? वोरी आगे बंदे, वो देख मार्क लगाया, वो देख मार्क लगाया। घर पे रुकी है क्या? वो ये रही पूरी रोटेट मारती है। आगे बंदे। तो जोन में चलते हैं ना, जोन में चलते हैं, जोन में ही फाइट लेंगे। बराबर है। 2 बंदे हैं, ये पत्थर के पीछे है। मार्क लगाया। अब वो पूरे यहाँ पत्थर पे आ जाएंगे। अपनी गाड़ियां तो सेव कर लेते हैं। P90 कैमो, P90 कैमो। आ जाओ भाई। वो देख ड्रॉप। कहाँ से? ये ड्रॉप। क्रेजी भाई ले लो कैमो। क्रेजी भाई आ जाओ। तो क्रेजी भाई यार इधर रश डाल दे, रश डाल दे, रश डाल दे। डालो 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 डालो, पूरा आराम से डालो, अभी तक रिवाइव भी हो। अरे ऊपर वाला लेगा। रुद्र तेरे को बचाने के लिए मैं इतना Awesome. गया मन में, मैं तो फुल सेफ था। हाँ मैं देखा भाई उसको, मैं खुद बचने के लिए कवर में आया पर उधर से पकड़ ही लिया। ऊपर वाले को मैंने पकड़ लिया। काले ने कहाँ से मारा ये? पूरे 3-4 थे भाई। देख लूट इसका काम। तुम्हारी शहीद हुई, तुम ही शहीद हुए। हाँ क्या यार, वही चिप्स का पैकेट निकाल लो, कल वाली लाइन। अरे बढ़िया सी। चल बैठ बैठ। सबसे बढ़िया भैंस की टीडीएम खेलता हूँ, कुछ हाथ तो सेट होगा। नहीं अरे वो सेट हाथ तो गर्म होगा। चिकन चिप्स पॉपकॉर्न जो है लेके बैठो। ओ गेम प्ले का चिकन चीज पॉपकॉर्न, चीज नहीं है, चिकन चीज है भाई साहब। बस सब तो उसके लिए तो कढ़ाई गरम करनी पड़ेगी भाई। कढ़ाई गरम करो, गरम तेल में आईपैड डाल दे। बैठ जाऊंगे मैं ही। पंद्रह बंदे हैं, मजे मत ले। ज्यादा इवेंट देख के इवेंट में बंदे पता लग जाते हैं।
बंदे हो तो निकल लेना, ना हो तो लड़ना भैंस। वही तो। बग्गी जा रही, बग्गी आ जा रही। अबे तू हील कर पहले। आ जा रही। कहाँ जा रही? पुश मारो पहले सारे। मेरे पे। अरे बंदे मेरे सामने कोने में है। जस्ट आगे बंदे। उड़ के ऊपर जा, उड़ के ऊपर जा। अबे उड़ के ऊपर जा, उड़ के ऊपर जा। क्रेजी भाई गलत जगह पे। क्या आईक्यू लगा है? निकलो क्रेजी भाई, निकलो 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 निकलो। मुंह पे क्यों घुमा रहे हो? रिवर्स लेते। अरे गलत गलत। अरे मार दे। तुमको रिवर्स रिवर्स ही लेने का है तब फ्रंट पे क्यों हुआ? मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है। पहले हील मार, पहले हील। अरे फिर भाग रहा है इधर उधर। रिलोड भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आ गया ले। ये कहाँ से आया? बहुत बंदे हैं, बहुत बंदे। 4 बंदे दिख रहे हैं, तू कह रहे बहुत बंदे हैं। ये देख, इतने माफिक मारेंगे इसको तो पूरा लूंगा। अरे ऊपर चढ़ जा। अरे ले लिया, पूरा लूंगा। ले लिया। क्या लिया वो तो नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत। चलो 2 बंदे तो खा गए, इसके 2 बंदे खा गए। मुझे लगा भाई इससे अच्छा तो 6 स्मोक था, मैं बस कर करके मारता रहता। गाड़ी का कवर भी था। मुझे एक बात बताओ, आगे का गेट कहाँ डाल दिया? पीछे का गेट डालना था ना। कोई तो नहीं समझ में आ रहा, मरा कि मैं आगे का क्यों डाला हूँ? प्रेत क्यों किया मैं जब पीछे जाना चाहता? चलो मैं जा रहा है। ठीक। इरशाद क्या हुआ? लेजिट चला गया काम उसको पावर पॉइंट पे। इसका पॉइंट तो बना है। वो नहीं आएगा ऐसा। क्यों? पहले पनौती लगा ले। वो कह रहा है 7000 पॉप मार दे आवेश को। है सो हम छोटे समय देखा जाएगा अभी क्या। ठीक है, ये भी ठीक। जल्दी के बारे में अब उसे दिख जाएगा ना। मैंने भी इवेंट्स लगभग सारी खरीद ली। अबे चिंत मोड़ क्यों लगा देने के लिए? बड़ी जल्दी आ गए इरशाद भाई। व्हाट्सएप ने देखा क्या? व्हाट्सएप देखा, कभी तो कहा है कि यस। व्हाट्सएप देखा नहीं, व्हाट्सएप देखो ना। अरे वो नहीं, व्हाट्सएप वो नहीं इरशाद भाई, वो यो ब्रो करके यो ब्रो करते हो क्या? क्या बोलते हो वो लाइन को?
ब्रो करके कौन सी लाइन बोलते हो जब आते जाते हैं, वो बोलो भैंस की। कौन सा? यस ब्रो। हाँ ये देख ये कॉपी कर दो मारियो। यस ब्रो। भाई साहब इंडिया वाइट किधर है? इंडिया वाइट है तो वो खेल रहा है उसके साथ दूसरी स्क्वाड में, मिस्टर एलेक्स के साथ है। दूसरे बंदे मिस्टर मैजिक मैजिक मिस्टर मैजिक। दोबारा बोलना भाई। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got the triple elimination medal. सब क्रेजी भाई यहाँ पूरा बड़ा वाला Let's fight together. Let's fight together. चलने लग गया। वो बड़ा वाला पंखा चलाते हैं हर बार में गेम जब चालू करते हैं। तेरे को काली आवाज करनी आ रही है। दूसरे वाले पर चलते हैं गाड़ी लेकर। दूसरे वाले पे? हाँ चलो वैसे यहाँ से उठाएंगे। चंदा मेरे चलो चंदा चंदा। यस ब्रो। कारियो गैराज से गाड़ी लाएगा क्या? चल छोड़ मत छोड़ हमारे साथ ही। यस ब्रो। कुछ नहीं बस आगे वाले रोड जब आएगी ना तब फैल जाएगा। यसु कब आ रहा है? यसु आ रहा है अभी 20-25 दिन है। फैल जाओ अब थोड़ा सा फैल जाओ। नीचे उठा लो, वीडियो का स्कूटर है। मेरे रुद्र बोल नहीं सकता था, अब बोलने लगा। वीडियो का स्कूटर कुछ अच्छा नहीं है, सकाराम ज्यादा अच्छा है। कोई नहीं वीडियो का स्कूटर ले चलते हैं। यस ब्रो। गाड़ी चलो मिल गई, मेरे को भी बाइक मिल गई। चलो 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 बिठाओ सबको भर्ती करो। अरे एक डासिया जा रही है, जल्दी करो। एक डासिया एक बग्गी जा रही है इवेंट पे। चल चले। मैं आगे अपने को गाड़ी ये मिल गया, गन मिला। ऊपर डायरेक्ट ठोकेगा तो भी चलेगा। मार भाई वो लोग कब्जा कर लेंगे। एक बग्गी और आई। क्या? अबे ये देखो क्या क्या जा रहे हैं। वो पानी में गया वो कबूतर ना कुछ क्या, वो क्या पानी में गया वो। देखो भाई इसका एमो उठा लो जरा। अरे सिंधिया जान की पिस्टल है इधर। चलो 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 कहाँ गए? अरे भैंस की तुम तो अपनी स्पेशल लूट मंगा रहे। आओ इरशाद भाई जल्दी आओ। चलो 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 चलो। पहले मिल गया रहता था ना।
पहुंच जाते हैं। अबे तेरे को भी कितनी ज्यादा लगता है सर। मतलब कम से कम 4 से 5 बंदे होंगे, मतलब 2 स्क्वाड तो होगी चलो, वहाँ। गन तो हाथ चाहिए। भैंस के तुमने दोनों छोड़ दे हो गया अंदर घुस गए साइड में। देखो आगे जाना पड़ेगा। खिड़की पर से चलते हैं, खिड़की पर से चलते हैं। खिड़की से अभी पहले भाई एक बंदूक तो लेने दो, तुम भैंस की दोनों बंदूक लेके चल रहे हो। अकेले मत जाओ इरशाद भाई। ओके, मेरे पास एक ही बंदूक है, उसमें भी 30 ही गोलियां हैं। मेरे पे भी यूएमपी होती मैं भी चौड़े में घुस रहा होता, पर नहीं है ना। अरे यार कुछ बैग दो ना यार, कितना चड्डी में सामान डाल। हाँ दो ना। Got supplies on me. क्या पड़ा इधर? एमओ वीएमपी दोनों है। हाँ बस मेरा काम हो गया। भाई मैं तो अंधा भी घुस जाओ अभी। सर चौड़े में मेरे पास क्या है मन में M249 अरे भाई साहब, लो M249 का सामान चाहिए तुमको? है पूरा लगा दिया। पूरा लगा दिया को, मैं भी जनरेटर खोल दिया उन्होंने। 14 ने खोल दिया। कम्युनो ने लोगों ने खोल दिया। तब भी मैं जाऊंगा। अब जा रहा हूँ, जो ना होगा होगा। अरे कारियो इरशाद यार, उधर ही सामने। Location marked. अरे भाग गाड़ी क्यों खाया मैंने जनरेटर देखने के बाद। अरे बम रिफ्लेक्स इतना अच्छा था। भाई मैं इधर ध्यान ही नहीं दे रहा था जिधर बंदा है इधर। हमसे पहले उनको गाड़ी मिल गई। उतर जा। रुद्र के पास चीटी वाला बंदा आया है। बंदा पोर्टल में दिख जाएगा। मिलिट्री बेस। अरे हाँ, रुद्र के पास सिटी और बंदा है। Help! बैठ गाड़ी में बैठ। यार एक ही को नॉक दे पाया। चले इवेंट पे जा। ये बंदा कहाँ जा रहा है उठ उठ कर? बंदे के पीछे मत जाओ, बहुत मारेगा वो। चल कारियो इवेंट जाग के आते हैं। गाड़ी है? हाँ ये इधर आया। क्या खतरनाक डैमेज पड़ा है। या छोटे वाले इवेंट पे चलते हैं ना, I need a छोटे वाले weapon. पे भी माल मिल जाता है। मार क्या करेंगे, किल था। अरे मेन वाले सी बिल्डिंग में बंदे हैं, शायद फायर आया। हाँ सी बिल्डिंग में शायद स्क्वाड है। अरे ये तो चिट्ठी वाली स्क्वाड लग रही है। चल 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 कारियो चल चल कारियो जल्दी चल। हो गया। एक बंदा क्या Don't give कर up. लिया। Your teammates can still recall you. चेक कर रहे हैं मेरे सामने। मार दिया। क्या है रुद्र यार, उधर भी नहीं जा रहे। क्या बोलूं भाई। इधर पे जा, तू भी मारेगा साले। अरे तो रिकॉल नहीं दूं? कौन मारेगा? अरे भाई मेरे को लग रहा है इसका बंदा होगा। नूब्स समझते हैं भाई।
ये क्या कर रहा है? मार मार, अरे भाई मार छोड़ मार क्यों अरे बोल अरे भाई, देखा जब तक तू अरे यार अग दिया भाई, मैंने को अग बोला दिया। जब तू ये कर रहा था ना, मैं मैं बोल तब रहा तुझे हूँ बोल दिया कि अंदर नहीं, वो बाहर क्यों गया उसका मजा आ बंदा। रहा है। अभी गिव अप कर दे, बाहर सही बोल रहा है, चाकू मारने से अच्छा सही है। सही कह रहे हैं। जी भाई, मेरे को भी गाड़ी से आभास। उतर के मरता ना तो भी ऐसा लगता था कि क्या मारा भाई, ऐसा गूंज ऐसा मारा तू, वो बाहर क्यों गया, मार के क्या खत्म कर, फिनिश अंदर तक। बस क्या कर यार, गलती हो गई है। वो खाना क्या सही में खा लिया भाई इधर तो मैंने। भाई ये तेरे को पता है क्या, ये CLSA वाला फाइल है, समझा तू। दिखने में अच्छा है बट भूखा क्या यार, बहुत गंदा है। उस दिन तो सिद्धोते आ रही थी बस, और वेंचर सब हग रहे उसमें। अरे नहीं रीसबमिट हाँ, वो पता है बहुत गंदा फाइल है वो, मेरे को I'm recalling a teammate. जबकि पहला मैं वही मारता था सबसे पहले, मेरे को आता है लेकिन मेरे को भार्गव ने एक रीसबमिट लिया, राहुल ने एक रीसबमिट लिया और मैंने एक रीसबमिट लिया, तीनों ने 3 लिया पता है। Got supplies on me. फिर उसके बाद उठाया नहीं मेरे भाई तो। चुपचाप ले रहे क्या, चुपचाप ले रहे भैंचोद। और मैं देखा Got supplies व्यू on me. क्या रे, 12वीं का भाई AKM पड़ा, AKM उड़ा लो। AKM चाहिए, AKM यहाँ पे AKM पड़ा है। एक्स्ट्रा हो तो क्यों नहीं। Got supplies on me. सबमिट मार देता। राहुल मेरे सामने फूल बन रहा है क्या, अरे ये ले, वो ले, ये ले, वो ले। Got supplies on me. करूंगा ले। इन्हें पेज लिया क्या तूने फर्स्ट पेज पे खुद भूल गया वाला। क्या बात, उनको नहीं समझा कि आउट ऑफ ऑफिस कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ वर्ड था भाई, तो कौन नहीं समझेगा, हमको भी समझता था वो। गोल्डन में स्टॉप चल रहे थे, मौत तो अब आने वाली है कल से। मौत तो कल से आने वाली है, अब तो गोल्डन पीरियड चला था अब तक। अबे क्या गोल्डन भाई, भाई एक बंदा निकला अभी यहाँ पे, क्या हो रहा है? कहाँ फंस जाता है बे? हाँ भाई चिल्लाया। ले इरशाद बोला ले पकड़ मेरा, होल्ड माय बियर। रुद्र शर्म कर, क्या इरशाद मार रहा है। रिकॉल करने बंदा उतरा रिकॉल करने। मार 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 मार। अरे भेड़ की, मेरे को पता ही नहीं रिकॉल पे बंदा है। बोला तो रिकॉल करने बंदा है। इधर है पीछे, इधर है पीछे। अबे बंदा उधर ही मारेगा रुद्र। अरे क्या पीछे मार 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 तो मार। वाटर स्प्रे आगा आगा। ये मार, चाकू से मार, मैं तो पूछता हूँ किसको मारूं? चाकू से मार तू। मर गया क्या? अबे स्किन देख रुद्रा, स्किन देखे क्या? इधर ही जिधर तू घुमा रहा है ना, उधर ही जिधर तू बंदा है। जैक के पीछे, जैक के बस मर गया, उसका बंदा है रिकॉल पे वाले, इसलिए गिव अप कर रहे हैं लोग। ठीक है, जाते उधर भी जाते। भाई लेकिन अभी है ना वो एक अच्छी बात है कि भाई अभी इज्जत
नहीं डूबेगी भाई चाकू से, नहीं तो लोग नॉक करने का जो भाई कहाँ चले? अरे ये गाड़ी देखो भैंस की, गाड़ी दिख रही है तुमको? वही किया है, बस यही करने के लिए उसने गाड़ी लगाई। अरे आ गया है, आगा नहीं गाड़ी वैसा इसी के लिए गाड़ी रखी। छी भाई ऐसा होता है, गाड़ी देखो, बॉर्डर देखो। क्या है यार? जब देखो वहां पे गाड़ी के पीछे लेट बैठ जाता है, जब देखो गाड़ी के पीछे लेट जाता है। बैठ हो गए। जब देखो तब गाड़ी देख रहा है, जब देखो तब बॉर्ड देख रहा है। मारो केजी भाई। एक तो इतनी खतरनाक जगह छुपा था कि आगे दीवार आ रही थी और नीचे से पैर दिख रहा था। वही भाई क्या मिले, नीचे तुम्हारी मुंडी दिख गई उसको गाड़ी की उससे। गाड़ी तो चेंज की ना, उसमें प्रॉब्लम हो गई। वही वो कमीना इसी ताक में बैठा था, वरना मारने को गाड़ी चलाते हुए। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. It is Take frequent showtime. breaks and play responsibly. दिलों की तुझको चाहे यारा बताना वहां से मार।
क्या किया? इतनी मंजिल इधर उधर। ऊपर से उड़ी मार के नीचे भी आ गया मारने। भाई ये था ना यार इधर मैं फोन पे बात कर रहा था भाई, अब भी आया है। ये नुबड़ू ने मरवा दिया। अरे भाई मैंने क्या नॉक दिया था। अरे नहीं, तुमको बाहर नहीं जाना था, खुदा है। तुमको बाहर नहीं जाना था। अरे तू लेट गया, मैं हवा में उड़ी अच्छा। खड़ा हो गया। समझा। अरे मार निशाद। अरे बैंड छोड़। ये देख उससे ही मारा है निशाद। वो कह रहा है कि ना, सुन भावेश कह रहा है कि पूरी कहते हैं स्क्वाड है। उसने मजा पूरी स्क्वाड है। पूरी स्क्वाड है, पूरी स्क्वाड है, पूरी स्क्वाड है। क्या पीछे यार? पीछे लवड़ू पीछे। एक और ग्राउंड ढाल पहले। रुद्रा मैच एक सूट से मर गया है। 7 स्टार हो गई। एक सूट से नहीं मरा यार, मैं इसकी किल फिनिश करने के चक्कर में मरा। हाँ क्रेजी लाइव। हाँ यार बेकार है यार। ये देखिए भी उससे ही मारा है क्रेजी एनेक्शन। हाँ वही। क्या यार, मैं एक कान पे फोन पे बात कर रहा हूँ और भैंस की क्या बोलूं। अरे सीढ़ी से देख लेगा तेरे को। I'm recalling a teammate. वो तेज वाली गाड़ी ले आना भाई। Thanks. और जॉर्जो मत जाना कृपया करके, जॉर्जो में भाई साहब। उसका किल डाप लिया लेकिन। क्या बात है। चलो 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 भैंस की चलो। चल इवेंट में चल इवेंट में चल इवेंट में चल। निशाद भाई को छोड़ दे देना। चल निशाद भाई रिकॉल दे देंगे। चल ला दे मेरे को दे। निशाद भाई रिकॉर्ड ही नहीं है। बैठो निशाद भाई। फिर तू भी रुक, फिर तू भी यहीं रुक, मैं भी यहीं जाता हूं। रुक। चल चल खत्म करते हैं। देख किल नहीं आ रहा। दो बार ऐसी कुत्ते मौत मार दे। अरे मैं लैंडिंग भी वो भावेश से बात करते गया ना, वो हुआ ये कि ना भावेश को ना सामने वाले बंदे ने 1 लाख पॉप मार दी है, तो कृष्णा अपनी 50,000 वाली पॉप मार रहा है। मतलब सारी पॉप मार के, मतलब कि अब ये बात ईगो पे रखी है। तो उसने बोला है कि जितनी मेरे पास पॉप हो सारी की सारी पॉप मार दूं और उस पे किधर जा रहा है? वो मर गया। Don't give up. हाँ तो रिकॉल देते Your चलते हैं ना। teammates can still recall you. तो ऐसी वाली बात हो गई है। I'm recalling a teammate. रिकॉल दे दिया पीछे ले। पता नहीं मैं दे एक दिया। किल से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गया भाई। एक किल में खुश हो रहा भाई। वो बंदे बोल। एक बंदा आया फुट से आया मेरे को। तू यहीं रुक, मैं मार के आता हूँ इसको। तेरे को गाड़ी दिला देता हूँ, मार के आता। तू ये गाड़ी प्ले। मैं मारूंगा इधर। हाँ तो ये लेना गाड़ी। क्यों मारना तेरे को? मैं देख के हूँ उसको क्या बातचीत है उसको। अरे आवाज माइक बंद कर। स्क्वाड हाउस में है नहीं, ओपन से आ रहा है। ओपन से आ रहा है? किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है मेरे पे। रुक, सीढ़ी पे आ रहा है। मर जा फिर। नूब है यार ये तो। मैं तो सोचा अच्छा बंदा होगा। भाई तुम्हारे बंदे जिंदा है क्या भाई? भाई तुम्हारे बंदे जिंदा है क्या? फिर वापस वैसे ही मरेगा क्या? तुम कैसे हो? ये वो दौड़ा हो। क्या करूं? तब तक बंदा आके मार जाएगा। क्यों भाई? ये लो फिर कर दिया कर। गाड़ी आ रही है वहां किस दर से? भाई साहब सीधा दरवाजे के अंदर है। अब बताओ कहाँ चले? भैंस के तुम वहां पहुंच गए।
जॉर्जो में मत लूटना कृपया करके, चाहे इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे बंदे एक दो दिख रहे हैं। अरे एक्टिंग कर रहे थे, उसको बुला रहे होंगे। ए रावड़ा को मार रहे हैं। कॉल कर रहे हैं, अभी आएगा, रुकना, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। बस आना चाहिए। ले आएंगे वही नौकर के आएंगे। हालांकि स्कोप पे अटैक करता है। दिख रहा है मेरे को, देख फायर दिख रहा है मेरे को। ब्रो एक काम करता हूँ, मैं नॉक होता हूँ, ओके? वो देख को आएगा, मेरे को फिनिश करना है, तुम लोग मारना फिर। कूद 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 कूदना। मैं कूदूंगा नहीं, वरना उसको लगेगा मैं जाऊँ उसका नॉक हूँ। मार रहा था, मेरे को ही मार रहा है वो। हाँ ठीक है, अब वो आएगा 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 आएगा। देख बग्गी उड़ाया, बग्गी उड़ाया, आ रहा है, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। लालच मिल गया उसको नॉक करने का। नहीं आया। ये तुम क्या बेट बना के खेल रहे हो भैंस की? अरे 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 कवड़ा भागो। भैंस की बेट बना के खेलते हो हैं? एक सूट वाला है ये, एक सूट वाला है। मेरे पास रिकॉल है, रुक मैं जाके देखता हूँ, इमोडी करके आता हूँ। कहाँ पर है लोकेशन का थोड़ी? अरे ब्रो एक सूरज है देख। अबे बाहर भी मार ब्रोकोली ब्रोकोली। एक लाख कर, दो आ रहे। नहीं एक यार, सूरज से पंगा ले लिया है बुरा, एक सूरज से पंगा ले लिया। ये क्या कर रहे थे बोल, ये क्यों किया? रुद्र हग रहा है रुद्र। अरे हाँ ना, मैं भी हक गया ना भाई। वही था वही था। एक को दिया। गू खाना काम किए बस। कौन सा गू पता नहीं, लेकिन यार हाँ तो कार्यो तेरे पे पावर अभी कितनी होगी भाई? इसको चाहिए आवेश को। अबे किधर है? 8 करूँ क्या, या पहले खेल लेते फिर ही दे देंगे इसको? देखो पहले एक बार भाविश कैसा कौन है। ओ भाई भाविश, किसने कौन सी वाली पॉप मार दी? अरे भाई साहब, भाविश ने 1.5 लाख कर लिया अपनी। क्या बात है। अरे भाई साहब, सेकंड पे आ गया। हाँ बोल। हाँ रुक रुक, ये ले मैंने लगा दिया। सेंटोर्नी किधर है? या तुम कब तक हो, हम खेल लेते हैं। हमने भी कर लिया यार, बंदे ऑफ हैं, तेरे को इधर आना पड़ेगा। या हो अच्छा ठीक है। नहीं अभी ये खेल रहे थे ना, इसलिए मैं कह रहा था। ब्रो वो आईडी को हटा दो, दूसरी आईडी से खेलूंगा। एक मिनट, क्या? अच्छा रुक, कितनी चाहिए? बुला रहा है जरा, 1 मिनट आना, 1 मिनट आइए जरा, उधर आइए भाविश कृष्णा के पास, आना जरा।
आया बताऊं तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की तुझको चाहे यारा बता ना पाए और तुम जानो ना। तो कॉल पे अरे बोल रहा नहीं हूँ, चाहिए। नहीं रिजर्वेशन डाला, छोड़ अरे दे। लहजू तो ये भाई रात खेल रहा हूँ। हाँ मार जितना भी कितना है मार भाई, खाली जितना कर, भी बस मार। पूरा नंगा कर, खाली कर पूरा। पूरा खाली। हाँ अच्छा। हाँ ले कार्य तेरे को अरे 10 मैंने सामने के वाले को बदले में उसकी 17 औकात रिंग दे बताने देता की हूँ। है। ले पंद्रह कार्य हजार बोलेगा वाह, सब एक मार दिया, नंबर। मेरे को कुछ कर दिया 2 नहीं। लाख करूंगा, मौका जीतना भी है। अच्छा बैटल चालू है। ऐसा होगा क्या भाई, हुआ क्या है? अरे वो तुम्हारी ईगो सामने पे आ इतना वाले गई को है बहुत थोड़ा भाई, मारने का है भाई। ईगो पे आ हम गई तो है एक वो ईगो। लाख क्या मार किया सकते पता हैं है? अभी। पता है उसने, क्या? वो क्या पहले दिन ही पॉप इसने ठीक। 5,000 को दिया। 30,000, 30,000। 30,000। हाँ पहले दिन 30,000, दूसरे दिन तो 60,000 और आज का दिन 90,000। और हम लोग है? कुछ नहीं कर रहे थे, हाँ हम हाँ लोग ऐसा देख रहे थे कि हम लोग ने तो आशा छोड़ दी थी। हाँ। फिर कृष्णा को मिली 50,000 वाली पॉप। अरे अब बोला अब देखो जितनी गई। ऐसा। तो मैं अभी मारूं या फिर रात में देखूं? नहीं 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 अब नहीं भी मार, अभी जो भी है खाली तू कर दे, देखेगा नहीं, खाल दे कुछ अभी पूरा। तू मारा उसकी देखेगा नहीं, औकात ही नहीं मारेगा रहेगी। तू, उसकी हाँ, औकात वो मारेगा ही नहीं कुछ तू। नहीं रहेगी। कर पाएगा। एक मिनट। रिडीम कर, वो जाके फ्रोजन वाले रिडीम कर वही जाके। वही हाँ वही वही कर हाँ रहा हूँ। टॉप पे में ही हो गया, तू कौन है मेरे से तो आगे सेकंड पे हो निकलना गया। चाहिए रे। टॉप पे तो नहीं है, टॉप पे तू होगा ही नहीं। पता है रुद्र, तूने पूरे जीवन भर में मेरे को जितनी पॉप मारी ना, उतना हफ्ते भर ने हाँ केवल ने मारी। केवल ने मार दिया, मैं देखा है। थर्ड पे हूँ मैं, थर्ड पे। थर्ड पे ये मारो। केवल, अरे ये थर्ड ले पे ले मैं ले हूँ, ले थर्ड पे हो। लूडो देख लूडो। हाँ। अरे अरे भाई माल रखा बचा के हमने। और आने कर, कर भाई 2 लाख देखोगे आपका। स्क्रीन शॉट लेने का इसका। ऐसा जरा। अबे ये अनामिका वाले टोकन से ही 800 मिलती के है ना हो पॉप? जाएगा। हाँ हाँ मिलती है। अनामिका वाले में भी है पॉप। रुक रुक रुक। वो गोल्डन सिक्कों से 10 की है क्या? अरे भैंस की 9 सिक्के हैं मेरे पे। एक कहाँ से आज लाऊं? देख ना देखना वो के, कलेक्ट हो रहा है, नहीं देख। लॉगिन पे मिला आज। आज लॉगिन पे 10 मिले पूरे। लॉगिन पे 10 मिले आज, हाँ 10 मिले। हाँ लॉगिन पे, लॉगिन पे हाँ आज ये 10। चेक। अबे सारे रेड एक्यूमुलेट डॉट चेक लॉगिन कर। को। नहीं रे, मेरा 10 दिन के लॉगिन पे नहीं हुआ है। इसकी मैं बीच में एक आध दिन ऑफ था ना। हाँ ठीक है, चल छोड़ दे, वो जाने दे। वो बाकी तो कल कर, मार देंगे, बाकी अभी कर। कितना टाइम है? टाइम कल है मार क्या? नहीं देंगे, कल आज नहीं करेंगे जाएगा, आज आज अरे का ही तू अरे पड़ेगा। अभी के आज ही अभी का। मार के खत्म कर, तेरे पास जितना कार्य तू भी जितना मार के खत्म कर, 2 डाल लाख दिया दिखाओ 35। बस। अपन के पास 35 था, भी ब्लू आगारो तो। बोल वाले, के आ ब्लू गया। वाले उधर से तेरे पे redeem किया कितना था? सब। मैंने भी जितना था मार दिया, बस देख ही रहा हूँ। इवेंट में और जाके भाई देखा कुछ कितना मीडियम कलेक्ट गरीब हुआ था क्या। तू मीडियम रुद्र। मीडियम देख। भाई हाँ तेरे हाँ से ना, हमको तो सबसे आशा था गरीब था कम निकला। से कम 30 तो रहेगा तेरे पे। अरे वो भाई हाँ क्या बोलूं, बोलूंगा तो फिर आखिरी भिखारी हो। सारी। भाई क्या बाइक बोलना है। वाइक क्लैन से बाइक वाइक सब छोटू से छोटू चीज मारो। ठीक है। यार 2 लाख का सपना जाएगा क्या? अरे मेरे को भी वही दादा। लग रहा है। अरे और लोग है ना अपने साथ लॉबी में, और लोग भी तो ये है, इरशाद और एक इरशाद चीज। भाई, इन लोग से बोल भाई, क्रेजी एक सेकंड। भाई अबे लोग कार्य redeem पता करके फूल मार दो गोभी भी मार रहा है एक। फूल गोभी। कौन सी फूल गोभी? कार्यों की दिल पे ले लिया है भाई। क्या बोलते हो ब्रो, उसको मार दो कार्य भी क्या? बोल रहा है क्या? मार दूं क्या इसको? कार्यों के साथ इधर से सुबह redeem लेवल इरशाद का करना भाई रिश्ता बता। हो इवेंट गया। वाला, इवेंट में वो फ्रोजन वाले से रिडीम करो। ले उसने 7 दिन वाली मार रहा है वो। एक सेकंड। 93 हुआ है, 7 और चाहिए और अपना 2 का किस्सा कंप्लीट। 94 हो गया अब। अरे ऐसा।
बाकी रुकना, मैं लेजेंड से बोल देता हूँ ना, एक मिनट रुक। हाँ बोल। ऑनलाइन है क्या? अरे यार वो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अरे बताओ, बुलाऊं? भाई बुला ले। इसकी गांड फट पूछी है भाई। जगह किधर है बुलाने को? अरे वो भी है। जगह की बात करिए। अरे उसके पास मेरी आईडी है, टेंशन अरे मत रुद्र निकल जाएगा 2 मिनट में, क्या टेंशन ले रहा हाय। अरे नहीं, 47 सुमित वो मारे पहला मैंने। रुद्र को बायबैक करने वाली पॉलिसी बता दे तू। बाय बाय हाँ मतलब? भाई, भाई बोनस फंस ले क्या? वापस अरे तू भाई डायरेक्ट ही बात कर लेना, तुम नहीं बुला रहा हूँ, रुक जाओ। बोनस बात डायरेक्ट ही मिलेगा? बात कर। नहीं नहीं, तेरे को उसने आरपी में खरीदा है कितनी 300 वाली ना। हम तेरे को 600 360 का। 700 रुपए का बोनस पास दे देते। अरे भाई मैं क्या, ये उतने रुक में तो गया, तू नहीं वापस भाई, आ अभी जाएगा। पॉज 360 वाला। पॉज पॉज, अभी पॉज, रुको 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 रुको, अभी पॉज भाई। बड़ा वाला बोनस है। पास तेरा लेंगे मैच रे, नहीं है क्या आज? 900 यूसी वाला। हाँ बड़ा वाला सीधा गांडू तो 900 वाला। हाँ कसम। अगर उसमें इतना दिमाग होगा कि रात को एक बार पॉप चेक करे तो उसकी नींद भाग तो वो जाएगी। भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो किधर से मांगेगा, कितना मांगेगा वो? रुक रुक रुक, मैं और सब बोला देता हूँ। तो ये उसका लेजेंड कह रहा है 90 कि उस, रात में आके उसका वो मार देगा। बाकी मैं अभी इंडिया वाइट को भी बोलता हूँ, वो वैलिक को भी बुलाता यूसी हूँ। फेंक रुक के मार। रुक बोल रुक, बोल, अभी रुक। जितने को यूसी फेंक बुलाना के है मार बुला रहा और डाल जितना। अरे केवल भाई भैंस की नन्ना तुम्हारे मत पास कर दिया। हीरा, हीरा रखा तो है केवल तुम्हारे पास? हीरा रखा है यहाँ पे, कितनी मारी? अरे केवल ने अरे पहल दिया, मैंने जितनी पूरा थी बेटर सब खाली जितवाया कर है, दिया पूरा। खाली कर पूरा दिया और वो भी बेटर एक वही बैटल तो कह रहा हूँ। नहीं है। पूरा इससे पहले जितने भी बैटल हुए ना उतने सब में हारे इसने। हाय, वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे पूरे पास का भैंस की टोटल कितने खदान मारी? रखी है, हमारी तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए तुम्हें। खत्म हो अबे गई, तो इसीलिए तो 1.5 खत्म हो लाख गई। होने के बाद तेरे को बुलाया। अरे एक भी भाई, नहीं रहा देखा? केवल सेकंड पे है। उसका 93 का एकदम वैल्यू ही खत्म हो जाना चाहिए सारे। ऐसा एटीट्यूड भाई मेरे को रुद्रा ने पहले दिन 11 से ही नहीं खटक मारी। रहा था। सारे घूम मेरे के पास है रखेगा नहीं ना रुद्रा। भाई, जितनी है उतनी मारूंगा ना तू भाई। बचा के रखेगा तू बचा के रखेगा, मेरे को पता तू है। एक काम कर, आईडी मेरे को पास ले ले, पहले और दिन अगर से पॉप खटक मिले रहा ना तो था। मार दियो सारी। एक काम करो, आईडी पास ले ले, पॉप मिले तो मार दियो। तू बचा के रखा है। भाई 2,20,000 हो गया रे वहाँ की आग। 2,23,24 पकड़, सिर्फ 4 फूल। फूल तो रहेगा रुद्र तेरे पास, 4 ना। फूल हाँ है ना। 3 फुल अरे मार, 3 चार फुल, फूल दो मार लाख ये देख दिए, ये बीस देख। हजार तीन। नाइन अरे मारना। रुक 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 रुक, 3 फूल अबे तो ये ये ले। बताना पड़ रहा है तेरे को फूल मारना है। कार्य ने फूल मारे। 99। ये ले 3 फूल मार दिए। मैंने तो वो भी मार दिया रे, मैंने भी मार नहीं दिया। हुआ अरे साला 99। बस क्या भाई, अभी और 2 हुआ तो। मारना है? 270 और मारना है क्या? 227 699। भाई अच्छा लग रहा है 99। बस भूख 30 कर बढ़ते दो, जा रही 30 राउंड फिगर कर दो बस। भूख बढ़ती अरे जा नहीं, रही लेना इसने 3 कर दिया ले है। ले वो रे का। ले केवल में अनामिका डाल दी। अरे भाई ले साहब, रुद्र 800 और क्या और बोलूं इकोनॉमी भाई का तेरे मार को, तेरे सकता से है, हमको। सिर्फ 100 कंफर्म है। 800 और अनामिका वाली किधर है? अनामिका वाली 10 पॉइंट गोल्डन हो कोई रहे ना, भाई। इवेंट में देख, 30 इवेंट में देख 31 हो जाके। गया तो हाँ। फिर हम लोग 40 पे आ जाएंगे फिर। तो भाई ये एक दिमाग का दही कर दिया मेरे को भाई, मेरे
क्या बोलूं? भाई तू वापस आ जा भाई। क्या बोलूं? हम लोग सब लोग चलो, दूसरा निकाल के दे देंगे तेरे को बोनस का। हाँ होता है। तुम लोग को जाने दे जा सकते। हाँ काम तो हो गया, अभी खेल लो तुम लोग, मजा आ गया भाई। धन्यवाद मंडल, आभारी सबका धन्यवाद। सबसे धन्यवाद। इरशाद क्रेजी रुद्र को थोड़ा को कम बोनस और नहीं मारना है दिया ना, उसने। और नहीं मारना है ना, ठीक है। हाँ हो नहीं गया नहीं, हाँ। बस हो गया, बढ़िया बढ़िया। चलेगा। 54 मार तो दिया। ये फूल पौधे पूरे मार के जाना तू कुछ नहीं वही कर रखेगा, रहा तू हूँ, खाली करेगा, समझा ना। वही कर रहा हूँ भाई। ये देख इतने सारे फूल पौधे बचा रखे थे, मयत फैलाने वाला था केस। ऐसा भाई ओके, मैं 43 भेज फुल, के चला जाऊंगा, अभी इनवाइट मत 43 करना। फुल। आ रहा है, लेजेंड मार के चला जाएगा। कितनी मरवाऊं लेजेंड से? हाँ और इंडिया वाईटी भी बोल चाहिए जितनी क्या? मिलेगी कितना जितना मार चाहिए? देना। 2.5 लाख कितना कर दे चाहिए? उसको। कितना उसको चाहिए? बोल जितना मारना है मार देना, जिस जो भी आ रहा है ना उसको बोल देना जितना मारना है मार देना अपने मर्जी से। जितना मार, तो 2 बाइक मार के जाएंगे फिर जितना उसको बोल 2.5 लाख कर देगा तो अच्छा लगेगा। हाँ ऐसा टारगेट दे दे 2.5 का। पता चला फिर बोलेगा 3 लाख ही कर देते, छोड़ो। फ्री वाली मारेंगे और 2 बाइक मारेंगे। ना भाई इतनी ज्यादा नहीं है, हो गया जो उसको होना बोल था। इवेंट वाले में से मार के जा। एक 50,000 की पॉप 6 ने बाइक इतना आगे मिलेगी बढ़ा दिया ना, मोटिवेशन। हाँ वो अगर तेरे को मिलता ही नहीं ना तो कोई करता ही नहीं। हाँ केवल ने पहले ही बोल दिया कि 35 है उसके पास, वो मार के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कितनी थी मतलब शुरू होने से? एक मिनट शुरू होने से पहले लेजेंड वहां खड़ा होकर जा जा मार जा रहा है। रुद्रा गेम खेल ले। हाँ गेम मारा है मार उसको। रहा है। नहीं रुक। एक इंडिया वाईटी आ रहा है मारने के लिए, एक लेजेंड बाहर खड़ा है, लेजेंड ने शायद मार मारा रहा है वो 6, तेरे को। लेजेंड ने मारा 6 6? मारा अभी। मैंने हाँ, उसे बोल 6 दिया मारा जितना अभी मार देखा। सकता है मार दे। हाँ हाँ रुको, शायद और मारे। करो 2.5 लाख करो, मजा है देख के जरा। हो गया ना। मैंने सारे इसको अभी इसी अपना साल मारी पार उसको। पलड़ा भारी दिख रहा है ना अभी अपना, अब तक सेम लग रहा था। हाँ अब ऐसा लग रहा है कुछ तो किया है इन लोगों ने। हाँ ऐसे। रुक इंडिया हो वाईटी क्या रहा है देख, नंबर ठीक है वन सुने वो। क्या कर रहा है। अरे कृष्णा इरशाद वो भाई देख ने तो 20,000 पॉप मार दी खड़े खड़े। वीकली रैंकिंग में जा, इसकी भावेश की मार दे। वो कह रहा है 4000 वीकली और दे रैंकिंग सकता में है। जाके वो देख क्या आ रहा है वो डाल दे गोल्ड। 4,000 दे ढूंढ के बोल। डाल दे। भाई थोड़ा और पॉप। वीकली 4,240 तक पता का नहीं। आंकड़ा आएगा। क्या बोल रहे हो, मार देना चाहिए। और रुक, एक और को पूछ लेता हूँ। बस बस एक बस। बंदा और है। अबे तेरे साथ नहीं, 2 शायद लड़ाई वो खेलने बहुत वाले। रुक, एक बंदा और है। क्या है उसका? क्या पता क्या मिलेंगे। वीकली पॉप। अरे भाई साहब, एक ही हफ्ते में भावेश सर का पॉप देख, वहां की आंख 2.5 लाख। भाई मैंने एक किया था ना चालू किया था तो मेरा जब ये था तो जब बोला ना तेरा ये होने वाला है, पिंक होने वाला है, लेवल 5 होने वाला है, तब मैंने देखा कि मेरा सिर्फ 500 हो रखा है, 540 हो रखा है ऐसा। अभी 850 हो गया। हाँ अब 870 तक आने लग गया। 3 लाख पार हो रहा है अभी 8 से 8 8,000 और 8,600 चाहिए। चाहिए। हाँ 8,000 और चाहिए, फिर हो जाएगा 2.5। फिर इसका स्क्रीनशॉट बना के फ्रेम में रखने का बैच। एक दिन में इतना पॉप मारा था। हाँ और ये प्लान्ड नहीं है कुछ भी मतलब। हाँ अंधाधुन। $43 हो गया। ठीक है, जितना भी उस पे वो इंडिया वाईटी का मैच खत्म होती मार देगा। और वैलिक भाई किधर है? इंडिया वाईटी को बोल देना।
हाँ उसको मैच खत्म होने के बाद मारेगा वो। कुछ नहीं, बस 7,000 और सीधा। हाँ ये रुद्रा जा खेल खेल इन लोग का वेट चलो कर रहे हैं भाई, इन लोग लाइक करो, पॉपुलैरिटी शेयर कम हो करो, गया। सब्सक्राइब करो भाई, क्या ठीक है कर रहे हो ठीक तुम है। लोग? धन्यवाद मिलोगे बाद धन्यवाद, में। मैसेज तो once डाल ही again, दूं ना। धन्यवाद। हाँ हाँ वो गेम खेलते खेलते ही डाल देना। हाँ हाँ चलो हाँ, हम लोग खड़े हैं लॉबी में। ठीक है अभी ठीक तो है। आया था क्या उधर ओलंपस में तेरा लोकेशन पर? हाँ हाँ अभी कल भी आऊंगा। ओलंपस में कौन सी प्रोसेस? साढ़े एनबीएन में जा रहा हूँ भाई। कल कल एक्सेप्ट करूंगा, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, ब्लूमबर्ग के लिए रुका था मैं, लेकिन ब्लूमबर्ग का कुछ भाई सीन नहीं उधर लग रहा। भाई भाई उधर मत है, उधर छोड़ के किधर भी जा। भी कौन से फ्लोर पे? वो फ्लोर हाँ वो प्रोसेस छोड़ के ए ब्लॉक 5 किधर भी चले जा। 5वां। अबे क्या ए बोल रहा है, में एनबीएन छोड़ के कहीं नहीं चले अरे जाओ। ब्लूमबर्ग छोड़ के किधर भी चले जाना, कौन से भी प्रोसेस जो मिले वो ले लो भाई। क्यों, ऐसा ब्लूमबर्ग अच्छा नहीं है क्या? इसके बाद जो जॉब ढूंढने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं जल्दी। अच्छा अबे तो एनबीएन का भी मेरे को वही लग रहा है ना, क्योंकि मतलब वो समथिंग अरे कुछ तो बट ये नेटवर्क एनालिसिस है। हाँ बट लेकिन वो टीसीएस के अंडर आता है ना, तो उतना कुछ मायने नहीं रखता जितना ब्लूमबर्ग कुछ एक अच्छे काम के लिए, मतलब उसका एक अच्छा प्रोसेस है, बट उन लोगों ने बहुत एकदम ऐसा कॉपी पेस्ट रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम उधर आता है। अच्छा तो मतलब ब्लूमबर्ग अच्छा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली, तुम ये बोलना हाँ चाहते हो हाँ कि इसके बाद अच्छा नहीं मिले। हाँ, इसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉब्लम तब तो होगा। ठीक है। हाँ वो कैसे मालूम है क्या, उनको तब तो पता है ठीक है कि क्या भाई। है, मतलब जो भी उनका प्रोसेस हो, बट उनको पता है अरे चल ये तो पहले से ही है। लेकिन इधर क्या कुछ बता दे कुछ और है और कराते कुछ और है हम्म, ना, वैसा है, तो उधर फिर हम्म, मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा हम्म, मतलब अफसोस ये नहीं करूँ कृष्णा ना है ना, फिर उधर भी ही अपनी इधर ब्लूमबर्ग काम नहीं करता मिला है। है मेरे को। हाँ अफसोस नहीं, अफसोस नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तेरे को हाँ बोला था ना वो क्या? एचआरए, हाँ ए कृष्णा है ना एचआरए उधर। अच्छा यही है क्या? हाँ। हम्म। नहीं नहीं, सही है। मैं तो उल्टा जानना ही चाहता हूँ भाई, मेरे फ्रेंड लोग जाएंगे, फंस ना जाए जाके। अरे सुनता हूँ, क्या हमारे पता है हम लोग का प्रोसेस ही बंद हो रहा है। हाँ हाँ अरे हाँ। भाई साहब। अरे बाप रे। नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सीन होगा क्या भाई? ब्लूमबर्ग के लिए पागल हुए हैं हम लोग के बैच वाले सब कि ब्लूमबर्ग मिला भाई, ब्लूमबर्ग मिला। हाँ हाँ हम्म 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 हाँ अच्छा हम्म। हाँ 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 तब सही है भाई, जाता हूँ कल, एक्सेप्ट करता हूँ। सुबह रहेगा 6:30 से शाम के 4:30। हाँ हाँ अरे भाई तुमको पता है 35 दिन का है, 35 दिन का है बेंच पीरियड, लेकिन पता है ये आरएमजी जो अजाइन हुए हैं ना, इन लोग क्या बोल रहे हैं, अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो हफ्ते 2 हफ्ते में तो भाई रिजाइन डाल दो, 35 दिन हम लोग वेट नहीं करने वाले। मतलब उनके हाथ। हाँ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ जबरदस्ती नहीं कर सकते उन लोग कि भाई 35 दिन भी मत बैठो, लेकिन उन लोग बात ऐसा कर रहे हैं ना कि मतलब सामने वाले को ना भी मतलब झगड़ के बैठूंगा 35 दिन तो मतलब नहीं। हाँ हम्म हाँ वही है, कल एनबीएन के लिए भाई फाइनल करता हूँ। हाँ वही वही वही। हम्म हम्म। हाँ भाई चलो थोड़ा अच्छा पहले बता आता दिए, तो नहीं हो तो जाता था जरा ब्लूमबर्ग में। अरे मन में भाई बहुत दुख था भाई, बोल तो रहा हूँ मंडे से। कमीना। मत भाई डुबाने वाला बात
आलू कुछ कचरा उड़ता हुआ। भैंस की फ्लेवर्ड पानी है। हाँ पानी पूरी। पानीपुरी अरे हाँ। हाँ, अब कारियो खेलना है कि हम भी निकले? क्रेजी भाई बताओ, खेलना है कि हम भी चलें? मैं तो खेल सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं। खेलने का है, खेलने का स्ट्रीम चल रहा है, है आ उसका, जाओ। 4 बजे तक खेलते हो। हाँ अरे भाई हाँ साहब, ये, अरे ये सुन ना, सुन ये कल क्या बोल के गया, मैं जा रहा हूँ सोने, साला 4 बजे मेरा स्ट्रीम हाँ, देखने आया था। अरे भाई अरे साहब, भाई, अरे नींद ही भाई नहीं आ रहा मेरे को। साहब, अब मेरे को पता नहीं थोड़े खेल ही लेता कौन सा उसके साथ स्ट्रीम साथ में। देख लिया भाई, रात को गोल घूमते घूमते आ गया था वो। भाई भाई, अरे नहीं नहीं, पूरी रात उसने स्ट्रीम देखी, उसका खड़ा नहीं हुआ, फिर उसने सोचा क्रेजी भाई की स्ट्रीम देख लेगा। अरे भाई साहब, कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे ये डाकू व्हाट्सएप पे भी ग्रुप भाई बहुत क्या डाकू बोलता है है। व्हाट्सएप हाँ पे? तो आज ग्रुप पे गंद नहीं रुद्र लगा दिल मैंने। में, रुद्र किधर है? रुद्र दिल दिल में, में। दिल में। तुमको बड़ी हो नाम रही है भैंस की। है हम ना? क्या वैसे अरे वो कर भाई रहे हैं, भाई तुमको बड़ी साहब, भाई हो रही है, हैं? छी जलन भाई हो रही है। भाई तुम्हारी को होटल हुआ को है। पर्सनल में रखा भाई, ऐसा पब्लिक मत हाँ, करो भाई। और अच्छा, और तू और मेरी, कृष्णा और मेरी, तब तब क्या क्या ऐसा? भाई, मेरे कृष्णा को ये मत कब जोड़ करने लग भाई गया ये तू? सब, मेरे को मत जोड़ चल भाई। छोड़, फिर राज राज ही रखते हैं, छोड़ो, फिर राज राज ही छी रखते हैं। भाई, ऐसा क्या बोल राजा? के मत अच्छा ना है। बोल दे भाई, तू बोल दे क्या नहीं नहीं, बोलना अब चाह नहीं रहा है। अब नहीं खोलूंगा। अच्छा, वैसे बाप रे, भावेश और छी मेरी भी भाई, सही है। ट्यूनिंग ऐसे है, भावेश और मेरी भी है। छोड़ कौन दे सी? वो भाई, कौन सी? बस बताएंगे, कर मेरे को वो भाई। याद दिला तो बताएंगे। जरा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। नहीं याद तो अरे दिला मेरे कुछ को, है नहीं मेरी क्यों इसके नहीं याद नहीं आ पास, रही? जानबूझ के चूतिया मार रहा है, कुछ है नहीं। अब देखो, तुमको ऐसा सोचना है तो सोच सकते हो भाई। नहीं नहीं, हम सही हाँ, सोच रहे थे, तू गलत हम सोच अच्छा कृष्णा और रहा ही रुद्र सोच की तो रहे है हैं, भाई, कृष्णा और रुद्र की स्ट्रेट तो सोच रहे हैं हम। है। ये देख, ये देख, देखा उज्जैन देखा में, है। है। अरे हम तीनों खड़े, ये लोग किधर गए पता नहीं, रुद्र, गायब भी हो गए दोनों, फोटो अच्छा निकालने गायब के तो हो गया चक्कर में। ना। तो तू क्या चाहता है, वो थोड़ी अबे तो देर में गायब चूतिया, हुए थे, लड्डू उसमें वो तेरा, गाने लड्डू गा तेरा रहे बाप ने नहीं था क्या? वो भी मंदिर अरे लड्डू में लेके भाई, नहीं आए, लड्डू देखे आए। देख के आए लेके वो आया डब्बे था। लेके थे। भैंस की टेम्पर तोड़वा दिया उसके चक्कर में, भैंस की फोन गिर गया। वो तो टेम्पर्ड से बच गया भैंस की, हाँ वरना स्क्रीन की मकड़ी का जाला बन जाता। ऐसा क्या कर रहे थे इतना, मोबाइल गिर गया। क्या, अबे अब तू लाइट देख लगी ले थी भाई, वहां पे पूरी। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे भाई, तो छूट मूवमेंट में। हाँ कार्यो, इस बार व्लॉग थोड़ा अच्छा बनाना, पिछले बार से लंबा और अच्छा। लंबा। हाँ लंबा ये देख मतलब भाई, थोड़ा। इसको इधर भी गंद मचाने का भाई। हाँ ना, भाई क्या निकाल नहीं कर निकाल। रहे, पहले वो तो देख ले। हाँ ना, 3 दिन का व्लॉग बनेगा, 3 दिन मंदिर का। जा रहे हैं। हाँ 3 दिन आराम स्ट्रेट से। रहना भाई तुम दोनों। क्या सोबर रहना, रुद्र क्या कह आएगा, रहे? उसका भी व्लॉग आएगा। अरे भाई हाँ, साहब, स्ट्रेट सोबर, भोले अरे प्योर मतलब दिल पूरा वाले। स्टार्टिंग से आएगा, फिर ये अरे बोलेगा भाई कि साहब, हमारे दोस्त बुलाए हैं पबजी में से, दिल्ली से यहाँ आए अरे हमसे भाई, मिलने। हाँ, वीडियो वायरल, अरे वीडियो पहली भाई, वायरल, बार, रील वायरल हो पहली बार जाएगी। अगर पहली बार कर हाँ देंगे, पहली बार अरे भाई, हाँ, बोलेगा पहली बार पहली बार बोलेगा। आया। पहली बार कर हाँ देंगे, पहली बार फिर आया, झूठ एक रील बोलेगा। कर देंगे और वायरल, पिछले, एक सेकेंड, फिर वो वायरल हो देखेंगे जाएगी। पिछले वाला ब्लॉग, ये बंदा तो यहाँ पे भी है भैंस की, पिछले ब्लॉग में नहीं पहली नहीं, बार आके अब अब बोला। वो ये रील डिलीट डालेंगे कर ना हम देंगे ना लोग। अगर इंस्टा वायरल पे हुआ तो। डालेगा ना, उनको थोड़ी पता है। हाँ ये इंस्टा भी पे रील ठीक। डालेंगे। अरे भाई साहब, चलो फिर भैंस लोग की कहेगा, यही अरे करते हैं। तू सुबह में ऐसा कार्य दिखता है, अरे वाह कैसा दिखता है। अरे भाई, मैं तो कारी कारी बोलता रहूंगा ऐसी, अब बीच में बोलता रहूंगा, इसका हाँ गेम टैग है ना ये, इस वजह से यही इसका नाम चढ़ हाँ। गया। अच्छा, ऐसी। चलो आओ खेलते हैं 1 मैच। हाँ हाँ, चलो तुम लोग खेलो, जाते हैं हम लोग, सोते हैं, मेरा पेपर है। ढाई हुआ नहीं साला पर। नहीं हो जाएगा, उधर वो स्क्रीनशॉट आया ले क्या? लेना। हाँ, वो आएगा गेम से बाहर क्या? नहीं, अभी तक नहीं है कौन? भाई। 20 मिनट, वो इंडिया वाईटी और वैले आओ भाई, बाहर वो आओ, बाहर 11,000 आओ। मारेंगे। अच्छा, हाँ, बाकी एक और आ रहा है, जाओ जाओ, देखता हूँ कितने आ सकते हैं। जा जा स्क्रीनशॉट लेना मत कार्यों पे भूलना, आ मैं जा। सोने चला जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो अपन भी चलते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ क्रेजी भाई, निकलते। इरशाद भाई आ जाओ। चलो, बाय 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 बाय।
कर दूं क्या चालू? हाँ। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. अरे भाई ये तो ड्रोन पर ही चालू होता है। ये भी ठीक है। कहाँ गई शायद भाई, क्रेजी भाई? माइक तो बंद कर लिया। हाँ आ रहा है, आ रहा है। ये शायद भाई किधर चले गए? मैं प्लेन में बैठा हूँ। अरे भाई धन्यवाद भाई, शायद भाई और क्रेजी भाई पॉप के लिए भाई। हाँ हाँ, तुम्हारा आवाज स्लो का आ रहा है। अभी भी हाँ। ये कारियों का आवाज बंद हो गया बिल्कुल ही, कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ हाँ थोड़ा बढ़ गया आवाज, पहले से तो सही है। जाने के बाद भी 4 बजे तक खेला, मेरे को पता ही नहीं चला 4 बज गया था और सोया सुबह 10 बजे। अरे भाई, अरे भाई साहब क्यों भाई इतना कहाँ क्या खेल लिया, इतना क्या खेल लिया? लोकेशन पता है। चलो फिर इधर ही, अबे इधर ही उतरा है बंदा एक। मारो मारो चाकू मारो। ए भाई इरशाद, मार 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 मार। अबे कहाँ है? मार। पकड़ पकड़ पकड़, ले गन ले। हाँ कंधे कंधे कंधे। इधर इधर गिरा है। देख अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे मेरा अरे चक्कू मार दिया है कारियो। मार दिया चक्कू। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। बंदूक रिलोड होती वो चक्कू मार गया। आ रहा बंदा आ रहा है। क्या था भाई, मेरा नेट केवल ने बहुत मार कट दिया गया है भाई। केवल केवल तो हमारे साथ खेल ही नहीं रहा। ब्रो ये टॉफी का नहीं, सब चलो एक साथ टॉफी ओपन करते हैं। और उसमें मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? कुछ ना कुछ मिलेगा, अभी ओपन नहीं किया है। नहीं नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता, हम देख के आए। वो से एनिमेशन है बस कि हाँ। पीएमजीसी का स्टेज ऐसा होने वाला है। बेकार, मैं कहता हूँ ये छोटा वाला इवेंट चलते आओ। ये उतर गए लेकिन बड़े वाले तो हो नहीं रहे हैं, इसकी छोटा ही चलने। अरे यहाँ कहाँ आ गए? अरे मैं इधर वो ना पकड़ा था, रिवाइव दे रहा हूँ। I need consumables. दिखाई नहीं रहा कि रिवाइव दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। अरे पता नहीं देखा उतने में तुम्हें चाकू कोई मार नहीं कोई नहीं। अरे यार वो एक बंदा चक्कू लेके आ गया ना नियत्ता, मैं उसी रिलोड करता ही रह गया। इससे तो मैं पहले रिलोड कर लेता कारियो, तो बच जाते। मैं बोला था रिलोड मार।
भाई कभी कभी यूजी बहुत अच्छा मार देती है, कभी कभी तो ऐसा गंदा है ना भाई वो गन, दिमाग खराब कर देगी। अरे तो उजी का सिर्फ ये हिसाब है कि क्या कहते हैं, रीलोड अगर 35 गोलियां हैं तो भाई सब मजेदार, 25 गोलियां तो हग जाती हैं भाई। 25 की 25 मारनी पड़ती। आओ बैठो भाई, सब लोग निकल गए ना यहाँ से, क्रेजी भाई रह रहे हैं। एक काम करो, ये डासिया ले लो और क्रेजी भाई को उठा के आओ। लो डासिया लो। जाने का किधर है? वहाँ इवेंट पे चलते हैं ना, छोटा वाला। अबे तू भैंस की, तू किस इवेंट पे चला गया? हाँ ये देख खोला देख। हाँ चल। एक दो बंदे होंगे, निपटाते हैं। आ रहे क्या कोई कि नहीं आ रहे? कि मैं देख हाँ इरशाद भाई आ रहे ना। हाँ। मेरे पीछे गाड़ी पड़ी है। हाँ आगे अंदर कितने बंदे हैं? अंदर मार देगा। एक काम कर, कारी अपने बंदों के पास पहले चलते हैं। अबे जॉर्जो में ही है शायद। आ जाओ। भाग गए? आप चलाओ चल भाग गए कह रहे हो, मैं बंदे देख के आता हूँ कितने हैं। बंदे वापस आया। अरे मेरा आ गए। अरे यार एक चीज बोलो यार। एक हेड मारे। ये तो आप इसकी बग्गी का पेट्रोल का निकाल रहा हूँ। धक्का मार रहा हूँ। हो जाए तेरे को धक्का मारना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। चल तेरी हुआ। अरे हो गया, चल धन्यवाद सीधा करने के लिए। चल रहे काय बंदे अरे मॉन्स्टर ट्रक कार, ये इसको रिकॉल नहीं करने देंगे। चल। अरे एक ही आजा, इस पे एक ही है। रुक मैं से ठोक देता हूँ गाड़ी। एक ठोकवा दी। अरे मार दिया। एक अपने पर, हाँ छत पे। रुक ये लूट के हैं फिर चलते हैं। जा। अबे यूएमपी है, चाहिए तेरे को क्या? चल रुक जा, मैं जरा हील कर रहा हूँ फिर लियो हल्का सा ब्रेक। देख मार। अरे नहीं। एक एचपी भाई, वो एक एचपी। बस मारेंगे। चलो उड़ रहा है वो, किधर तो उड़ा। एक यहाँ पे भी है। इधर ही आए नीचे। मेरी पट्टी रगड़ जाए। नहीं ये बॉट था, वो उड़ के गया किधर तो। सारी गोली मेरी दीवार पे लग गई है। अच्छा है। क्या बंदा था ये, हम लोग का ये कोई तो उड़ के आया। नहीं कोई नहीं आया। आवाज आया मेरे को। और उड़ने का आया, मेरे को भी आया पर उड़ के आया। अरे पीपी वाइजन देना मेरे को। ले यूएमपी ले। क्या चाहिए तेरे को बता, जल्दी बोल। अरे एक बोल ना। पीपी वाइजन दे। ले तो यूएमपी की एमो दे दे थोड़ी। यूएमपी की एमो होती तो मैं नहीं उठाता। ये ले ठीक है। थोड़ी उजी की दे दे। बुरा फिलेगन चलाओ, फिलेगन है मेरे पास। चलो तुम ही चलो। हम चलाएंगे तुम चलाओ, बात एक ही है भाई। केम पड़ी था। दे बंदा भी से मारा। बच गया। रुक। ये मारता हूँ, मछली मारता हूँ। मार। मेरे पे भी एक मछली है। बस अभी तुम लोग देखो। हम्म। दूर से मारा, मेरे को लगा ही था भाई अभी भी इसके बंद करेंगे करके डाउट था।
एक तो दिख नहीं रहे ना बंदे। टावर पे। हाँ टावर पे है क्या? मुझे तो नहीं दिखा टावर। ड्रॉप आ रही है ना, इसलिए बंदे आएंगे। Watch out! मुझे तो नहीं दिख रहा टावर पे। अभी देखा मैंने। दिखा था मेरे को। नहीं मेरे को भी दिखा। तो वो गाड़ी घुमाते हैं और क्या। भाग गया शायद, टॉप करके आवाज भी आया था मेरे को। आड़ी आई। मैं हूँ बंदा देखने जा रहा हूँ। इधर तो कोई नहीं है। ऊपर तो नहीं दिख रहा रे। अरे वो वही तो डूब करके वो मारते ना वो। उड़ गया शायद। हाँ ब्रो MG3 चाहिए, M63 चला लो कोई। मैं तो UMP वाला हूँ। यहाँ ड्रॉप में पड़ा है। ये ड्रॉप आता है। पीपी वाला है। अरे बस मेरा काम हो गया। हाँ दिखा कहाँ पीछे क्या इधर। Watch out! ऊपर दिखा। नहीं दिख रहा। कहाँ है? दिखा मेरा मुंडी दिखा। टंकी पे। टंकी पे कहाँ है क्रेजी भाई? अरे मैंने अब भी उड़ते हुए देखा उसको। कहाँ पर? वो तो टंकी पे तो मैं ही होके आ रहा हूँ। टंकी पे तो मैं होके आ रहा हूँ। कोई नहीं। Mark the location. देखा अभी। अच्छा रुको गाड़ी लेके जाता हूँ। वो पीछे साइड चला गया, उसकी फट गई। मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं पीछे साइड पूरी गाड़ी घुमा के आ रहा हूँ अभी। कोई तो कूदा। कहाँ? मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। बैठ बेटा। आ जा। वो बॉट है। अरे बड़े ज्यादा ही प्रैक्टिस करने रहा। अरे तो बॉट है ना। बॉट है, उसमें भी मर रहा है। तो तूने बंदा मारा तो। अबे एटेक्स है उसपे भाई। तू उठा लो जरा। वो देख बॉट फायर कर रहा है। अगर ये रियल है। अरे MG3 उठा लो ना कोई। किसी ने उठाई क्या? मैं ही उठाऊं क्या? उठाओ चले उड़े। हाँ बस मार देंगे MG3 गांड में। अरे भैंस की। एक सेकेंड चल। इंशाद मर जाएगा उधर। है किधर अपना को मुन्नाडी पोना डेंजर। चल पूरा मार जल्दी। ड्रॉप किधर है? तो ड्रॉप ही नहीं दिखा। Marked a vehicle. अरे वो रहा तुम मेरे साथ आओ। इधर है ये रहा। ये रहा। Marked an airdrop. चल तू बैठ। पहले तेल भरा के आएंगे। तेल देख मैंने। लौड़े इंशाद मर रहा है उधर। नहीं मरेगा अब है ना। कहाँ पे बंदे इस साथ? सामने ही बंदा देख अभी को गया है उड़कर। सामने मार सामने का आधी टंकी में निकाल लेंगे। अरे चल। अरे यार सामने कितना सामने यार बताया तो करो यार। इधर उधर उड़ को जा रहा है। अब क्या बताऊं, लोकेशन ही चेंज कर रहा है। थोड़ा सा तो बताते। पेटी के पास है। पेटी के पास। पेटी के पास। अरे शैक में, घर में, ब्रोकन वॉल पे। देख तुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं? इतना गाड़ी घुमा लिया मैं। रुकाना किधर दो मेरे को। तो कैसे भाग गया कैम कर को मार रहा है। अबे रुकाना शैक पे बैठा रहेगा गांडू। चल फिर देख। मेरे को लगता है किसी घर में छुपा हुआ है। शैक में बैठा रहेगा मेरे को लग रहा है।
नहीं है। ये घर में देख। रुक जरा, तेल खत्म हो रहा है, भराऊं फिर से। लौड़े तेरे को ये मालूम दे। है। गाड़ी ही नहीं चलेगी फिर किस काम की? ये इधर ब्रोकन वॉल से मारा ना? हाँ यही है। उड़ को भाग रहा था। सेल्फ रिवाइव ले रहा था। रुक 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 लौड़े। हाँ रुक 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 रुक। बात तो करने देता। हाँ रुक 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 रुक। चल भाई चलो। अरे पेटी ही उठा ली ये यार। चलो तेल भराया ना? गाड़ी फट गई, तेल भरा रहा है। अरे हो जाएगी, ठीक करने का भी है, ठीक करने का भी है। चल तेल ही खत्म हो गया। खत्म हो गया ना तेल, मैं बोल रहा था। पीछे कहाँ पे बंदे थे? यूएमपी की एमओ बटे इधर। हाँ मिल गई। और वो पड़ा है मछली। यहाँ हो गई वो। अरे वो नहीं मिला मछली, उसकी पेटी में से उठा। ये पड़ी है। पेट्रोल खत्म गड्डी में। मिला पेट्रोल मिला। मैं भर रहा हूँ। उठा जरा। मेरे को मिल गया, मैं भर रहा हूँ। दे दो इशाद भाई, रिक्वेस्ट भाई रिकॉल दे दो। आजा चल। ये काम कर ले, तू पेट्रोल भरा, मैं इशाद भाई को रिकॉल लेके आया। से पहले मैं पहुंच जाऊंगा उधर। पेट्रोल अबे दे दिया रिकॉल। I'm recalling a teammate. Thanks. वेल्डिंग मशीन मिल गई, आ जा इधर। हाँ और कॉइन नहीं है, रुक यहाँ से खरीदता हूँ। फ्री में पड़ी थी। ठीक है। बंदे आ जाओ। बंदे? अरे पैंच की। कहाँ पर? नहीं बंदे आ गए। वही तो इसकी मैग्नेट है। पेटी लूटने जा रहा था। तुम्हारे वापस पेटी बंद करके बैठो जल्दी। अरे भाई कितने हैं? अरे और है दो थे, एक और होगा। दो थे। धोती बन जाएगी। टावर पे शायद, एक टावर पे। अरे टावर पे चढ़ा बैठा है कमीना, और एक नीचे है। अरे भाई मार गया था। आ रहा है कोई? बच गया मैं। मछली मारता रुक। जितना दूर से आया लगेगा क्या? भाई रिकॉल खत्म हो गया। लो अरे रिकॉल खत्म। कुछ तो मार लेकिन मार। जल्दी मार। लगी निशाना तो आई धौली। एक तो लूट नहीं है, पेटी लूटने सोचा तो बंदे आ गए इतना पहले। इधर बंदे को देख रहा हूँ। छत वाला किधर है? ऊपर ही वही टावर पे ही है। अरे हक दिया मैं। हक दिया।
रिकॉल नहीं है, खत्म। तेरे पास है ना? कहाँ है? मेरे पास कहाँ है? वो बंदे हैं यार रिकॉल पे, और टावर पे बंदा है, आगे वाले टावर पे। अच्छा बंदा है, उसके पास वो वैलिक वाली बंदूक है। अरे मार रहा है। कर रहा है वो, देख दूसरे उससे मार रहा है, दूसरे टावर से मार रहा है। क्रेजी भाई किधर लड़ रहे हैं? मेरे पास क्रेजी भाई उधर लूट ही नहीं है। अरे 6x की जनरेटर पे सिंगल टैप मारो ना, एक एक गोली। दूसरे वाले पे, ना ये वाला नहीं, उन्हीं दो चिपक के जो है उसी पे ही है। हाँ उसी पे ही। उधर ही बैठा है। इसके डबल जनरेटर लेके चलने हैं। वो देखो दिखा किल चुराओ। वो जो चढ़ रहा है उसको सिंगल टैप मारो। भाई साहब पूरी स्क्वाड है। घुस गए, फायदा नहीं, घर में घुस गए। नहीं अरे यार ये देखा, खड़ा भी नहीं हुआ। देखा मैं कितने देर से टाइप कर रहा हूँ मेरे फोन में। देखा 2 बार हुआ इसकी। इधर है अबे, इतना दूर है साले, ये भी नहीं फेंक के मार सकता। अरे मैं खड़ा हूँ, दबा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो रहा है। क्या ही बट मैं बच सकता हूँ। रुका रहा हूँ। अबे बैंड चोद। कौन से टावर पर है? निकाल कारियो। हम बेरा छा रहा है उनके आगे, आंखों के आगे। आ गया अंधेरा। क्या बचा है, लेकिन शायद अपन इसके आगे ना बच पाए। जोन में चलते। हेडशॉट किधर है? अरे कहाँ से मारा है कैंपर? भैया स्कोप लगा को दिखाना नहीं, आप मार रहे। बैठ गाड़ी में बैठ। हील मार दिया। उंगली कर रहे थे बहुत बड़ा कैंपर है। अरे भाई गाड़ी से दूर हट जाओ वरना मर जाओगे। नहीं, पकड़ो मर जाएगा। पकड़ो मर जाएगा। पता एक ही बंदा सबको मारा है कैंप करके। क्या चीज? उधर उंगली क्या होती है? कैंप कर मान रहा है। अरे इरशाद भाई इनको जनरेटर से परेशान कर रहे थे 4 लोगों को। बम बताओ, अगला खेलना तो बताओ कार्य फटाफट। एक काम करो, बग्गी निकालो तुम, एक आध को खाओ पहले। वो देखो आगे बंदा सामने। बग्गी निकालो और सामने गियर लगाना। बग्गी निकालो, सामने गियर लगाना। आगे जाओ, बग्गी चला के आगे जाओ, पीछे मत जाना। बग्गी में बैंड लगाना भाई, बग्गी में बैठ के लगाओ। बैठ चलो निकालो, सीधी निकालो। हाँ कंटेनर से घुमा के जोन में लो बस। अब अरे बैंडेज से रगड़ो। अरे भाई टावर वाला कैंपर अभी भी है ऊपर। अरे बैंडेज से रगड़ो मेरे, गाड़ी चलाते। क्या है भाई, एक गू इंसान फिट भी नहीं गया, मेरे को भी जाने नहीं दे रहा है। वही तो टायर पे ही हमला किया उसने। उसके बाद सीलिंग का सामान होगा बहुत, तो इसलिए
लेके जाओ यही चलेगी चलेगी। ये मिनी मिलिशिया को खेलने लग गए। ये कार्यो कहाँ चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे खेलेंगे बोला ना। अच्छा 6x लगाओ ना भाई, 3x क्या लगाते। लगाओ ये बैंडेज टावर वाला अभी तक आया नहीं। निकलेगा वो भी। रगड़ो पट्टी रगड़ो, ये क्या कर रहे हो। कुछ पे कर रहे हो क्या। हटा पता मेरे को मानना यही होना। यही चीज मेरे को पहले वो आवाज ही नहीं आया था कि खेलना बोल के तभी कि हाँ मेरे को भी आवाज नहीं आया इसका, वही तो मुझे भी आवाज नहीं आया इसका। मैं किचन में था। हाँ भाई जब देखो तेरे मुंह में कुछ ना कुछ जाता रहता है, जब देखो। I got 5 eliminations just now. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
ठीक है वो
हेलो हेलो। आवाज ही नहीं आ रहा। I got supplies. ചുറ്റും നോക്ക്. என்கிட்ட சப்ளைஸ் இருக்கு. चलो फाइट लेते हैं. एक और बंदा आया. भाई अभी आवाज आ। भाई मैं इतना देर से टिक कर रहा हूँ. बंदे आगे छह हो गए. गाड़ी आ गई. दो आ रहे. तो आर है या दो आर है? फैजी भाई है तो मर गए क्यों डालते हो? नहीं मर गए. बोले के अंदर बेटा, बोले के अंदर. भाई मेरे को सब 2 मिनट बाद दिख रहा है. तुम लोग जो भी कर रहे हो. ये चल रहे गाड़ी में. बंदा मत गया. सब 2 मिनट बाद हो रहा है.
बॉट पेल रहा है, बॉट पेल रहा है साला। क्या बॉट अरे पेल क्या रहे हो? आवाज नहीं आ रही ना किसको भी, क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम बाद आया, मैं कितना स्टार्ट पे हो। आ रहा है रे यार। नहीं इसका भी नहीं आ रहा, कॉल करेगा पता नहीं। बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों रे? आ रहे यार। ए गाड़ी पीछे आ रही। करने के बाद लेगा मुंह में, क्या बात करने का तो है। Bring up voice chat. लाउडे तुम ना अरे आवाज भी बढ़ गई। उधर पकड़। तेरी माँ की मौज आ रहे ऊपर। नीचे कूद ना लोडू, लौड़ू लोडू, ए लोडू नीचे कूद। लोडू इंसान है एक नंबर। इतनी देर से गाना रहा था, एक थोड़ा सेव करना धीरा हो जाता 10 बार। क्यों रे? तो पीछे से मार गया दूर से। छत पे है क्या? छत पे है? दो, एक नॉक के, एक नॉक के, एक नॉक के। रिवाइव कर, रिवाइव करने आ रहा है, नीचे रिवाइव कर रहा है। Awesome. Awesome. बॉट है बॉट है बॉट है। एक को मछली मारो ना, मछली मारो ना, उठा के मारो। दोनों पे मच्छी फेंक दो, उठा। अच्छी नहीं है। Watch out. ए लौड़े, एक लौड़े, एक लौड़े। एक मछली उठा के मेरे को मार दे। आया। Marked a location. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Marked a location. Don't give up. कार्यो तू ही है मेरा भाई, रिकॉइल दे सकता है।
उधर हग रहा है ना जो कूद के। अरे भाई ये क्या स्कूल हुआ? से मारा है भाई, मान में मैं इसको मारने गया, मैं मस्त फुल टिप्स एंड ट्रिक लगाया, फुल यहाँ वहाँ उड़ी बिड़ी मार के मार रहा ओ हूँ। छोड़, उधर आके हग रहा है, कूद कूद से इधर कूद रहा है, उधर हग I'm recalling a teammate. गाड़ी आई, भागो। भागो भागो, भाग रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ भी एक बंदा होगा। बंदे आए हिम्मा लड़के आप तो मार ले। अंदर गया। लोकेशन पता है। वो इधर Watch चढ़ा हुआ है। out. Help. बस वो खा लिया अभी अपने। सब मर गए। इरशा देना, रिवाइव दे देगा। अबे मर कोई गया, नहीं है। खत्म हो गया सब। रिकॉल भी खत्म। नहीं जा पाऊंगा, और ऊपर से हो गया, बंडन हो गया मेरे साथ। इनको दे, ये रुकेंगे। नहीं रुकेंगे, लपड़ी चालू है इन लोगों की आपस में, नहीं रुके रहे इन लोग। आएंगे उधर तक रुको। रुक अरे रुकना, इन लोग को नॉक कर दे, नॉक वाले को मारूंगा। चार बंदे नॉक वाले लोग को मारूंगा बस। एमो भी नहीं है मेरे पास, देख रहा है। इसको पेल। नहीं नहीं, अरे रुकना, इसको पेल दे। अरे मेरे पास इतना एमो नहीं है ना, पीछे वापस मार देगा मेरे को, इसलिए मैं रुका हूँ। खत्म है। अरे हील हो जाए। ओए नामी लोगे मार मार बे, इन लोगों को मारो, एक दूसरे को मार दिया रे उसने। मर गया। विलिंग बहुत खतरनाक मारे, गाड़ी पलट के विलिंग मार। पीछे से चेक के पीछे। अरे वेंचर भाई गन होती तो बहुत किला मिलती चोरी करने। देखना यार, गली में और क्या दिया देख। अरे यार एमो ही मिल जाता, इधर कहीं कहीं गन मिल जाता तो भी चलता। रिग्रेट हो रहा है मेरे को। उधर से भी मार रहा है भाई, क्या देख, पूरा सब लोग दिख रहे रे मेरे को, देख यहाँ से दो। छोड़, जान दे, एग्जिट कर रहा हूँ फिर। रुक। हाँ बोलते गाइस, मारना चाहिए इन लोगों को, ये मर जाऊंगा मैं। दस बंदे बचे। हाँ क्या पता इनका लफड़ी हो जाए और फिर मैं क्रॉस करके गन उठा के भाई चिकन ले लूँ, क्या पता नहीं ना भाई। बंदा है। चाकू फाइट होगी। चाकू हाथ में रख। ऐसे वो चाकू भाई गन। पता किल चलो नहीं, गया। बोल किल नहीं था ये मेरा। बॉट था ये तो। क्या नहीं मार दिया। बॉट था। अगर मैं क्रेड भी लूटूंगा तो मेरे को भाई कम से कम 1 मिनट का टाइम चाहिए। रिलोड करूंगा फिर मारूंगा। पीछे है क्या? पीछे है।
है, अभी तो जोन में जाना ही है मेरे को। चले जाओ क्या, मर जाऊंगा वैसे भी, जोन में जाने मिलेगा नहीं तो। वो रे बंदा खुद रह गया वो। वो दे, अरे वो रे जा उससे आगे जा। रुक 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 अभी मत जा। भड़वा देख रहा है देख। 3 बंदे। ए नेड़ा आया। ओ भाई पता चल गया इनको। अरे उसको ही तो मारा था ना, उसने देखा था ना मेरे को। बस खत्म। नेड़ा आया। आ गया था मैं, उतर के उधर भी नहीं जा सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ दो घंटे पता चलना पड़ेगा। अरे के भाई कुछ तो रहेगा गड़बड़, क्या पता, या तो मारते समय देखा हो तो पता नहीं, जो उसने याद रखा हो। मुन्नी और नहीं दिखा रहेगा मतलब। अरे लेट के मारा था ना तभी मैंने उसको नॉक दिया था। ये तो चल दिया। टाइम हो गया टाइम। नहीं, दूसरी टीम के साथ गया 8 आदमी का। आठ में Marked a location. तेरी माँ की अखियाँ, 2 जन थे, इनको नॉक देने पड़ेगा।
पा रहे हैं लोग, एक बंदे नहीं झेल पाते। Help! Help! This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Watch out! Help! Help! Help!
जहाँ पे मरने वाले थे वहाँ पे बचा। स्मार्ट प्ले था कि नहीं? और जानेट क्या बोलूं भाई, गू नेट। Marked a location. क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम, वो इरादा, मिलने का जिस दिन तुम्हें, ये तो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम, वो इरादा। दिल जिस दिन तुम्हें, जो जिंदगी का आखिरी दिन।
क्या करूँ मैं, साला कैरेक्टर ढीला है। रुको भाई, ये कुछ तो देखते रुको। गेम तो बंद कर दिया। हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिटी में एक सीरियस कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां पर हमको मल्टीपल रिप्लाईज देखने को मिले। देखता हूँ, रुको एक सेकंड, रुको गाइस।
बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि लाइव स्ट्रीम पर आकर सॉरी बोलना पड़ा। इन कुछ मेजर चीजों से रिटायरमेंट ले लिया गया। एंड एग्जैक्टली जो भी हमको रिप्लाईज देखने को मिले कम्युनिटी के मेंबर्स एंड इवन टीम गॉड लाइक के मेंबर्स से आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस अभी के टाइम पर ऑलरेडी आपको पता ही है कि पीएमजीसी के मैचेस चल रहे हैं। गॉन्टलेट के बाद अब ग्रुप स्टेजेस के मैचेस भी खत्म हो चुके हैं। टीम ओरेंगुटैन की परफॉर्मेंस तो आप लोग देखे ही होंगे। तो वो चीज कराउंड लाइव स्ट्रीम पर बात करते हुए ऐसे ट्वेल्व मेजी उनको काफी क्रिटिसाइज कर दिए एंड काफी जगह पर क्या वो कुछ लिमिट भी क्रॉस किए हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वो टीम ओरेंगुटैन के बारे में नॉर्मली काइंड ऑफ कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि बीजीएमआई प्लेयर्स एक चीज का बहाना देते रहते हैं कि गेम लैग होता है। एंड हमारे इंडिया में पिछले 2 टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो कोरियन टीम्स आकर यहाँ पर जीत कर भी चली गई। देन टीम ओरेंगुटैन के बारे में ये बोले कि पीएमजीसी में उनको इनफ मैचेस मिल चुके हैं कि उनको अब एक्सपीरियंस हो चुका है, बट उसके बावजूद भी ये परफॉर्मेंस। एंड साथ ही में बात करते हैं गाइस आरू के इंटरव्यूज के बारे में जो कि वो पीएमजीसी के पहले बोले थे। एंड फर्दर गाइस मेजी ये भी बोले कि टीम ओरेंगुटैन इंडिया के अंदर कंसिस्टेंट नहीं थी, तो पीएमजीसी में तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली जो भी वो कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज किए उनके कुछ क्लिप्स मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या फायदा हुआ 12-12 घंटे की स्ट्रीम करके, क्या फायदा हुआ हम नहीं खेलेंगे जीसी, हमारा गेम खराब हो जाएगा। अभी कौन सा अच्छा है, खेल लेते इससे अच्छा। इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आरू भाई ने बता दी, खुद ना फॉलो हो रहा। अभी 7WG फिर से रील बनाएगा। आरू भाई तो बड़ा गुस्सा हो गए थे 7WG के ऊपर कि गन पावर वीक कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया ऐसे। अब वो वापस अपनी रील रीशेयर करेगा। एक टीम शर्म नहीं कर रही है, तुम शर्म करो यार, सब्सक्राइब करो भाई। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई प्रेशर में है प्रेशर में है, मुझे एक चीज बताओ, अगर इंडियन चैंपियन प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएगी तो कौन करेगा भाई। इंडियन चैंपियंस हैं, लोग उनको इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बाकियों से बेहतर हैं, बाकी सबसे वो अच्छा कर सकते हैं, बाकी सबसे अच्छी काबिलियत उनके अंदर है, इसीलिए तो वो रिप्रेजेंट करने गए हैं। तो अगर वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएंगे तो कौन करेगा। और ये प्रेशर वाली चीजें बोलना बंद कर दो। इतने सालों से खेल रहे हैं वो गेम, इतने सालों से वो चारों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये प्रेशर वाला बंद होगा, बंद करो मत बोलना। और ये चीज बोलना बंद कर दो कि जब तक ग्लोबल के साथ हम स्क्रिम्स नहीं खेलेंगे तब तक हमारा रीजन आगे नहीं बढ़ सकता। अरे कैसे D+ की आके जीत के गई, कैसे DRX वाले जीत के चले गए, वो हमारे साथ स्क्रिम्स खेल रहे हैं क्या सालों से। जीसी में कई सारी ऐसी टीमें जो शायद उतना रेगुलर बेसिस पे ग्लोबल नहीं खेलते हैं पर फिर भी हमसे बहुत ऊपर हैं। वो क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स लाइक घातक गेमिंग को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अपनी स्टोरी में वो ये लिखते हैं, इतने सालों बाद इंडिया के पास ये स्लॉट आया है कि ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सके। अभी के टाइम पर फर्क नहीं पड़ता है वो कैसा खेल रहे हैं, ये चीज से फर्क पड़ता है कि उनके चेस्ट पर इंडिया लिखा हुआ है। एंड अगर अभी के टाइम पर वो टीम पॉइंट्स टेबल में स्ट्रगल कर रही है तो सोचो उनको कैसा महसूस होगा अगर वो देखेंगे कि उनके खुद के लोग उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सारे डिस्कशंस टूर्नामेंट के बाद भी किए जा सकते थे, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि टूर्नामेंट के बीच में ये सब कुछ करना कितना ज्यादा डैमेजिंग होता है। एंड जस्ट लाइक गाइस हम लोग देखे मेजी एक चीज को मेंशन किए थे कि इंडिया में टीम ओरेंगुटैन लक से जीते। इस पर घातक गेमिंग ये लिखे, अगर आप डे 3 की बात कर रहे हो कि टीम ओरेंगुटैन लक से जीते तो स्टार्टिंग के 2 दिन का क्या। एंड ऐसे टाइम पर पुरानी चीजों को उठाना कि वो लक से जीते हैं, वो डिजर्व नहीं करते थे, ये बिल्कुल गलत है एंड एकदम अननेसेसरी है। देन इसके बाद गाइस घातक गेमिंग के ये रिप्लाईज पर मेजी रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहे, घातक भाई कभी इंटरनेशनल कास्टर्स के लिए भी स्टोरी लगा लिया करो भाई। बहुत ट्रोल करते हैं इंडियन टीम्स को, बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। उनके लिए भी थोड़ा स्टोरीज वगैरह डालो यार, थोड़ा उनको भी बोलो कि अपनी जगह पर देखें, हमारे इंडिया में पोक ना करें, लिखो उनके लिए भी थोड़ा कुछ। फिर वापस से मेजी को टैग करके घातक गेमिंग इस पर ये लिखे, क्रिटिसिज्म एक अलग चीज होती है जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर खराब खेले हैं तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही, बट ओरेंगुटैन लक से जीते हैं ये बोलना गलत है। बाकी ई स्पोर्ट्स वाली चीज में जिंदगी चली जानी है मेरी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन यहाँ पर वो टीम ओरेंगुटैन के कुछ स्टैट्स को भी मेंशन किए, आप देख सकते हो। एंड गाइस ये कंट्रोवर्सी के अराउंड हमको टीम एक्सपार्क के एक्स कोच ओस्मियम की तरफ से भी कुछ रिप्लाईज दिखने को मिले थे, उनको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बेसिकली वो ये लिखे थे, अगर ओरेंगुटैन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो इतना फालतू भी मत बोलो, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो लक से नहीं अपनी मेहनत से जीते थे। एंड गाइस बाकी कुछ रिप्लाईज को भी आप लोग स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद गाइस उसमें उनके रिप्लाईज पर मेजी भी रिएक्ट किए, जहाँ पर काइंड ऑफ वो ये बोले कि आप अपनी टीम का देखो, मेरे को मेरा काम करने दो एंड पहले अपनी टीम को क्वालिफाई करा लो। फिर इसके बाद गाइस ये सब के अराउंड ओस्मियम भी इस पर रिप्लाई किए उनकी स्टोरी में, वो भी आप देख लो। मेजी का एक क्लिप देखा, मुझे बोल रहा है कि तुम अपने टीम को क्वालिफाई कराने पे ध्यान दो। तो भाई तुम्हारी नॉलेज के लिए अगर तुम बताऊं तो मैं अपनी टीम को 3 बार जिता चुका हूं ऑफिशियल टूर्नामेंट। तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं जितवाता रहूंगा। तुम अपने कास्टिंग पे ध्यान जो तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कौन सा कास्टर मैंने आज तक तो नहीं देखा भाई, तुम पहले होगे जो अपनी स्ट्रीम पे टीम को ऐसा बोल रहा है कि ये लोग लक से क्वालिफाई हुए हैं। अगर लास्ट दिन पे अच्छा नहीं खेले तो भाई पिछले 2 दिन कौन खेला था फिर। दूसरी चीज एक और मैंने देखी कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ओजी में कंसिस्टेंसी नहीं है, और आई थिंक मेरे हिसाब से और बाकी लोगों को भी जितने को पता है कि भाई ओजी एकमात्र ऐसी टीम है हमारे देश की जिसने हर एक टूर्नामेंट में अच्छा करा है। BMSD वो जीते, BGIS में वो 3rd आए, तो भाई तुम कंसिस्टेंसी और क्या होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जो भी गाइस हमको ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, इस पर
काफी सारे रिप्लाईज। फिर कम्युनिटी के कुछ और मेंबर्स भी इंटरनेशनल वाली चीज पर रिप्लाई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्काउट के रिएक्शन को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। बेसिकली जहाँ पर वो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल एंड इंडियन लेवल के बारे में कि अगर अभी के टाइम पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो एक दिन जरूर होगा। ऐसे लेवल पर आकर क्रिटिसाइज करने से बढ़िया होगा कि हम प्लेयर्स की किसी तरीके से हेल्प करें कि वो इंटरनेशनल सर्किट में प्रैक्टिस कर सके। देन इसके बाद गाइस टीम ओरंगुटैन एंड ये कंट्रोवर्सी के अराउंड जोनाथन भी रिप्लाई किए, वो भी आप देख लो। जैसे अपन ये वाली लॉबी का पता है कि क्योंकि अपन प्रैक्टिस करते रहता है, बट इंटरनेशनल लॉबी थोड़ा डिफरेंट है। बट वही कि प्रैक्टिस दैट मैटर्स ब्रो। सॉरी भाई क्या ही बोलूं, दिमाग खराब हो गया। कोई दिक्कत नहीं यार गाइस, होता है गाइस। देखो मैं बता रहा हूँ, आने थोड़ा टाइम भी थोड़ा लगेगा यार, क्योंकि वही प्रैक्टिस इंटरनेशनल लॉबी वाली प्रैक्टिस ये वो इज नॉट ईजी मैन। कि पहले कैसा होता था कि अपन जब कब गए इंटरनेशनल 2019 जब अपन ने खेला है, वो टाइम पे TSM एंटिटी फिर ये भी खेला है, तो वो टाइम पे ठीक है प्रैक्टिस होते जाती थी, ये होता था, तो वी न्यू हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क, कैसा था, कैसे खेलते थे लोग, क्या है। बट अभी वो अपन वो सीन से कट ऑफ है, तो थोड़ा सा वो हो गए, दैट इज ये। बट अभी वही है कि भाई जो जाकर वो अडेप्ट कर पाए जल्दी से, तो उनके लिए +1 है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद गाइस गोल्ड लाइक ओवेज भी रिप्लाई किए टीम ओरंगुटैन के बारे में एंड साथ ही में बात की वो लोग के बारे में जो कि अपने रिएक्शन दे देते हैं, वो खुद प्लेयर्स नहीं है बट दूसरों पर बात करते हैं। और अगर इंडिया से कोई टीम डिजर्व करती थी जाके खेलना तो वो ओजी ही थी, इसलिए ओजी गई, वो जीत के गए। अगर तुम भी जाना था तो तुम जीतते, तुम नहीं जीत पाए इसलिए वो जीते और वो गए। और एक चीज और बोलूँ ना गाइस, मेरे को ऐसा फील होता है ना कि इंडिया से एक तो इतने टाइम बाद लोग बाहर जाके खेलते, ठीक है, और हर बार ऐसा नहीं है कि अभी पिछली बार आर्यन गेमिंग गई थी तो इस बार ओजी गई, अगर फिर आर्यन गेमिंग जाती तो शायद अच्छा करती, बट ओजी जीती, ओजी गई। अब ओजी अगली बार जाएगी तो ओजी अच्छा करेगी, क्योंकि एक बार तो एक्सपीरियंस सबको करना पड़ता है ना भाई। बट ये वो लोग ट्राई कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है नहीं कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, सब अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है यार, इतना बहुत ईजी नहीं है। मैं खेला हूँ भाई, मेरे को पता है कितना प्रेशर रहता है। अपन जितना इधर से बैठ के सोच रहे इंटू 2-3 टाइम ज्यादा प्रेशर रहता है वहाँ खेलने का। मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, आप तो आपकी तो फटके 4 ही हो जाएगी, जो प्लेयर नहीं है वो तो बोल भी नहीं सकता। एंड ये सभी रिएक्शन से गाइस आप लोग देख ही लिए कि बात कितनी आगे तक बढ़ गई है। फिर इसके बाद आज मेसी की तरफ से एक काफी शॉर्ट लाइव स्ट्रीम हुई जहां पर वो सॉरी बोले, बट साथ ही में गाइस वो वॉच पार्टीज, लाइव स्ट्रीम पर डिस्कशन एंड उनके ओपिनियन से रिटायरमेंट भी ले लिए। जो मैंने कल अपने आप को प्रेजेंट किया वो मेरा इमोशंस नहीं, मेरे फ्रस्ट्रेशन आप उसे कह सकते हो। इमोशन कब फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत होती है। अब जैसे आप लोग मेरे को कहते हो कि भाई मैं अब थोड़ा सा एक पब्लिक फिगर बन चुका हूं, तो मुझे इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे इमोशंस फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलने चाहिए। तो जो भी कल मैंने वर्ड्स बोले नहीं सही थे, वो कहीं से भी उसे आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। और मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग, खासकर यश और उनके साथ साथ जय, ये दो एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को शुरू से इतना सपोर्ट किया, इतना प्रेज किया है। ओरंगुटैन के लिए अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ भी बोलूं उसके पहले मुझे उन 2 और ओनर्स के बारे में सोचना चाहिए जो बाद में मेरी क्लिप्स देखेंगे। मैं सही हूं या गलत हूं वो बाद की बात है, वो क्या सोचेंगे कि भाई इतने टाइम तक हमने प्रेज किया, चीजें की, अभी जब हम अपने लो टाइम पर है तो ये इंसान जिसको हमने इतना प्रेज किया, इतनी चीजें करी, वो ऑनलाइन इतनी सारी ऑडियंस के बीच में बोल रहा है। बोलने का तरीका होता है जो शायद मुझे अभी भी सीखना बाकी है। तो जो भी मैंने कल चीजें बोली है ओरंगुटैन के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने वो सारी चीजें बोली। मानने में कोई भी ये एतराज नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया की एक्चुअली में बेस्ट टीम है जो यहां से जीत कर गई है। दे आर द बेस्ट जो अभी हमारी कंट्री को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए गई है। अगर मेरे को 10,000 लोग देख रहे हैं और मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, 10,000 में से अगर 5,000 लोग भी मेरी बात सुनकर अपनी सोच को बदलते हैं और वो उन प्लेयर्स को जाकर, उस टीम को जाकर हेट देते हैं, तो वो चीज सही बात नहीं है। दिल से माफी चाहूंगा ओरंगुटैन की पूरी टीम से और यश भाई से स्पेशली, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि यश भाई बहुत प्रेज किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, जहां पर भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत सलीके से अभी तक उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया है। बट अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सारी चीजें बोलूंगा तो ऑब्वियस चीजें हैं कि उनको बुरी लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, अगेन आई एम सेइंग, कैसा भी रिजल्ट हो, कैसा भी ओरंगुटैन खेल रही हो, बट स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो शायद कल मेरे स्टेटमेंट को सुनकर ऑब्वियसली वो लोग काफी ज्यादा नाराज हुए, काफी ज्यादा नाखुश हुए कि अपनी इंडिया की टीम को आप इस तरीके से नहीं कह सकते, जो कि सही बात है। अगर वो लोग जा रहे हैं वहां पर खेलने के लिए और अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। मैं आप लोगों से लूंगा ऑफिशियली विद बीजीएमआई esports वॉच पार्टीज, लाइव स्ट्रीम्स, डिस्कशंस, ओपिनियंस एंड बीजीएमआई esports लाइव स्ट्रीम्स जो भी हम लोग किया करते थे। प्रिया की स्ट्रेंथ मल्टीटास्किंग, रोहन की स्ट्रेंथ ऑलवेज हेल्पफुल। फाइनली मेरे माँ बाबा झांसी से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे माँ बाबा। और ये स्ट्रेंथ हमें मिलती है रोज प्रोटीन एक्स पीने से।
जो आपके 40% डेली प्रोटीन नीड्स को पूरा करे। स्ट्रॉन्ग मसल हेल्थ के लिए प्रोटीन एक्स, स्ट्रेंथ अपने लिए, अपनों के लिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय। तो यार गाइस ये पूरा मैटर था। वैसे आप किसके बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्नैक्स गेमिंग एंड SA12 के बारे में। तो गाइस स्नैक्स गेमिंग अपनी लाइव स्ट्रीम से ये रिवील किए थे कि उनकी तरफ से बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट आने वाली है। एंड रिसेंटली हमको स्नैक्स गेमिंग के अराउंड जो भी मैटर देखने को मिला था, इसके बाद कुछ लोग चैट में कुछ ऐसे कमेंट करने लगे कि क्या स्नैक्स गेमिंग SA12 को लीव कर रहे हैं, क्या ये उसकी अनाउंसमेंट है। तो वो चीज पर रिप्लाई करके स्नैक्स खुद ये कहे, लिविंग SA12, अरे पागल हो क्या यार, ईश्वरी शादी वेडिंग, अरे इतनी शादियां होती है, इतनी सब कुछ होती है। मेरी शादी अभी नहीं है पब्लिक एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड SA12, ब्रांड से रिलेटेड चीज है, वो आप लोग देख के खुश होंगे भाई, यू गाइस विल बी हैप्पी। क्यों चाहते हो मैं SA12 छोड़ूं भाई? मैं नहीं छोड़ूंगा, कितना भी चालो मैं नहीं छोड़ूंगा गाइस, चिल करो। इट्स रिलेटेड टू अ ब्रांड। बहुत खुश हो गए आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के। एंड गाइस स्नैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मोटल की तरफ से। तो एक जन मोटल से स्नैक्स के बारे में पूछे कि उनके साथ सब कैसा है। स्नैक्स के साथ सब सॉर्ट है, कुछ खराब नहीं है वैसे तो, मतलब वर्क चल रहा है, सब सही है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, मतलब कुछ खराबी नहीं है वैसे तो, देखा जाए तो सॉर्ट ही है, मतलब वर्क चल रहा है। मेरा मतलब ये है कि काम वाम चालू है, सब सही है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रेवेनेंट एक्स पार्क पंक की तरफ से। वो बात की है उनकी टीम के बारे में। अभी हाल ही में चल रहे प्रैक्टिस मैच जिसमें टीम एक्स पार्क काफी बढ़िया खेल रहे हैं। फिर इसके बाद टीम के बारे में रिप्लाई करके पंक ये कहे, मतलब फिलहाल के लिए थोड़ा करके कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है एज ए टीम, और टाइम लगेगा, अभी है अपन पे टाइम, मतलब लाइक मेजर टूर्नामेंट आने से पहले, तो तब तक के लिए अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस। ये कुछ नहीं है, अभी सिंक वगैरह अच्छे से बैठने दो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGMI टीम्स के अराउंड कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस FSC स्पोर्ट्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट पोस्ट आया जहां पर बेसिकली वो लाइनअप की फेयरवेल कर दिए हैं। देन इसके बाद टीम 8-बिट भी अपने 5th प्लेयर को अनाउंस कर दिए हैं जो कि होने वाले हैं हेक्सी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रौनक की तरफ से। वो बात की है उनकी टीम ओरंगुटैन के बारे में। तो गाइस PMGC में टीम ओरंगुटैन के ग्रुप स्टेज मैचेस भी खत्म हो चुके हैं। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस के रिलेटेड रिप्लाई करके रौनक कुछ ये कहे, हेट मत दो, क्रिटिसाइज करो कि नहीं खेले अच्छा, ठीक है। एक पॉइंट बस मेरा ये समझो आप लोग गाइस, आई हैव बीन देयर, मैं पहले भी वो जगह पे रहा हूँ जो जगह पे अभी प्लेयर्स है, करंट 4 प्लेयर्स वो भी खेल रहे, उनका माइंडसेट पे कितना इफेक्ट होता है आपको खुद पता है, वो जानबूझ के कोई नहीं करता। और जब वो होता है और उसके बाद लोग इतना बोलते हैं तो लोगों को तो छोड़ दो, मतलब उनको खुद को ही पता है कि भाई कितना, मतलब लोग ने कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, वो बहुत होता है गाइस। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कोई बोलूँगा कि अभी तक खत्म नहीं हुआ चीजें। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गोड लाइक एंकी बोर्ड के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में गाइस हम लोग बात किए SA12 म्यूजिक के अराउंड एक कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अगर बात करें गाइस क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स के ये दो कास्टर्स के बारे में, मेजी एंड एंकी बोर्ड, अभी के टाइम पर वो PMGC की वॉच पार्टीज कर रहे हैं। टीम ओरंगुटैन के रेडेड मेजी के रिएक्शंस को तो ऑलरेडी आप लोग देख ही लिए हो, बट गोड लाइक एंकी बोर्ड के रिएक्शन को सारंग अप्रिशिएट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखो नो रिएक्शन भाई, नो रिएक्शन फ्रॉम ओरंगुटैन भाई, दे नो यार, दे नो कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, दे नो व्हाट वी ऑल एक्सपेक्ट, जस्ट लुक एट दैट यार भाई, जस्ट लुक एट दैट। तुम सोचो भाई, एक बार सोच के देखो ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी नीड टू बी ह्यूमंस, राइट। वो टीम जो जिनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ किया, सोचो पूरा देश खुश है भाई, मतलब पूरा देश भी लाइक कि भाई लेट्स फक, क्या क्रेजी सीन हो गया, तुम समझ रहे हो। बट जस्ट लुक एट देयर रिएक्शन भाई, जस्ट लुक एट देयर रिएक्शन। बस वो नॉर्मल की हाँ भाई, बस वो चिकन आया, लाइक लिटरली नो रिएक्शन, आरू ने मुंह ऊपर नहीं करा भाई। तो इसके बाद सारंग एक मैसेज में ये लिखे, नो हेट टू एनीवन, बट काफी अच्छा लगता है जब लोग ये समझते हैं कि जो टाइम पर प्लेयर खेलते हैं वो किस चीजों से गुजरते हैं। कोई भी टीम जानबूझकर बेकार नहीं खेलती है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेगल्टोस एंड 8-बिट गोल्डी के एक रिएक्शन के बारे में। तो गाइस पास में इंडियन BGMI टीम्स एंड वाटर सिटी ड्रॉप की हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो रेगल्टोस वो चीज के बारे में फन वे में लाइव स्ट्रीम पर बात किए थे, जिस पर गोल्डी भाई भी रिप्लाई किए, ओजी की टीम ये वाटर सिटी नहीं लूटते, इंडिया की टीम नहीं लूटनी चाहिए ये टीम। यहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ था बहुत सारी टीमों का, अगर यहाँ पे देखा जाए तो, और ओजी ने भी यही ड्रॉप चूज किया है। आई बिलीव यह नहीं आना चाहिए था, यह नहीं आना चाहिए था। टीम सोल यहाँ पर जब से आई थी तब से मार खाते खाते 2 साल बाद फिर गेम। आप भूलिए मत, यहीं से ही मावी की टीम वर्ल्ड लीग तक लेके गई थी #2C ड्रॉप से। बात की जाए टीम के पहलू होते हैं, अपना हगा दूसरों पे मत मारिए, ठीक है। बात भी ये की जाए कि टीम सोल एक बार #2 भी आई थी दूसरे ड्रॉप से, वाइपर की टीम जो पहले वाली टीम थी, उसके बाद वाइपर के बाद में अपने आप चेंज हुआ है। अगर वाइपर की पुरानी जो टीम थी वहां से खेलते तो क्या पता #1 भी आ जाते हैं हम लोग, बट कोई दिक्कत नहीं। वाटर सिटी की दोबारा बात की जाए भाइयों, 1v4 जो हुए थे उसमें मवी भी था, उसमें मवी भी था। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन एंड ओवेस मूवमेंट के बारे में। तो ऑलरेडी गाइस आपको पता ही है, ओवेस ज्वाइन कर ली है टीम गॉड लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो उसके बाद काफी सालों बाद हमको जोनाथन एंड ओवेस लॉबी में एक साथ देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मूवमेंट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अरे ओवेस
अरे जोनी 2019 friend is back. Hello. हेलो What is this behavior? यार अभी मैं चैट को वही बोल रहा था भाई। Oh my god, my old friend is back. एंड गाइस टॉकिंग अबाउट ओवेस, तो एग्जैक्टली ओवेस बात की है उनकी टीम गॉड लाइक को ज्वाइनिंग के बारे में। गाइस मैं इतना खुश हूं ना, मतलब पिछले 4-5 दिन से इतना खुश होना बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। अभी रेड बुल लैन है तो हम लोग जाएंगे गाइस। मेरे को ना गाइस कंटेंट में तो हमेशा से कुछ करना ही था, बट वही था कि स्पोर्ट्स के वजह से मैं हमेशा कंटेंट पे उतना फोकस किया नहीं। स्टार्टिंग से आप लोग को पता है, जिनको पता है कि मैं 7-8 साल से सिर्फ हमेशा कॉम्पी पे ही फोकस किया हूँ। बट वही है कि विद टाइम तुम लोग को समझना पड़ता है कि यू हैव टू फोकस ऑन कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। तो अब मैं साथ ही साथ कंटेंट पे भी थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कॉम्पी के साथ साथ, क्योंकि मैंने कॉम्पी इतना साल खेल गया ना, तो अब मेरे वो खून में ब्लड में, तो मैं थोड़ा टाइम कंटेंट को भी दे सकता हूँ। और ये गॉड लाइक में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं क्यों ना लूँ ये अपॉर्चुनिटी और कंटेंट अच्छे से बनाऊं। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। माइंड भी यूजुअल आपको मेरी साउंड थोड़ी डिफरेंट लगी होगी, उसके लिए सॉरी, मेरे को कोल्ड रखा है। मैं क्या देखें हम। ये देख चुका हूँ मैं, यही देख लेता हूँ। विटामिन ई के लिए 64 कैरेट और कैल्शियम के लिए 9 कप दूध और प्रोटीन के लिए 8 चिकन लिवर एवरी डे। स्विच टू पेडिग्री नाउ ओनली एट ₹249। So I hold my phone like this, then ये लेफ्ट हैंड हो गया मेरा, that's for joystick, और पीक के लिए लेफ्ट साइड ऐसा स्प्रे करते करते और दूर करता हूँ थोड़ा, तो जायरो से नीचे होता है ये। जोनाथन या गॉब्लिन, एडविनो या लेजिट, नकुल या मान्या। ये थोड़ा टफ है। भाई मेरा लैग हो गया, मेरा पिंग हाई हो गया, मेरा ग्लिच हो गया, मेरे पास 30 FPS डिवाइस है, उसके पास में आईफोन है। हमारे पास में हमेशा कितने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं ना जब भी गेम में मर जाए तो। बट अगर कोई आपको सही में बोले कि उसके दोनों हाथ ही नहीं है, उसकी वजह से वो मर रहा है, तो क्या आप उसको एक्सक्यूज मानोगे या फिर आप जेन्युइनली सोचोगे कि उसके साथ लाइफ में बुरा हुआ? आमतौर पर मैं अपने शोज में BGMI कम्युनिटी के उन लोगों को बुलाता हूँ जिन्होंने कुछ ना कुछ कांड किया होता है, उनको एक्सपोज करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। लेकिन आज के शो में हम लिटरली ऐसे बंदे को बुला रहे हैं जिसकी कहानी आप लोगों को रुला भी देगी, आपको इंस्पायर भी करेगी और ये दिखाएगी कि यार आप छोटे छोटे जो गेम में एक्सक्यूज देते रहते हो, उसके बाद में भी वो बंदा ये सब होने के बाद में भी गेम भी इतना बढ़िया खेलता है, स्प्रे करता है, रिकॉइल कंट्रोल करता है, ट्रेसिंग करता है, सब कुछ कैसे करता है। और इनका गेम प्ले इतना ज्यादा इंस्पायर करता है लोगों को कि इनकी स्ट्रीम पे ही लॉल्स ने, गॉब्लिन ने रेड भी करी है और साथ ही साथ में सेलिब्रिटी रैपर रफ्तार भाई ने भी इनको काफी बार सपोर्ट करा है स्ट्रीम पे ही। आइए जानिए हमारे BGMI के लेजेंड से खुद ही। तो बिना किसी देरी के मैनफेस्टर भाई, शो में आपका स्वागत है। कोई भी बात करने से पहले यार मैं आपको बोलना चाहता हूँ भाई, मैं बहुत ही रेयर बंदे होते हैं जिनसे मैं इम्प्रेस होता हूँ, एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इंस्पायर मी टू कीप डूइंग बेटर इन लाइफ, टू नॉट फॉल फॉर एनी एक्सक्यूजेस। मेरी लाइफ में भी बहुत इश्यूज रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भी मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे भी हिम्मत मिलती है। जरूर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड या। तो यार सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये आपका ये क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट था, बाय बर्थ था या क्या है? सो शॉर्ट में बताता हूँ, बाय बर्थ नहीं है, आई वाज नॉर्मल टिल 8। मैं 8 साल था जब एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था एंड आई ट्राइड टू सेव हिम, जिसमें मैंने उसको पकड़ के ऐसे खींचने की ट्राई किया एंड देन मेरे को भी शॉक लगा एंड इट वाज अ हाई वोल्टेज वायर, तो बचने के चांसेस भी बहुत कम थे। ही इज नो मोर एंड या मैं बच गया, तो ये हालात थे। भाई हाउ डिड यू डील विद इट? मतलब कितना आपको इस सबसे मेंटली मूव ऑन करने में टाइम लगा? 1-1.5 साल तो मेडिकेशन ही चल रहा था। देन मेरे को थोड़ा हेल्प हुआ कि लोगों ने मेरे को थोड़ा डाइवर्ट किया, समझ रहे हो, वरना किसी के लिए भी हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है। मेरे टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास भी मतलब ऐसे मेंटली मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। मेरी मम्मी ऐसे पूजा पाठ किया करती थी, उनको बोलता था कि क्यों आप कर रहे हो सब पूजा पाठ, कुछ काम तो देता नहीं है, ऐसा करके। हम लोग थोड़ा प्रोस्थेटिक्स वगैरह के लिए गए थे। प्रोस्थेटिक्स से थोड़ा लोगों ने मेरे को उम्मीद देने का ट्राई किया कि यू कैन डू इट ऑल द वर्क विद दैट, एंड वहां से फिर लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हुई कि आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। बट उस टाइम पे भी ऐसे टीचर्स वगैरह लिखा करते थे मेरा पेपर वगैरह, तो आई वाज डिपेंडेंट पूरी तरीके से हर काम के लिए, खाना खिलाने से लेके फॉर एवरीथिंग आई वाज डिपेंडेंट। तो आप क्या दिखा सकते हो कि आप होल्ड कैसे करते हो फोन, कंट्रोल कैसे करते हो? सो ये फोन है मेरा। सो हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, दोनों पैर ऐसे करके नॉर्मली नीचे रख के, ठीक है। सो आई होल्ड माई फोन लाइक दिस, इसको दोनों पैरों के बीच में से अटका दिया, ठीक है। और ये
मेरे लिए काम इसलिए किया ना, मेरे गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए, देन ये लेफ्ट हैंड हो गया मेरा, दैट्स फॉर जॉयस्टिक और पीक के लिए लेफ्ट साइड, एंड बाकी मोस्टली बटन्स मैं राइट साइड रखता हूँ ये वाले हैंड के लिए, क्योंकि इधर से मैं टैपिंग काफी जल्दी कर सकता हूँ। देन आता है कि एम जो मेरा थोड़ा बेटर है वो मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ स्प्रेज वगैरह के लिए मोस्टली। तो वो जो फोन है ना, जब मैं इसको ऐसा स्प्रे करते करते और दूर करता हूँ थोड़ा, तो जायरो से नीचे होता है एम, और जब मैं क्लोज लाता हूँ तो ऊपर जाता है हेड की तरफ। भाई कमाल है यार। एंड लेफ्ट राइट के लिए बस ऐसा और ऐसा करना पड़ता है थोड़ा सा पैरों से। सो दैट्स माय कंट्रोल। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कभी भी किसी को स्ट्रीम पे भी, सो एक्सक्लूसिवली इधर जा रहा है। जितने भी नूबड़े हैं, तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है भाई? मोस्टली लोग मेरे को नंजारो ही समझते हैं, सो मेरे सेंसी मांगेंगे तो नंजारो सेंसी चाहिए मेरे को, उनको पता नहीं कि मैं जायरो यूज करता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और यार मतलब उसके बाद भी स्प्रे कंट्रोल कर लेना, दैट इज फिनोमिनल भाई। मतलब आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। मेरे को याद है अभी भी कि मैं ऐसे स्कूल जाया करता था, तो होता है ना वैन पे जाते हो तो रास्ते में कोई बच्चे मिल गए, या अभी भी कोई बच्चा दिखता है तो उसके लिए इट्स लाइक द 8th वर्ल्डर ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, मम्मी मम्मी ये भैया का हाथ क्यों नहीं है ऐसा करके। तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा हर्ट करता था, बट उनके पास अंदर इतना सेंस नहीं होता, तो बच्चे का इतना मैं मतलब दिल पे नहीं रहता। यहाँ से बीजीएमआई में आपने कैसे सोचा ट्रांजिशन करने का? मेरे कुछ फ्रेंड्स थे स्कूल के, एक्चुअली 2 फ्रेंड्स थे, एंड हम लोग सेम वैन से जाया करते थे। तो होता है ना वैन में ड्यूरेशन लंबा होता है, 30 मिनट्स ऐसा कुछ लगता था घर जाने में, तो हम लोग डिस्कस किया करते थे। वी स्टार्टेड विद सीओसी, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना स्टार्ट किया था हमने। देन अचानक से ऐसा एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो डायनामो भाई का नाम आता है कि एक स्ट्रीमर है ऐसा करके, और वीडियो में मजा आ रहा है ना? अगर और भी ज्यादा मजे चाहिए हैं तो अवेलेबल है। मम्मी का फोन था, तो ऐसे चुपके चुपके लेके ऐसे बैठ जाया करता था, जस्ट स्टार्टेड कि मैं खेल सकता हूँ कि नहीं ये देखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे घर पे तो कुछ था नहीं, होल्डर वगैरह उसमें कुछ सोच नहीं सकता था ऐसा मम्मी से मांगने का, पापा से मांगने का, गेम खेलना है मेरे को। तो मैं चुपके से ऐसे रूम में बैठ जाता था चार्ज में लगा के, और वही सॉकेट के नीचे, और पैरों से पकड़ के फोन स्टार्ट किया और खेलना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो कुछ कर नहीं पाता था, फिर मैं खेल रहा था, एंड एक बार ऐसा कुछ हुआ ना, इन गेम शायद मैंने चोक किया था एक बार या कुछ किया था। तो मेरे एक फ्रेंड ने उसको बताया, मतलब सामने वाला बंदा मेरे को ऐसे रैंडम भर रहा था कि हक दिया ऐसा करके, तो उसने उसको बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तेरे को पता भी है, ऐसे बेटर खेलता है फिर भी कैसे खेलता है करके। तो उसको ट्रस्ट नहीं हुआ, उसको फिर मैंने वीडियो कॉल पे, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने दिखाया जब, देन उसने ट्रस्ट किया, एंड देन ही आस्क्ड कि भाई तेरे को दिखाना चाहिए बाकी लोगों को, वो लोग भी मोटिवेट हो सकते थे ऐसे, जो तू कर रहा है, जो तू कर सकता है। यूट्यूब पे अकाउंट तो होता है ना, सब लोगों का चुल तो होता ही है कभी ना कभी कि ऐसा बनाना है यूट्यूब चैनल। सो बनाया तो मैंने दिसंबर में था 2020, बहुत पहले। उस पे ऐसे मूवीज वगैरह डालना चालू कर दिया था। अच्छा। 2 मूवीज डाली, सेकंड वाले पे स्ट्राइक आ गई, और उसके बाद कुछ किया नहीं उस पे, तो चैनल पड़ी हुई थी मेरे पे, तो वहीं पे मैंने फिर मैं स्टार्ट किया। तो इट वाज टफ, बहुत टफ। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं से अपने एंड्रॉइड फोन में कैमरा खोल देता था और स्क्रीन शेयर करता था उसका, तो बहुत खराब क्वालिटी आती थी। एंड एक हैंगर के, हाँ, एक टॉप से ऐसे हैंगर के थ्रू फोन को ऐसे लगाया होता था ना, तो बीच स्ट्रीम में वैसे करके ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मुड़ जाता था ऊपर, तो मैं फ्रेम से बाहर हूँ बीच स्ट्रीम में। ऐसा करके स्टार्ट किया, बफर होता था, मेरे को बिट रेट का नहीं पता था, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल हुआ चीजें। देन आई स्टार्टेड टू वर्टिकल स्ट्रीम्स, क्योंकि वहाँ पे रीच नहीं था हॉरिजॉन्टल पे बहुत ज्यादा। देन वहाँ वर्टिकल स्ट्रीम पे जब मैंने शिफ्ट किया, तो वहाँ से जब थोड़ी रीच आनी शुरू हुई, लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, तो उससे मेरे को भी थोड़ा सा हौसला मिला कि आई कैन कंटिन्यू। कैसे कैसे आपको रिस्पांस मिला, और अभी कैसी सिचुएशन है? कोई कम्युनिटी से आपको अभी सपोर्ट करता है? क्या क्या है? लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पब्लिक का सपोर्ट। आपको कम्युनिटी में कोई सपोर्ट करे नहीं करे, अगर पब्लिक सपोर्ट करे सब कुछ है। और वो एविडेंट हुआ मेरे को सबसे ज्यादा अभी, जब मैंने इंस्टा पे एक रील डाला कि रिगार्डिंग किसी मेरे को कमेंट किया था कि भाई आपको अभी तक पार्टनर टाइटल नहीं मिला, आपके इतने सपोर्टर्स है, इतने सब्सक्राइबर्स है। उसके बाद लड़कियों को 80K पे मिल जाता है, टू बी नो पॉइंटिंग, स्पेशली जो मिल जाता है भाई 3-4 हाँ, हजार मतलब मिल जाता है जितने 3-4 हजार, हाँ मिला है, मेरी नजर में मिला है। तो लोग ऐसा पार्टिकुलरली मेंशन करते थे, एंड जैसे कि यू आर डूइंग सच ग्रेट, फिर भी नहीं मिल रहा। तो मैंने ऐसा डिसअपॉइंटमेंट में ऐसा बोल दिया था कि भाई मैं थक चुका हूँ, मेरे को मत ऐसा मेंशन किया करो, मैं थक चुका हूँ सबसे। मैंने उनको अपने रील्स पे टैग करके भी देख लिया, एवरीथिंग, आई ट्राइड एवरीथिंग। और फिर उसने एडिटर ने मेरे उसको एडिट करके सेम इंस्टा पे हमने अपलोड किया था, और वो रील
पे अच्छे खासे इतने मेंशन हुए जितने मैं सोचे नहीं थे। एंड उसके महीने भर के अंदर आई हैव अ बीजीएमआई पार्टनर टैटू। अरे वाह, क्या बात है, दैट्स सो स्वीट एंड होलसम। या सो ये मेरे को पब्लिक का पावर अभी समझ में आया है। और बाकी या कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, लाइक सबसे फर्स्ट वन टू मेंशन इज लोज भाई। लोज भाई कभी भी रेड नहीं करते थे। द फर्स्ट रेड आई गेस उन्होंने मेरे पे ही किया था। मेरे उस समय 5000 सब्सक्राइबर थे या 6000 सब्सक्राइबर थे कुछ, तो वो 10K होने तक रेड वाज कंटिन्यूइंग कि जब तक 10K नहीं हो तब तक हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक ही स्ट्रीम में करवा दिए थे मतलब 10,000 आपके? फिर एक ही स्ट्रीम में करवा दिए थे उन्होंने। और ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि वो एक दो दिन पहले मेरे लाइव स्ट्रीम पे आए थे एंड ही वाज अमेज्ड एंड उन्होंने मतलब जब वो देख रहे थे उस टाइम पे मैंने क्लच वगैरह ही मार दिए थे। तो अच्छा उन्होंने फिर टाइमिंग वगैरह पूछा था तो मेरे को लगा ऐसे ही पूछा होगा, बट उसके 3-4 दिन बाद ऐसे रैंडमली उन्होंने रेड कर दिया एंड दैट वाज शॉकिंग क्योंकि वो रेड करते नहीं थे कभी भी। एंड तो लोज भाई ने किया है एंड डायनामो भाई ने एक बार किया था। बिक्सी भाई ने मेरे को मेंशन किया था एक बार, उनसे फाइट हुई थी तो वहां से काफी लोग सपोर्ट करने आए थे। देन बिक्सी भाई इज अ ट्रू जेंटलमैन यार, मतलब ऑलवेज रेडी टू हेल्प। बहुत तो कभी भी इंस्टा पे कांटेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा। तो अच्छा, एक क्विक सेगमेंट है जो मैंने लिखा था, तो आपको क्या बताना है, मैं आपसे बस सवाल पूछूंगा आपके हिसाब से आप किसको बेटर मानते हो, आपको बस वो बताना है, ठीक है? ये थोड़ा फंसाने जैसा लग रहा है। नहीं, अगर आपको लगे कि हटा देना तो मैं स्किप भी कर दूंगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट चाहे एक्सप्लेनेशन भी देना चाहो कि मैं इस वजह से मानता हूँ तो आप वो कर सकते हो। जेली या आरू? जेली, वो बंदे से मैं थोड़ा एसोसिएट कर सकता हूँ क्योंकि एक टाइम था जब वो गॉड लाइक में थे ना, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ स्पोर्ट्स को, तो गॉड लाइक में थे तो एक टाइम ऐसा आ गया था मेरे को लगा था इनका करियर तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा साइडलाइन कर दिया था उनको। ही वाज डूइंग व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। मेरे को लगा वो कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, यू नो, 5th प्लेयर होके व्लॉग बनाना, इट वाज नॉट लुकिंग गुड। एंड वहां से जो बंदे ने कमबैक मारा, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, यू नो। जॉनथन या गॉब्लिन? ये थोड़ा टफ है क्योंकि गॉब्लिन ने रिसेंटली मेरे को रेड भी किया था, बट जॉनथन फार बेटर। अचीवमेंट्स अलग लेवल के है ना उनके भाई, उस टाइम से जब अभी तक वो रेलेवेंट है, यू नो, कितने लोग आए कितने लोग गए। ओजीज की बात करी तो अभी मॉडर्न डे में एडमिनो या लेजेंड? लेजेंड। रीजन? मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली उसका गेम प्ले, उनका बिहेवियर, द वे ही टॉक। जैसे मैं आप करके बात करता हूँ, सिमिलरली आप उनको गेम के भी कॉल सुनोगे ना, वो भी मेरे को लगता है इतना स्वीट बंदा है ना वो। गेम के कॉल्स में भी गॉब्लिन आप ऐसा करके मैंने सुना है बोलते हुए, तो वो हो गया। प्लस गेम प्ले तो लेजेंड इज जस्ट लेजेंड। तो वो बगी वाला स्प्रे, वेरी गुड, वो बगी वाला जो स्प्रे सीट चेंज करके मारा था उन्होंने क्लच, वो मेरे को कभी भी मैं भूल नहीं सकता। अच्छा, वो वाला, ओह माय गॉड। पास्ट में मैंने दोनों के ऊपर वीडियोस बनाई है, बट या इवन आई हैव टू एग्री कि यार मॉडर्न डे में, करंट टाइम्स में Legit is doing wonders and both Admino and Legit are doing very good. Pick it up, pick it up, pick it up. भाई मेरा डैडी सो गया और मैं भाई मेरा दरवाजा ओपन करके पिक इट अप कर रहा हूँ, मेरे को टिक अप करके आउट कर देगा मेरे को घर से। Second drafts, third. Yeah, और शॉटगन में भी लेजेंड इज जस्ट nowhere to anyone. नकुल या मान्या? नकुल was my favorite player for बहुत लंबे टाइम से, so yeah. अब बैटमैन भाई आईजीएलिंग कर रहे हैं। या वो थोड़ा अलग सीन हो गया है। Although मान्या भाई is in my friend list BGMI में, तो नकुल नहीं है, बट या इस वीडियो के बाद शायद नकुल भी बन जाएगा। मॉर्टल या डायनामो? ये भी काफी टफ है क्योंकि स्टार्टेड विद डायनामो, देन मैंने ज्यादा मॉर्टल को देखा है टू बी ऑनेस्ट। यू नो, उनकी एक वीडियो फटी थी काफी, हील बैटल लड़के ऊपर जाके मारना, वहां से मैंने फॉलो किया था स्टार्ट। यू नो, उस टाइम पे वो आईपैड पे खेला करते थे। देन ई स्पोर्ट्स क्योंकि मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ तो मोस्टली टाइम मॉर्टल, तो और उनका बिहेवियर भी मेरे को काफी ऐसा एडमायरेबल लगता है। हाँ, तो ऐसा फील आता था कि अगर मैं लोग डायनामो ह्यूमन बीइंग, बट वही मेरे को गेम प्ले अच्छा लगता था जी गॉड का एक्टिव करना काफी। ये रखने का मेरे को रीजन ही समझ नहीं आया। मैं तो दोनों में से किसी को चूज यू वांट, ये कंपैरिजन है। पहला है प्रिंस ओजी या सैगी? लाइक व्हाट डू यू वांट, ये रखने का मेरे को रीजन ही समझ नहीं आया। मैं तो दोनों में से किसी को चूज नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट सपोर्ट एनीथिंग लाइक दैट। तो अच्छा, अगला है आशी गेमिंग वर्सेस ऐश प्लेज। ऐश प्लेज का तो मेरे को आइडिया नहीं है, आशी वाला केस मैंने फॉलो किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को जितना मेरे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज कर रखे थे कुछ कि इट वाज नॉट, जितना आपने डाला है वो भी शायद पूरा नहीं है अभी भी, इवन आफ्टर यू नो ऑल 3 एपिसोड्स
जो भी थे। हाँ। अच्छा, आप आइडल किसको मानते हो वैसे अपनी जर्नी में, या अभी भी अगर आप देखते हो तो हु डू यू लुक अप टू द मोस्ट इन बीजीएमआई कम्युनिटी? बीजीएमआई कम्युनिटी में ऐसा आइडल तो नहीं, बट हाँ मैं कुछ स्ट्रीमर्स को पहले देखा करता था, बस अच्छा लगता था देखना। ऐसा कुछ आइडल वगैरह मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। अगर रियल लाइफ में आप पूछो तो मेरा कंपटीशन खुद से ही है, क्योंकि मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, एक नया तरीका ढूंढना पड़ता है। मैं अभी भी थोड़ा लेट हुआ मेरे को आने में, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आपने देखा होगा शायद, मैं क्रिकेट वाला, तो अभी क्रिकेट खेल के आ रहा था मैं। हाँ, तो मैंने बैडमिंटन खेलना भी स्टार्ट किया है डुओ में थोड़ा। तो बैडमिंटन भी खेलते हो आप? हाँ, मैंने उससे कोई रील नहीं डाला है, बट क्योंकि अभी खेल नहीं पा रहे अपन। वॉलीबॉल खेला है मैंने। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फुटबॉल खेल चुका हूँ नॉर्मल लोगों के साथ ही। अरे स्कूल के लिए भी खेला है, जोनल तक सब कुछ। भाई आपके लिए तो रिस्पेक्ट यहाँ थी तो यहाँ पहुंचती जा रही है। आप मेरे को ये बताइए कि आप ये सब चीजें होने के बाद में, आई एम श्योर इसके बाद में भी आप स्ट्रीम करते हो तो हेट कमेंट्स भी आते होंगे काफी, कुछ ना कुछ। कभी आप क्लच नहीं कर पाते होगे तो डिमोटिवेट होते होगे। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, एंड लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा बंदा रहा हूँ जिसने मतलब स्टार्टिंग से, मतलब मैंने अपना लो देख रखा है, ठीक है, बहुत लो देख रखा है। उससे लाइफ में किसी के लो नहीं आ सकता है, तो वहां से मैं कभी भी जाऊंगा तो हाई पे ही जाऊंगा। उसके बीच में थोड़े बहुत ऐसे कंकर पत्थर आते रहते हैं, एंड हेटर्स आते हैं। फिर मजे लेने वाले पब्लिक ज्यादा आजकल हो गई है, तो आएंगे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछेंगे वॉशरूम से रिलेटेड या बाकी चीजें, सो कॉल्ड डैंग कमेंट्स। बट हमारे मॉड्स एक्टिव रहते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी है 99% आर गुड पीपल, सो वो लोग मेरे को सपोर्ट करते, तो मैं 99% पे ध्यान ना दे के वो 1% पे ध्यान क्यों दूंगा, ऑब्वियसली। आपकी लाइफ में जैसे स्ट्रगल्स होते हैं या इंसान कंपेयर करता है, मैं भी देख के कंपैरिजन करने लगता हूँ किसी को, बहुत ह्यूमन नेचर है, ये नॉर्मल है। आपके कोई डेली लाइफ स्ट्रगल्स होते हैं या आप किसी और को देख के कंपेयर करते हो, तो हाउ डू यू चीयर योरसेल्फ अप, या आपकी क्या थिंकिंग रहती है टू कीप गोइंग इन लाइफ? पहली चीज तो मैंने मतलब ऐसे एक्सीडेंट के बाद ना, मैंने अभी भी मैंने अपने आप को ऐसा नहीं अपनाया है कि मैं किससे अलग हूँ या किससे कम हूँ, ऐसा करके मैं अभी भी अपने आप को नॉर्मल देखता हूँ। तो मेरे लिए जो भी मैं चीजें करता हूँ वो नॉर्मल है। मतलब लोगों को लगता है कि मैं ऐसे 200% एफर्ट दे रहा हूँ, बट मैं 100% ही अपना एफर्ट दे रहा हूँ और उसमें मेरा काम हो जा रहा है। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को ना सेम काम करने के लिए कुछ अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं, और लकीली मेरे को मिल जाता है वो कहीं ना कहीं से। मतलब नेचर से इंस्पिरेशन लेके या कहीं ना कहीं से आई स्टार्ट डूइंग दैट। मैंने लिखना भी वैसे ही स्टार्ट किया था रैंडमली मेरे यूट्यूब पे, जब मैं ऐसे प्रोस्थेटिक्स लगवा रहा था इन दिल्ली, तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर चलाना स्टार्ट कर दिया था बिना प्रोस्थेटिक्स के। तो वो लोग मेरे को मना करते थे कि प्रोस्थेटिक्स क्या डालो, एंड तो वहाँ पे मैं ऐसे खाली टाइम में ना ऑफिस में ही उनके डेस्कटॉप में को मिला रहता था खाली। वहाँ पे एक लड़की का मेरे को वीडियो आया था, उसमें उसके दोनों हाथ में सेम होता है ना, सेम जगह से एम्पुटेटेड थे, तो उसके लिए काफी इजी था वो। ऐसे मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा, बट या वो दोनों हाथ मिला के ऐसे लिख ले रही थी। तो स्टार्टिंग में तो मेरे स्कूल में टीचर्स मेरा लिखते थे पेपर, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रोस्थेटिक्स खराब हो गया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मेरे को खुद से ट्राई करना चाहिए एक बारी, और मेरे दिमाग में वो वीडियो था, तो आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग। बट क्योंकि मेरे दोनों हाथ अलग अलग लेंथ से हैं, तो मेरे लिए यहाँ लेके जाना पड़ा था, यहाँ की जगह पेन बार बार गिर जा रहा था। देन आई स्टार्टेड कि लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं ऐसे होठों से पेन ब्रश पकड़ के, तो मैंने पेन वैसे पकड़ के स्टार्ट किया, बट मेरे को मूवमेंट अच्छे नहीं मिल रहे थे, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो रही थी। मैं लिख ले रहा था, नाम वगैरह लिख रहा था, बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क। देन मैंने बस ऐसा सोचा कि दोनों को मिला देते हैं, तो मैंने ऐसे पकड़ा यहाँ पे और माउस से उसको सपोर्ट दे दिया, क्योंकि मैं एक्सीडेंट से पहले राइट ही था, तो मैं राइट हैंड से लिखता था, तो ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन था। एक्सीडेंट के बाद क्योंकि एल्बो लेफ्ट हैंड में था और प्रोस्थेटिक्स लेफ्ट हैंड में लगी थी, तो आई वाज एबल कि मैं इससे भी प्रैक्टिस किया था, तो मेरा वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन फर्स्ट टाइम ही सिंक में था। तो मैंने जो उस समय लिखा विद इन दिस 45 मिनट्स और 30 मिनट्स के बीच में, इतना कुछ सोचने और करने के में, और उसके बाद जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा वो हैंड राइटिंग मेरे एक्सीडेंट से पहले वाले हैंड राइटिंग से बेटर थी। तो ओह माय गॉड, रियली? या उसके बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना घर वालों को ही मनाया कि मेरे को प्रोस्थेटिक्स नहीं यूज करना, आई फील फ्री, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था प्रोस्थेटिक्स यूज करके, मेरे को खेलने नहीं देते थे, बहुत महंगा भी था, वो खराब हो जाता था। तो वहां से फिर मैंने पलट के नहीं देखा, वहां से सारे एग्जाम्स खुद लिखे, 10th 12th जेई एवरीथिंग अभी भी खुद ही देता हूँ। आई हैव नो वर्ड्स लिटरली, मतलब अ ह्यूज सैल्यूट टू यू। मतलब ये जीवन में जो चलता रहता है वो तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, एंड अगर आप कोशिश करो, इफ यू हैव अ नेवर एंडिंग विल, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, एंड यू आर अ लिविंग एग्जांपल ऑफ इट। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत ऐसे तो शुक्रिया कि मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए टू रीच टू अ भाई।
क्या करना चाहिए बताओ यार, कोई है भी नहीं। चलो जाता हूँ मैं भी सोने। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।